researchers, and all participants joining us. A very warm welcome to the first national conference on mainstreaming life, building climate resilient and sustainable urban habitats. It is my privilege to welcome you all to this important gathering being held here at EPCO Conference Hall, Bhopal. Today's conference brings together thought leaders, policymakers, researchers, practitioners, environmental professionals, and young scholars to deliberate on one of the most pressing challenges of our time. How can we build cities that are environmentally sustainable, socially inclusive, and resilient to the impacts of climate change? The conference is aligned with the vision of Mission Life, lifestyle of environment, which encourages individual and collective action towards sustainable living. Through discussions on urban biodiversity, climate resilience, ecological restoration, sustainable governance, and community-led action, this conference seeks to bridge research, policy, and practice. The theme for this year's conference, Mainstreaming Life, Building Climate Resilient and Sustainable Urban Habitats, with a special focus on Sustainable Development Goal, SDG 11, Sustainable Cities and Communities, and SDG 13, Climate Action. We hope that the deliberations over the next over the next few hours, generate meaningful dialogue, innovative ideas, actionable recommendations, and collaborations that contribute towards a greener and more resilient future. Before we proceed further, let us acknowledge the organizations whose support have made this conference possible. We extend our sincere gratitude to Madhya Pradesh State Biodiversity Board Bhopal, the collaborative agencies. We also acknowledge to thank our institution, travel, print, and knowledge partner for their valuable support. Our institutional partners, EPCO Bhopal, Indian Institute of Forest Management Bhopal. For travel, we have mptour and travels.com. Print partner, we have SNHC Journal. Knowledge partners include NIUA, Institute of Town Planners India, DCB Bank, Tarun Bhagat Sangh, CMS Vatavaran, ISOLA, IUCN Nature for All, Vidhi Center for Legal Policy, Town and Country Planning Madhya Pradesh, Monga Bay India, VNS, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Mansarovar Global University, Collectives for Integrated Livelihood Initiatives, Barkatullah Vishwavidyalaya Bhopal, National Center for Human Settlements and Environment, ISER Bhopal. We thank all our partners and contributing their expertise and support towards making this platform for dialogue and collaboration possible. With that, we now begin the inaugural session for the conference. We welcome our chief guest, Mrs. Anuradha Shankar, IPS, retired, ex-special DGP MP, the guest of honor, on the stage. We welcome Mr. Jagdish Krishnaswamy, Dean, School of Environment and Sustainability, Indian Institute of Human Settlements, Bangalore. Dr. Fayaz Khudsar, In Charge Scientist, Biodiversity Parks Program, Delhi. And R. Srinivas Murthy, IFS retired, former Member Secretary, MPSBB Bhopal. With that, I would like to invite Vikas sir to welcome our guests.
I would like to invite Mr. R.J. Rao to the dais, please. Before we move ahead, we want to address the demise of Hemendra Singh Panwar and pay him respects. I would like to invite Shri R. Nivas sir to speak a few words. So I am here to pay our respects to one of the noble conservationists of national and international reputes, Sri Hemendra Singh Pawar, who passed away yesterday. I request everybody to stand for 2 minutes. Mr. Pawar sir has born in Madhya Pradesh on 22nd March 1937 in Balaghat district. Then he was there as an pioneering founder director of Kana Tiger Reserve, then founder director of Wildlife Institute of India. Before that he had a stint in Project Tiger, and then contributed immensely for all the nature conservation, wildlife management issues in India as well as at the international level. Then he has been rewarded for his recognition by Smithsonian Institute. Then he has been awarded as Duke of Edinburgh Conservation Medal WWF, then Rajiv Gandhi Wildlife Conservation Award and Tree of Learning Award by IUCN, and finally Padma Bhushan in 2013. So to pay respects and our tributes to a noble soul, I request a 2-minute silence for Sir. Namaste. Thank you. Jai Hind. I thank SNHC and Vikas for giving this platform to pay our tributes to Pawar sir. Jai Hind. Thank you, sir. With that, we would like to start the conference with the ceremonial lighting of the lamp. I would request all the dignitaries on the dais to proceed with it.
Next, I would like to invite Ms. Shivani Sharma from MP State Biodiversity Board to welcome all of our guests. Good morning, everyone. Myself, Shivani Sharma, technical expert from MP State Biodiversity Board. Respected all the senior officers and all the people who are coming here in this conference for the ultimate goal of lifestyle for environment. I would like to welcome all of you on behalf of MP State Biodiversity Board. Thank you so much. सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ कि भोपाल को लगना चाहिए कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो एक बार बहुत जोरदार तालियां आप लोग बजाइए, और अपने लिए भी और सम्मानीय मंच के लिए भी, क्योंकि तालियां बहुत ही धीमे से बज रही हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस है ये पहली कि हमको इसको बढ़ावा देना है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस लगातार होती रहें। तो इसी के साथ एक बार और जोरदार तालियां बजाइए, और मैं आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही सभी को सम्मान देते रहेंगे और तालियां बजाते रहेंगे। धन्यवाद। With that brilliant start, I would like to invite Mr. R.J. Rao to please welcome all of our guests on the stage. Please, sir, speak a few words about our guest and the conference. First of all, really it is, as he says, first time being in my 40 years of academic career, thinking about general public and scientists, the current demand on climate change or the development of any city, and what exactly one has to do it. So everybody is thinking, but nobody knows what the solution is there and how to think about our existence, our survival and our happy living. So I think really it is a great thing that today we are all assembled here and thinking about all the resources, either it is a living resources and water resources, everything is how to manage it, and so that not for today but for the coming generations, how our young children should live peacefully so that they can do something good for the national development. There are large number of problems everybody is facing these days. Every time the burning topic, the people say it is a climate change, climate change, climate change. So what everybody knows it, but many people only who have some power, who can do something, maybe they are doing it, but the rest of the people are just waiting. Someone has to come, maybe कोई भगवान आएगा या क्या चीज़ होने वाला है कि जिससे हमारा we have to save our earth by this climate change. So for this, all the developmental activities have their own impact on the changes. So we have to think about how to live our life, and if at all there is any development, at what extent we should do it, so that it may not be problem with my neighbor, my fellow citizens. And that is the reason everybody was thinking about the biodiversity of the place, and people are definitely in the village level, people are working and they are living on their own. Whatever is available, they are using it, and they are working. But people living in the cities are every day, every moment, if you open the TV or what is happening in different cities. So main problem comes with the city dwellers. So we have to think about how best we can do, maybe doing some type of research
or maybe some type of academic activities and developmental activities. So everybody, if they are concerned, so definitely they can get some ideas, and that will be conveyed to the government, and who can think. So nowadays, that is the reason citizen science is a very important thing. So we know the problem, and we have to convince the government that this has to be done. So such type of meetings are really useful, and experts can think say something about what is happening, and definitely we can get a conclusion of it. Really, I am thankful to Vikas, who is doing excellent work. Earlier we were continuously working on wildlife, and this time he mixed the wildlife environment with the city development and everything. So this is real important for all the people, and this result can be submitted to the government, concerned governments, and who can think about take the knowledge of the experts who came all the way. Thank you very much for meeting me. Thank you so much, sir. Next, I would like to invite Dr. Fayaz Khud, sir, to speak a few words on the stage. Thank you very much. Professor Rao has already explained why we are here. Sir tried to convey that everybody knows that there is a problem. Something happening to us. Yesterday, our Gautam Talukdar Sahab was trapped in thunder, went back from Bhopal to Delhi, came back midnight. Something happening. But what is that something? And how we mitigate that something, that is very, very important. There are very few people who are contributing to that field to showcase that how we can mitigate, overcome such situation. So today, probably this conference with a lot of experts all around forest department will come out with some conclusion which can bring sustainability and resilience to any city. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Srinivas Murthy on the stage to speak a few words. Good morning to everybody. Mrs. Anuradha Shankar ma'am, Jagdish ji, Fayaz Saab, Rao Saab and Vikas and all delegates. It's a very nice beginning in Bhopal, in the sense that Madhya Pradesh is a pioneer with respect to forestry as well as the wildlife management and to some extent conservation aspects. And SNHC was organizing conservation of lesser known species for last 4 years. But this is the first time where an urban climate issues and urban sustainable issues have been pioneered by SNHC and Vikas. A big claps to him as well as the entire organization and his partners. Because जैसे कि अभी फयाज साहब ने बताया है, तालुकदार साहब भोपाल तक आए फिर वापस चले गए. मतलब आपका डिले हुआ है, लेकिन वो टर्बुलेंस में इन सब लोगों की जान कैसे अटका होगा, एक बार सोच के देखें. एंड देन जो उस पर्टिकुलर इश्यू में फंसता है उनके बारे में सोचें. अभी 4 दिन पहले पन्ना में एक रेत का खदान खुद रहा था, सरपंच साहब खुदवा रहे थे, उसमें 6 लोग दब के मर गए. क्या इसके बारे में हमको कोई चिंता है? और दिल्ली में बहुत बड़ा गड्ढा था कंस्ट्रक्शन एजेंसी का किसी का, उसमें पानी गिर गया और उसमें एक टैक्सी वाला अंदर चला गया. 2-4 घंटे वो चिल्लाते रहा लेकिन वो मर गया. तो कहने का अर्थ यह है कि अर्बन क्लाइमेट के बारे में, अर्बन सस्टेनेबल लाइफ के बारे में कि हमें सीरियसली सोचना पड़ेगा. यहाँ का हवा, यहाँ का पानी को शुद्ध रखने के साथ साथ, लिवेबल रखने के साथ साथ, हम कूड़ा कचरा मतलब ढेर ना लगाएं. यहाँ पे पानी जो है स्रोत है उसको बर्बाद ना करें, अपनी इमीडिएट एटमॉस्फेयर को बचा के रखें.
ये सब इश्यूज सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा, ये चीज़ कभी होगा नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन सीरियसली जो प्लानर्स है, गवर्नमेंट एजेंसीज है, शुड थिंक सीरियसली अबाउट पुटिंग ए कैप ऑन अर्बन लिमिट्स ऑफ पॉपुलेशन। ये कब संभव होगा मुझे नहीं पता, लेकिन अब एनसीआर को देख लीजिए, लगभग 2.5 करोड़ लोग हैं वहाँ पे। यदि हम सिंपल भाषा में कहेंगे, वो सुबह सुबह अपना लोटा लेके चले जाएंगे, उतनी मतलब जो निकलता है मल और मूत्र, इसको संभालना किसी की बस की बात नहीं है। घर का कूड़ा एक दिन बाहर ना निकलें तो घर में बू मारता है। तो 2 दिन के लिए आजकल मतलब पेट्रोल का भी प्रॉब्लम है, डीजल का भी प्रॉब्लम है, तो वो म्यूनसिपल का जब गाड़ी लेके आता है उनमें उसमें भी कटौती हो गया, तो वो नहीं आएंगे, देन प्रॉब्लम तो हम ही को फेस करना पड़ेगा। सो दिस आर द सम ऑफ द सीरियस इश्यूज विच रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड फाइंडिंग आउट सॉल्यूशंस। चूँकि सॉल्यूशंस बाहर से नहीं आने वाले हैं, सॉल्यूशंस हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। ये बहुत एसेंशियल है। सिविक बॉडीज़ का अपना कुछ मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन बाकी चीज़ों को कूड़ा कचरा इकट्ठा ना करने का, उसको बहुत बड़ा पहाड़ी ना बनाने का, और दूसरा क्लाइमेट चेंज को जो हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, उन चीज़ों को किस हद तक हम रोक सकते हैं, इन चीज़ों को लेके सीरियसली सभी इंसानों को सोचना पड़ेगा। और साथ में जब तक ग्रामीण विकास के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो अर्बन का जो इमिग्रेशन होता रहेगा। सो इट्स अ क्वाइट ए बिग इशू, बट कहीं ना कहीं से इन बातों की शुरुआत होने की आवश्यकता है। भोपाल में इस प्रक्रिया को शुरुआत करने के लिए विकास को, SNHC को, MPSSB को और एक बार धन्यवाद अदा करते मैं आशा करता हूँ, मेरा आकांक्षा है ये दिन भर की डेलिब्रेशन से कुछ 2-4 ही मुद्दे सही वो एक्शनेबल मुद्दे निकल के आए। जय हिंद। Thank you, sir, for the insight. Next, I would like to invite Mr. Jagdish Krishna Swami on the stage to speak a few words. And आप सबको नमस्कार। Welcome to all the participants here, and nice to be in Bhopal in Madhya Pradesh. It is actually the heart of India and heart of conservation initiatives also. So it has produced some excellent forest officers. पवार साहब तो अभी नहीं रहे, लेकिन बहुत और हैं, और उम्मीद है कि और भी निकलते रहेंगे। हालांकि मैं तमिलनाडु और कर्नाटका से हूँ, लेकिन मैं आज आपसे हिंदी में भी बात कर रहा हूँ। और ज़्यादातर मैंने जो काम किया है वो जंगलों में, पहाड़ों में और नदियों में किया है, लेकिन कुछ 4-5 साल से मैं ये जो शहरीकरण से जो दिक्कतें आ रही हैं पर्यावरण में, उस पे ज़्यादा मैंने ध्यान दिया है, क्योंकि मेरा जो संस्था है इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स बेंगलुरु, उसका एक महत्व है कि जो शहरीकरण हो रहा है उसको थोड़ा और पर्यावरण की तरह उसका पर्यावरण फ्रेंडली, बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली बनाया जाए, सस्टेनेबल बनाया जाए। सो दिस इज़ द एप्ट टॉपिक फॉर टुडे, क्योंकि कुछ सालों में, मेरे ख्याल से कुछ 20 सालों के अंदर, हाँ, जो भारत के 50% लोग शहरों में, किसी तरह के शहरों में रहेंगे, और जब तक हम कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी का सलूशन हम शहरों में नहीं ढूंढेंगे और नहीं सॉल्व करेंगे, तो बाकी जगह भी बहुत मुश्किल होने वाला है। और अर्बन सस्टेनेबिलिटी और रूरल सस्टेनेबिलिटी में पूरा कनेक्शन है। आप तो जानते ही हैं कि जैसे दिल्ली का जो पानी है, कुछ तो यमुना से ट्रीट होके आता है, टेहरी डैम से आ रहा है, बेंगलुरु का पानी कावेरी से निकालते हैं हम, और ये भोपाल का भी मेरे ख्याल से नर्मदा से आ रहा है। तो जो शहरों का जो डिपेंडेंस है ऑन वाइल्ड इकोसिस्टम, सेमी वाइल्ड, रूरल, उसका जो कनेक्शन है, उसको हमें थोड़ा डिपेंडेंस कम करना पड़ेगा। सो या ओके, या देयर व्हिच द ओके ओके, ठीक है। सो ये तो आपने तो देखा होगा, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सबने देखा होगा, 17 है टोटल,
और लेकिन कुछ लोग इसका ठीक से अध्ययन नहीं करते हैं। एक उदाहरण मैं देता हूँ, आपने देखा होगा ये 14 नंबर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, लाइफ बिलो वाटर। काफ़ी लोग समझते हैं कि ये हमारे नदियों के बारे में है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स के बारे में है, लेकिन सिर्फ ये मेरीन इकोसिस्टम्स के लिए है। और ये जो लाइफ ऑन लैंड है 15, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के लिए है। मतलब हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स, फ्रेश वाटर के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ही नहीं, सिर्फ टारगेट्स हैं अंडर क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन नंबर 6। सो टारगेट 6.6 आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स और बायोडाइवर्सिटी। और लाइफ ऑन लैंड में भी इनलैंड वाटर बॉडीज इनडायरेक्टली कवर हो जाता है। जब भारत सरकार ने मुझे IPCC में एज अ लीड कोऑर्डिनेटिंग लीड ऑथर नॉमिनेट किया था, मैंने वहाँ जाके पूछा कि इतने मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स उन्होंने बनाया है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स को कैसे छोड़ दिया? जब आपका लाइफ बिलो वाटर मेरीन के लिए है, लाइफ ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल के लिए है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सबसे एंडेंजर्ड बायोम है। तो फिर पता लगा कि जब नेगोशिएट हो रहा था तो जो काफ़ी दो देश हैं जो साथ में कर रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई गोल हो जिससे उनका जो पानी पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है उस पर कुछ रोक टोक हो। इसलिए उन्होंने उसको क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के अंदर एक टारगेट ही रखा है, और लाइफ ऑन लैंड में थोड़ा इनडायरेक्टली है, अदरवाइज नहीं है। तो ये ओमिशन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड बायोम है। ग्रासलैंड्स भी है, लेकिन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम से सबसे एंडेंजर्ड बायोम है थ्रू आउट द अर्थ, एंड सर्टेनली इंडिया में तो है ही। और जब हम आज अर्बन सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जितने हैं यहाँ पे गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग और क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन और ये क्लाइमेट एक्शन और लाइफ ऑन लैंड, ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड हैं अर्बन सस्टेनेबिलिटी के साथ। लेकिन बाकी सब सोशली इंक्लूसिव अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना है तो मेरे ख्याल से एक भी ऐसा गोल नहीं है जिसके साथ हमारा कनेक्शन ना हो। अब जैसे कोस्टल सिटीज़ हैं तो वो लाइफ बिलो वाटर एस्ट्यूरीज और डेल्टास वगैरह, जैसे चेन्नई हो या कोलकाता हो या मुंबई हो, वो कनेक्टेड होगा। लाइफ ऑन लैंड तो सब जगह पे तो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है। भोपाल में भी तो भोपाल इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट फॉर कंपेयर टू मेनी अदर सिटीज़। और आप ये देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज़ और कम्युनिटीज़ का अलग एक SDG भी है। तो ये SDG को जब हम देखते हैं, आप सिर्फ गोल मत देखिए, उसके अंदर जो टारगेट्स हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखिए, तो फिर जो सिनर्जीज और ट्रेड ऑफ्स हैं, अब जैसे हम कावेरी से पानी निकाल के 100 किलोमीटर पहाड़ों में सीमित था क्योंकि टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वेस्टर्न घाट्स का, या ईस्टर्न हिमालयाज़ का, या सेंट्रल इंडियन हाईलैंड्स का, और ये सब का, तो ज़्यादातर हम सोचते थे कि शहरों का इसके साथ कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब 50% हम लोग अभी शहरों में रहने वाले हैं सून, तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन प्लानिंग शहरों में करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप देखेंगे कि मैं जब कुछ जैसे 20 या 25 साल पहले आप कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाते थे तो वो रिजर्व फॉरेस्ट या सेंचुरी और जो पास में जो भी शहर था उसमें काफ़ी 15, 20, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर का भी अंतर होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अभी जो शहरीकरण हो रहा है जिस तरह से, अभी बिल्कुल उसके बाउंड्री में आ गया है। तो इसलिए अगर हम अर्बन सस्टेनेबिलिटी में कंजर्वेशन नहीं लाएंगे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और कंजर्वेशन प्लानिंग, तो ये जो वाइल्ड एरियाज़ या सेमी वाइल्ड एरियाज़ में जो वाइल्ड लाइफ है उसको भी बहुत नुकसान होने वाला है। तो ये है हमने अभी एक अध्ययन किया था भारत सरकार के लिए भी और ये IPCC के लिए भी। इसमें हमने स्लाइड्स तो मैं बाद में भी आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, लेकिन इसका समरी ये है कि जितने भी शहर हैं भारत में उसको 4 टाइपोलॉजी में इसमें डाला गया है बेस्ड ऑन क्लाइमेट हैज़र्ड। आप जानते हैं ना कि हर शहर का अलग अलग क्लाइमेट हैज़र्ड है। आप कुछ साल पहले आपको मालूम होगा मुंबई में एक दिन में 925 मिलीमीटर का बारिश गिरा था, पूरा तबाह हो गया था।
और कुछ साल पहले चेन्नई में 1.5 दिन में 225 mm, मतलब पूरे साल का, मतलब पूरा नॉर्थ ईस्ट मानसून का जो बारिश होता है वो 1.5 दिन में गिरा। और अगर बेंगलुरु में अगर 10 mm भी गिर जाए कुछ इलाकों में बाढ़ आ जाती है। तो ये तो दिस इज अ क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर, सब जगह पे कुछ ना कुछ हैजर्ड है। और दूसरा जो 4 जो फैक्टर्स हैं इसमें क्लाइमेट हैजर्ड है और फॉर्म, मतलब किस तरह से वो शहर डेवलप हो रहा है, क्योंकि बहुत डेंस है क्या, ज़्यादा स्प्रेड आउट है क्या, उसमें जो कंक्रीट का है और इम्परवियस एरिया का जो रेशियो है वो कैसा है, और जो एमिशंस है वो जो सिटी से निकल रहा है। क्योंकि हमारा ये एक जो गोल है कि जो शहरों से जो एमिशन हो रहा है ग्रीन हाउस गैसेस का वो भी कम होना चाहिए, तो वो भी फैक्टर लिया हुआ है, क्लाइमेट हैजर्ड, एमिशन और डेवलपमेंट। और डिस टाइप का उसका टाइपोलॉजी है, मतलब स्प्रेड है सिटी का जो शेप है और फॉर्म है, उसके बेसिस में ये 4 टाइप के शहर हैं इंडिया में, और इसका अलग अलग इसका डेवलपमेंट पाथवे करना पड़ेगा फ्यूचर में अगर हमें शहरों को सस्टेनेबल रखना है। तो ये आप बाद में भी देख सकते हैं, इसमें भोपाल भी ढूंढ सकते हैं आप, दिल्ली ढूंढ लीजिए, आगरा ढूंढ लीजिए, लखनऊ ढूंढ लीजिए, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोई भी शहर ढूंढेंगे तो कोई इनमें से ये 4 टाइपोलॉजी में से एक में वो आएगा वो, और उसके अलग अलग वो पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। एक तो आप मैंने तो बात कर लिया, तो आपको तो मालूम ही है कि सब जगह अर्बन फ्लडिंग का तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अर्बन एरिया में हम लोग क्या करते हैं, जो परवियस सरफेस होता था, जहाँ पे घास हो या सॉइल हो, उसको हम कवर कर देते हैं, इम्परवियस बना देते हैं, तो नेचुरली जब बारिश होगा तो वो रन ऑफ ही बनेगा, और वो रन ऑफ के लिए अगर जगह नहीं है जाने के लिए, फिर उसमें फिर लोकल फ्लडिंग या और इस टाइप का फ्लडिंग हो सकता है, रीजनल फ्लडिंग भी हो सकता है। और ये फ्लड और स्टॉर्म रिस्क तो सब जगह बढ़ चुका है। आप तो जानते हैं कि ये साल अभी सुपर एल नीनो का शायद शुरुआत हो चुका है, तो भारत के कई शहरों में काफ़ी गर्मी भी हुआ है, और आप कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि हीट स्ट्रोक की वजह से काफ़ी लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो ये जो हीट स्ट्रेस है ये बढ़ने ही वाला है, और यहाँ पे आप अब जैसे कोस्टल एरियाज है वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वहाँ पे ये जो इवेपोरेटिव कूलिंग है, जो ग्रीन और ब्लू ग्रीन सरफेसेस या ब्लू वाटर बॉडीज़ का, उससे उतना फ़र्क नहीं पड़ सकता, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी की वजह से आपका इवेपोट्रांसपिरेशन पे थोड़ा रोक है, just like we can't perspire when it's high humidity, but the shade of trees is very important in high humid areas, क्योंकि शेड के नीचे टेम्परेचर कम होगा और उसी सेम ह्यूमिडिटी में स्लाइटली लोअर टेम्परेचर से आप बच सकते हैं। जो लार्ज ट्रीज हैं, जो बच्चे कुचे हैं, जहाँ पे भी हाई ह्यूमिडिटी भी हो वहाँ पे दे आर इररिप्लेसेबल एसेट्स, क्योंकि एक लार्ज ट्री को आप रिप्लेस करने के लिए आपको 50, 60, 100 साल लग सकते हैं, क्योंकि वो जो नया प्लांटेशन कितना भी लगा दीजिए उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। सो लार्ज ट्रीज आर बिकमिंग इररिप्लेसेबल इकोलॉजिकल एंड क्लाइमेट रेजिलियंस एसेट्स इन आवर सिटीज। वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। जब बोलते हैं ना कि यहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहिए, इतने पेड़ हम काटेंगे और कहीं और लगा देंगे सैपलिंग्स, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज, हैजर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये है 35 करोड़ पीपल अर्बन एरियाज में वेरी स्ट्रॉन्ग हीट स्ट्रेस ओवर लास्ट फ्यू मंथ्स, ये कुछ सालों पहले का है ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। तो ये जो रियल प्रॉब्लम है, तो ये जो प्रॉब्लम है अर्बन फ्लडिंग का और अर्बन हीट स्ट्रेस का, इसको हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा। हर मोहल्ले में, हर कैंपस में, हर कहीं पे भी शहर में प्लानिंग में जो कर रहे हैं, तो ये इसका जो कनेक्शन है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ साल पहले हमने 10 साल से ज़्यादा हो गया, ये हमने सेंट्रल इंडिया में एक स्टडी किया था वाटर स्ट्रेस का। और आप तो जानते हैं कि जो ज़्यादातर जो ब्लू वाटर रिसोर्सेज हैं हमारे, ग्राउंड वाटर हो या सरफेस वाटर हो, हम खेती के सिंचाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। 80 to 90% है कुछ एरियाज़ में, कुछ जगहों पे 70% है। तो अभी पानी के लिए कंपटीशन हो रहा है, क्योंकि शहर क्या करते हैं, शहर अच्छा पानी लेते हैं नदियों से या और रिजर्वायर से, वेटलैंड से, या भूजल को भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा क्वालिटी पानी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और
बहुत प्रदूषित करके छोड़ते हैं। तो वो जो प्रदूषित करके छोड़ते हैं उसका अगर हमने रिसाइकलिंग नहीं किया और उसको इस्तेमाल नहीं किया सिटी के वाटर सिक्योरिटी के लिए, तो फिर आगे के सालों में बहुत दिक्कत होने वाला है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जो सिटीज़ डिपेंड करते हैं बाकी दूर दराज इलाकों से पानी के लिए, उसको थोड़ा कम ही करना पड़ेगा। बेंगलुरु में भी अभी बात कर रहे हैं, कावेरी से तो हम पानी ले ही रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि वहाँ शरावती का जो पानी है वेस्टर्न घाट्स का, उसको हम डाइवर्ट करेंगे ईस्टवर्ड और लाएंगे बेंगलुरु में। तो ये तो फिर क्या होगा कि जो शहरीकरण हो रहा है उससे वाइल्ड इकोसिस्टम्स और जो बचे कुचे जो फ्री फ्लोइंग रिवर्स है उन पे भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम शहरों को जब डेवलप करेंगे तो पानी का जो डिपेंडेंस है किसी तरह से जितना हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकें, और जो गैप बचता है वो फिर दूसरे जगहों से ले सकते हैं। और उसके लिए उदाहरण भी है, आप जानते हैं कि मुंबई में जो पानी आता है तुलसी वैतरना जो लेक्स है उसका कैचमेंट क्या है, ये बोरीवली नेशनल पार्क है। और शिमला में बहुत साल पहले जो पानी का सप्लाई होता था उसके लिए उन्होंने एक शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी बनाया था। और बेंगलुरु में भी है, सरगट्टा है, बाकी सब जगह पे ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे जहाँ पे जो वाइल्ड प्रोटेक्टेड एरिया है उसके वजह से आपको साफ पानी शहरों को देने के लायक बन रहा है। तो ये जो कनेक्शन है बिटवीन वाइल्ड एरियाज एंड सस्टेनेबल सिटीज़, इसको भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, ये डिस्कोर्स को भी बढ़ावा देना चाहिए। ये तो आप सब जानते हैं कि गौतम तो अभी बाद में हीट आइलैंड के बाद ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा कि, लेकिन आप जानते हैं कि शहरों में जो कंक्रीट है, रोड्स है, एसफॉल्ट है, जो भी हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो ये सोलर एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है और रूरल एरिया के कंपैरिजन में ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीट होता है। ये मतलब क्लाइमेट चेंज के पहले भी होता था, अब क्लाइमेट वार्मिंग के वजह से ये तो हीट आइलैंड इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग दोनों का मतलब इंटरेक्शन चल रहा है, तो इसलिए बहुत हमारे लिए खतरा है ये। और हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कम करने के लिए अगेन हमें वेजिटेशन, ये ब्लू वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और ये हमारा जो बेंगलुरु में है, हम अपना कैंपस बना रहे हैं, सस्टेनेबल कैंपस। तो एक चीज़ है कि शहरों में हम लोग पूरा हाइड्रोलॉजी बदल देते हैं, पूरा अलाइनमेंट चेंज कर लेते हैं, गड्ढे खोदते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो जो हाइड्रोलॉजी होता है ना शहर का, वो जो पुराने ज़माने का जो हाइड्रोलॉजी था, ओरिजिनल टोपोग्राफी बेस्ड या एक्वाफर बेस्ड, उससे काफ़ी बदल चुका है। तो इसलिए ग्रीन स्पेसेस और ब्लू इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, क्योंकि शहरों में जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका जो नेचुरल कनेक्टिविटी था वो तो अभी नहीं रहा। तो अब हम जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की बात करते हैं या इकोसिस्टम बेस्ड एडाप्टेशन की बात करते हैं, वो आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। ब्लू, ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़ के ही आप सस्टेनेबल सिटी बना सकते हैं। तो ये जो कैंपस हम बना रहे हैं 54 एकर्स में, इसमें हमने पहले से ही कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, अर्बन फूड गार्डन्स और ये सब का हमने प्लानिंग किया हुआ है। और ये एक स्केलिंग अप, आप मूर्ति साहब ने भी बोला कि हमें कुछ एक्शनेबल पॉइंट्स चाहिए। अब हर शहर में हायर एजुकेशन की संस्थाएं हैं, स्कूल, कॉलेज वगैरह हैं, और ये काफ़ी लैंड ऑक्यूपाई करते हैं। इनका आधा एकड़ से लेकर 200, 300 एकड़, 400 एकड़ तक इनके पास ज़मीन है। डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट्स और कैंटोनमेंट्स के पास भी काफ़ी ज़मीन है। और ये जो एरियाज़ हैं ये स्टेबल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, मतलब इसका जो 100 साल, 200 साल, 300 साल के लिए वही मैनेजमेंट रहने वाला है। अगर ये यहाँ पे जैसे आपका ये कैंपस हुआ या IFM हुआ या हमारा ये जो बेंगलुरु में कैंपस है, अगर पूरे शहर में हर स्कूल, कॉलेज और जो बाकी संस्थाएं, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, उसमें अगर हम बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली ये ग्रीन एंड ब्लू स्पेसेस बना सकें तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये बेंगलुरु है, ये 2024 भी सुपर, मतलब एल नीनो था, सुपर एल नीनो। ये तो इस साल तो महा सुपर एल नीनो होने वाला है शायद, लेकिन ये 2024 में भी हुआ था। तो इसमें हमने क्या किया कि बेंगलुरु का जो एवरेज टेम्परेचर है वो सब पिक्सल से सब्ट्रैक्ट किया। तो जो एरियाज आपको नेगेटिव में दिख रहा है ब्लूइश कलर में, उसका मतलब दे आर कूलर देन द सिटी एवरेज और स्पेशल एवरेज।
or the areas which are shown as positive and towards red color, they are warmer than the city average. और जहाँ पे हमने अर्बन फॉरेस्ट, अर्बन गार्डन, दाल बाग और ये सब जो जहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा है या कुछ कंजर्वेशन हो चुका है, वहाँ पे हमने देखा कि कूलिंग इफेक्ट. ये था पीक ऑफ समर में, ये मार्च 26 मार्च, वन ऑफ द हॉटेस्ट डेज में इसका ये हम इमेज दिखा रहा हूँ. और हमने फिर देखा कि बायोडाइवर्सिटी के साथ ये एरियाज का क्या कनेक्शन है. तो ई बर्ड के माध्यम से हमने बर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, ये जो एरियाज हैं, क्योंकि हर शहर में काफ़ी बर्ड वॉचर्स रहते हैं. तो ये एक टैक्सा है जिसमें आपको शहरों में भी अच्छा डेटा मिल जाएगा. और आप जानते हैं कि अर्बन बायोडाइवर्सिटी में बर्ड्स का तो महत्व बहुत ज़्यादा है. और कुछ सालों पहले, मैं 2 साल पहले वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक स्टडी था जिसमें 50% ऑफ इंडियाज बर्ड्स, जो टोटल हमारे पास कितने 1350 या ऐसे कुछ है स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, उसका 50% वे रिकॉर्डेड ऑन सम फॉर्म ऑफ कैंपस, एजुकेशनल कैंपस एंड ऑल. सो कैंपस बेस्ड कंजर्वेशन का जो अपॉर्चुनिटी है वो एक्शनेबल पॉइंट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई कैंपसेस में वो ग्लास का बिल्डिंग बनाते हैं, वो एग्जॉटिक ट्रीज लगा देते हैं, ऑर्नामेंटल स्पीशीज लगा देते हैं. उनको मतलब लोकल इकोलॉजी का, नेटिव स्पीशीज का ज़्यादा शायद जानकारी भी नहीं है. ये अगर हम बदल सके तो कम से कम बर्ड्स, बटरफ्लाइज, बीज, फ्रूट बैट्स, इंसेक्टिवरस बैट्स और बाकी एंड्स, ये सब के लिए कम से कम हम हैबिटेट बना पाएंगे. और ऑल्सो फॉर अदर स्पीशीज लाइक मॉनिटर लिजर्ड, मंगूसेस एंड सो ऑन. अर्बन एरियाज में बहुत पोटेंशियल है कंजर्वेशन के लिए. और दूसरा एक मैं बताना चाहता हूँ कि आपने ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, आपने ये टर्म सुना होगा, ये वेस्ट से आया है और भारत सरकार को ये इतना पसंद नहीं है. क्यों? क्योंकि हम लोग पहले भी बहुत कुछ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस करते थे. हमारा मतलब ये जो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स हैं, कुछ 1000 साल पुरानी वेटलैंड्स भी हैं जो मल्टीपल यूज़ के लिए है, मतलब सिंचाई के लिए, फिशरीज़ के लिए, ग्रोइंग वेटलैंड प्लांट्स, बायोमास एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत हम लोग कर चुके हैं. और फॉरेस्ट भी है, सेक्रेड ग्रोव्स भी है, बहुत कुछ है. क्योंकि नेचर बेस्ड सोल्यूशन पहले से ही चल रहा था तो फिर ये थोड़ा वेस्ट से टर्म आया है. तो भारत सरकार का एक ये पॉइंट है कि हमें इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन, ये जो ईबी है, ये टर्म ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें क्लाइमेट एक्शन का मतलब नेचर बेस्ड सोल्यूशन का जो सबसेट है, जो क्लाइमेट एक्शन में ओरिएंटेड है, उसको हम इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन बोलते हैं. तो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन और इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन में फ़र्क क्या है. और इंडिया का जो तो टारगेट है कॉप 15 में हमने कमिट किया हुआ है कि 30% ऑफ आवर इनलैंड लैंड, वाटर एंड मेरीन एरियाज विल बी अंडर सम फॉर्म ऑफ कंजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन बाय 2030. तो वो अगर हमें टारगेट अगर पहुंचना है तो हमें जो शहरों में जो बायोडाइवर्सिटी का जो पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं किया तो ये 30% टारगेट हम लोग मीट नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जो फॉरेस्ट एरियाज है अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन वॉट एवर कंडीशन दे आर, आप लगा दीजिए 20% ऐसा अप्रॉक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ. और बाकी बायोस्फीयर रिजर्व और ये सब जोड़ वोड़ के कुछ आपको 25% तक ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी गैप है. और वो आपका अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स, अर्बन फॉरेस्ट, बायोडाइवर्सिटी पार्क जो फयाज ने और बाकी उनका टीम ने इतना अच्छा बनाया दिल्ली में, यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क और बाकी अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, उसके माध्यम से हमें ये टारगेट पहुंचना होगा. तो ये अरावली का तो है ही है. तो ये अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स अभी हमें सेलेक्ट करना है साइट्स. बेंगलुरु के पास एक टीवीएस का एक फैक्ट्री है, इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहाँ पे उनका जो उन्होंने OECM गैसेट मतलब प्रपोज किया हुआ है और भारत सरकार उसको कंसिडर कर रही है. वहाँ पे तो पैंगोलिन भी है, स्लेंडर लॉरिस भी है. तो इतना अच्छा उन्होंने बनाया है. तो हम we should take the example that all industrial estates, all educational institutes, any institution which has got some land under its control should be keeping some space for biodiversity conservation. और जो हम ये जो पूरे काफ़ी जगहों पे हम लोग रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ रिवर्स. पूरा उल्टा है. पूरा देखिए, पूरा ये तो मैंने अपने फील्ड वर्क में देखा था कि राइट साइड में देखिए पूरा कंक्रीट बिछा देते हैं, फ्लड प्लेन को कंस्ट्रेन कर देते हैं,
उसको कमर्शियल स्पेस और रियल एस्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज नॉट इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन. सो रिवर फ्रंट डेवलपमेंट इज द ऑपोजिट ऑफ इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ रिवर्स. और ये उसमें ठीक है और कुछ फायदे होंगे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट रेजिलियंस को कोई फायदा नहीं होने वाला है. तो आपको अगर उदाहरण चाहिए कि अगर एस्थेटिकली जो और मतलब सिटीजन्स का रिक्रिएशन के लिए सेफ अगर यूज़ करना है, तो ये जो लेफ्ट साइड में इस तरह का जो मॉडल है और जो फयाज है और उनके जो टीम ने दिल्ली में जो यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क और बाकी जो किया हुआ है, वो है असली उदाहरण of how river restoration should be done in urban areas, not the example you see on the right side, which is by the way from Pune. और दूसरा ये है कि हमने देखा हुआ है कि कई लोगों को शहरों में कौन सा इन्वेजिव स्पीशीज़ है, कौन सा नेटिव स्पीशीज़ है, कौन सा कहाँ से आया है, ये उनको मालूम नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है. और एक और बात है कि शहर में हमें तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि लोग पूरा दुनिया के जो अलग अलग प्लांट्स हैं वो लाना चाहेंगे, और उसको हम उसका ज़्यादा रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि वो बॉटेनिकल गार्डन हो या ऑर्नामेंटल हो, लोग लाएंगे बाहर से प्लांट. और आप बेंगलुरु में भी ज़्यादातर काफ़ी स्पीशीज़ जो हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के हैं या सेंट्रल अमेरिका के हैं. तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो अच्छा खासा जो रेन ट्री है जो हम मतलब इंडिया का नहीं है, लेकिन अच्छा वो बायोडाइवर्सिटी को भी थोड़ा बहुत हैबिटेट देता है. तो ऐसा नहीं है कि शहरों में हम नॉन नेटिव स्पीशीज़ को प्रेफर नहीं करेंगे, जो है ठीक है, लेकिन अगर हमें फ्यूचर में कोई प्लांटिंग करना है तो थोड़ा जो नेटिव स्पीशीज़ जो क्लाइमेट रेजिलिएंट स्पीशीज़ है उसको हमें प्रमोट करना पड़ेगा. आपने सुना होगा कि कुछ दिनों में मतलब 3-4 दिन में थंडरस्टॉर्म्स काफ़ी जगहों पे हुआ है. तो मेरा जो टीम है भागलपुर बिहार से, वहाँ का जो अर्बन फॉरेस्ट है सुंदरवन, उसमें कई पेड़ गिर चुके हैं. और महाराष्ट्र में एक रिपोर्ट आई है कि 500 फ्रूट बैट्स हैव डाइड बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव थंडरस्टॉर्म्स. तो ये जो एक्सट्रीम रेन इवेंट्स या सडन रेन इवेंट्स का जो इम्पैक्ट वेजिटेशन पे हो रहा है, ये भी आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इवन नेचुरल एरियाज आर नॉट सेफ. जो मेरा लॉन्ग टर्म साइट है वेस्टर्न घाट्स में, अपर नीलगिरीज में, बहुत रिमोट एरिया में हमने 4 रेन गेज लगवाए हैं, और बाकी जो 25 रेन गेज हैं वो स्लाइटली लोअर एलिवेशन. ये कैन दीज आर द हाईएस्ट लोकेटेड रेन गेजेस इन द एंटायर वेस्टर्न घाट्स. वहाँ पे एक दिन में 4 रेन गेज में 914 mm, 950 mm, 967 mm और कुछ 925 mm, एक दिन में ऑलमोस्ट 1000 mm ऑफ रेनफॉल. और वो एक शोला फॉरेस्ट को भी निकाल के भगा के ले गया. सो एक्सट्रीम रेन इवेंट्स आर अ थ्रेट इवन टू सेमी नेचुरल इकोसिस्टम्स. और ये स्पीशीज को आप पहचानते हैं? हाँ, तो ये भारत का है कि कहीं और का है? ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज है, ऑर्नामेंटल ट्रेड से भारत में आया है. इसको लोग बहुत प्रेफर करते हैं, और इसके वजह से फिर अपना जो एक्वेरियम ट्रेड से या घर से सब जगह पे फैल गया. ये अहमदाबाद में मैंने फोटो लिया है, वहाँ पे सारे पॉन्ड्स में ये रेडिएट स्लाइडर है. बेंगलुरु में भी फैल चुका है. इट इज़ अ थ्रेट टू नेटिव टर्टल्स. सो एग्जॉटिक स्पीशीज़ भी बहुत बढ़ चुके हैं. और बेंगलुरु में हमने स्टडी किया था, EDA ने भी इस्तेमाल किया था. सारे लेक्स में हमारे जो फिश हैं सारे ज़्यादातर एग्जॉटिक हैं या तो कमर्शियल स्पीशीज़ है. जो नेटिव फिश होते थे बेंगलुरु रीजन का, कावेरी रीजन का भी, वो बहुत कम बच गए. तो अगर हमें इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन करना है, किसी भी कैंपस में पॉन्ड बनाना है या अर्बन रिवर का कुछ रेस्टोरेशन करना है, तो हमें नेटिव स्पीशीज़ को प्रमोट करना पड़ेगा, और तभी अर्बन एरियाज कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एज अ नेशनल गोल. और अर्बन एग्रीकल्चर में भी काफ़ी फ़ायदा है, क्योंकि कई लोग अपना टेरेस गार्डन लगाते हैं, बालकनी में गार्डन लगाते हैं. इसमें आप पॉलिनेटर फ्रेंडली प्लांट्स लगा सकते हैं. इसमें कम से कम बटरफ्लाइज और बर्ड्स और कुछ बैट्स के लिए भी आप हैबिटेट बना सकते हैं विदाउट पोजिंग एनी थ्रेट टू ह्यूमन वेलबींग. तो ये एक और अपॉर्चुनिटी है कि लोग जो शहरों में अपना खुद का फूड प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स उगाते हैं, उसमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के साथ भी आप अपना कनेक्शन बना सकते हैं. और हम सोचते हैं कि जब शहरीकरण होता है तो ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ का मतलब नेचर इज़ ऑलवेज इन रिट्रीट इन द सिटी, दैट इज़ द पैराडाइम. लेकिन हमने ये जो एट्री जो संस्था है हमारे, मैं पहले एट्री में 20 साल था, उसके बाद यहाँ पे IHS में आया हूँ. तो वहाँ पे हमने जब स्टडी किया था
जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो बी स्पीशीज रिचनेस था वो उतना नहीं था, क्योंकि वहाँ पे रूरल एरियाज में क्या इस्तेमाल होता है, काफ़ी पेस्टिसाइड इस्तेमाल होता है, और कई जगहों पे हैबिटेट भी नहीं है पेड़ों का। और सरप्राइजिंगली अब अर्बन एरियाज की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, अर्बन एरियाज में लोग पता नहीं कहाँ के तरह तरह के प्लांट्स उगाते रहते हैं, पूरे साल फ्लोरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो वहाँ पे ये पता लगा काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट कि कुछ स्पीशीज़ के लिए शहरीकरण से कुछ फ़ायदे भी हो रहे हैं। तो उसका हमें कुछ तो फ़ायदा उठाना चाहिए कि कम से कम कुछ स्पीशीज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए अर्बन एरियाज़ में हैबिटेट और रेफ्यूजिया मिल सकता है, उसको प्रमोट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये तो खैर हमारा कैंपस का हम जो ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं। और दूसरा है कि जो ग्रीन स्पेसेस हम अर्बन एरियाज़ में बना रहे हैं, दे मस्ट हैव द की इकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स एंड नीड्स ऑफ डाइवर्स स्पीशीज़। इसको हमें देखना पड़ेगा। सिर्फ कोई पेड़ उगाने से या कोई एरिया को एक पानी का जो पूरा पॉन्ड बनाने से फ़ायदा नहीं हो, उसको देखना पड़ेगा कि इकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स वहाँ कायम है कि नहीं। और हमने ये जो अभी स्टडी किया था ऑफ नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस इन ग्लोबल साउथ, उसमें पता लगा कि आधे से ज़्यादा जो स्टडीज़ हैं उसमें उनको ये भी नहीं मालूम कि नेटिव स्पीशीज़ उन्होंने उगाया है, कि एक्जॉटिक उगाया है, कि इन्वेजिव स्पीशीज़ है। सिर्फ ग्रीन स्पेस बता दिया, नेचर बेस्ड सोल्यूशन बता दिया, उसमें क्या इकोलॉजी है, क्या बायोडाइवर्सिटी को बेनिफिट्स हैं, बहुत कम लोगों ने स्टडी किया। और हमने ये भी पता किया कि जो ऑथर लिस्ट में कम से कम एक बायोलॉजिस्ट होता था अगर है, तो वो स्टडीज़ में कम से कम वो स्पीशीज़ का नाम और ये सब बताते थे, नहीं तो अदरवाइज हाँ नेचर बेस्ड सोल्यूशन। और हमने ये भी देखा है कि अगर नेचर बेस्ड सोल्यूशन आप शहर में कर रहे हैं, कौन सा स्पीशीज़ का लाइफ साइकिल उसमें कंप्लीट हो सकता है, कौन सा बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो सकता है फ्रॉम होस्ट प्लांट टू नेक्टर एंड एवरीथिंग, कौन सा बर्ड का ब्रीडिंग हो सकता है, कौन सा भी जो भी स्पीशीज़ हो, बीज का नेस्ट हो सकता है कि नहीं, ये लोग देख नहीं रहे हैं कि। और माइग्रेटरी बर्ड जो आते हैं उनके लिए हैबिटेट है कि नहीं, माइग्रेटरी स्पीशीज़ भी। बाय द वे रीजनल बटरफ्लाइज और बीज का भी रीजनल माइग्रेशन होता है। आपने अगर देखा होगा तो कुछ सीजन्स में बेंगलुरु में तो मैंने देखा है, आपने शायद भोपाल में भी देखा होगा। तो जब ऐसे माइग्रेटरी रीजनल माइग्रेशन या इंटरनेशनल माइग्रेटरी स्पीशीज़ आते हैं, उनके लिए हैबिटेट हम शहरों में कैसा कायम रख सकते हैं, तो ये सब देखना पड़ेगा। इसमें जो लाइफ साइकिल है स्पीशीज़ का वो कंप्लीट हो सकता है इधर फुली और पार्शियली, ये देखना पड़ेगा हमें। ये सब हमारे कैंपस के जो वाइल्ड लाइफ है उसका बता रहे हैं। लेपर्ड्स भी है हमारे पास, लेकिन लेपर्ड को तो अर्बन कैंपस में रखना मतलब को एग्जिस्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हैं कुछ अभी तक कुछ 7-8 लेपर्ड आ चुके हैं हमारे कैंपस में। उम्मीद रखते हैं कि फ्यूचर में भी दे विल स्टे आउट ऑफ हार्म्स वे एंड वी विल ऑल्सो बी एबल टू स्टे आउट ऑफ हार्म्स वे. Although I am a little nervous because I am the Dean of the School of Environment and Sustainability, so I have to foster the coexistence with many species on our campus. और कुछ एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में आपको थोड़ा नेचर को हेल्प करना पड़ेगा क्योंकि हैबिटेट बहुत कम है. तो ये एग्जांपल्स है बेंगलुरु से. ये हमारे कैंपस में स्पॉटेड आउलेट नहीं था तो हमने एक नेस्ट बॉक्स बनवाया, तो वो आ गया हमारे कैंपस में क्योंकि चूहों का बहुत प्रॉब्लम है. तो इसलिए कुछ आउल्स का भी ज़रूरत था कैंपस में, तो इसलिए हमने बनाया. ये बैट्स के लिए, इंसेक्टिवरस बैट्स के लिए एक बॉक्स है. और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है, उसको बोलते हैं बी होटल. सॉलिटरी बीज होते हैं ना, सॉलिटरी बीज का हर का अलग एक अपार्टमेंट उनको चाहिए होता है. मतलब वो हाइव नहीं बनाते हैं, सोशल नहीं है वो, लेकिन सॉलिटरी बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉलिनेशन ऑफ मेनी ऑफ आवर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड दे कंप्लीटली हार्मलेस, दे डोंट स्टिंग एनीबडी, अनलाइक एपिस डोर्साटा वंस इन अ व्हाइल वो जो प्रॉब्लम होता है सोशल बीज से. So we have to learn to coexist with these species and also give them a little extra chance to survive in very hostile urban environments. तो ये सब जो डिवाइसेस हैं, ठीक है थोड़े आर्टिफिशियल लगते हैं, लेकिन हमें अर्बन एरियाज़ में अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है तो कुछ एरियाज़ में ऐसा भी हमें उनको हेल्प करना पड़ेगा. और ये हमारा कैंपस का आइकॉनिक स्पीशीज़ है. लेपर्ड तो आता रहता है, लेकिन ये स्लेंडर लॉरिस हमारे कैंपस में कुछ 7-8 हैं और हम वी आर रियली कंसर्न अबाउट द फ्यूचर. हमारे राइट हैंड साइड में लोकेशंस हैं, अब कैंपस के बिल्डिंग्स बन रहे हैं और हमारा जो एक गोल है कि किसी तरह से स्लेंडर लॉरिस का ब्रीडिंग पॉपुलेशन कैंपस में मेंटेन हो. और जो सराउंडिंग रिजर्व फॉरेस्ट है, नॉर्थ साइड में हमारे पास सोलिकेट रिजर्व फॉरेस्ट है, उसमें भी स्लेंडर लॉरिस है. उन दोनों के बीच, हमारे कैंपस और रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और हाइड्रोलॉजिक कनेक्टिविटी कायम रहे. सो जस्ट टू कंक्लूड, हमें अगर अर्बन क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को अगर इसका गोल अटेन करना है तो ये रूरल और सेमी वाइल्ड कंजर्वेशन और सस्टेनेबिलिटी के साथ जोड़ना पड़ेगा.
ऐसा नहीं है कि आप शहरों में अलग से सस्टेनेबल हो सकते हैं और बाकी जगह पे नहीं, मतलब बाकी जगह से तो पानी आ रहा है, बाकी जगह से तो हमारा खाना आ रहा है, बाकी जगह से तो हमारा बायोडाइवर्सिटी आ रहा है, तो ये बाकी रिसोर्सेज भी आ रहे हैं. तो वी हैव टू मेक दैट कनेक्शन. Urban biodiversity conservation and urban sustainability has to be connected with our rural sustainability and our conservation of our wild areas. और दूसरा ये फूड, वाटर एंड इकोलॉजी एंड नेचर बेस्ड सोल्यूशन, इकोसिस्टम बेस्ड अडेप्टेशन को ध्यान से हमें रखना पड़ेगा. पूरा जब भी जो शहरीकरण कर रहे हैं उसमें इसको सबसे पहले इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा कि ये जो चीज़ें फूड, वाटर एंड इकोलॉजी, इसका जो कनेक्शंस है विच विल कनेक्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोडक्शन, अर्बन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा. और लास्ट है कि हर सिटी को एक कंजर्वेशन प्लानिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, क्योंकि नेशनल पार्क और हमारा जो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है वो तो अर्लियर डिकेड्स दे यूज्ड टू फोकस ऑन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, राइटली सो, बिकॉज हमारा बल्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी विल ऑलवेज बी इन दोज सेमी वाइल्ड एरियाज और वाइल्ड एरियाज. लेकिन अब जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, हमने अगर सिटीज़ में अगर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अगर प्रमोट नहीं किया और उसके लिए जगह नहीं बनाया, देन वी वुड लूज द बैटल एंड द वॉर ऑल्सो. सो बट भोपाल is in a good state now compared to many other cities and towns, and I hope that this city will be able to show a model, क्योंकि आपका बगल में रातापानी सैंक्चुरी है, टाइगर्स आर अराउंड, शहर में भी वाटर बॉडीज हैं एंड ग्रीन स्पेसेस भी हैं. तो what you do are able to do in this city will be a good example for other cities and towns in central India. So thank you for this opportunity and thank you. Thank you, sir. I think the keynote address has established the conference perfectly, has started it perfectly. Next, I would like to please call Ms. Anuradha Shankar ma'am on the stage to welcome the Thank you. Namaste. I'm here by default. मेरे और विकास का बहुत पुराना संबंध है. ये छोटे से बालक हमारे पास आए थे और मैंने कहा कि तुम पुलिस वाले के पास क्यों आए हो, तो इन्होंने कहा कि हम पुलिस वाले के पास नहीं आए हैं, हम एक गांधीयन एक्टिविस्ट के पास आए हैं. तो तब से हमारा संबंध है एंड आई एम सो प्राउड कि विकास ने, सस्टेनेबिलिटी की बात कही जाए तो विकास एक सस्टेनेबल लड़का है जिसने सस्टेन तरीके से इकोलॉजी के लिए और एनवायरनमेंट के लिए काम किया है. मैं बहुत बधाई देती हूँ आपको. और मैं तो साथ में हूँ ही, आपने रात में बिल्कुल, मैं तो सो जाती हूँ आमतौर पर उस वक्त पर गुंदेचा जी आ गए थे इसलिए मैं जगी हुई थी तो आपका फ़ोन उठा लिया, नहीं तो आज में हो सकता है सुबह एकदम ही गड़बड़ हो जाती. और रात में उन्होंने बताया कि सुबह आपको आना है. मैंने ठीक है आ जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे दोपहर में आना है. तो हमारी जो भी बात होगी मैं दोपहर में आपसे बात करूँगी. अभी मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैं इतने विद्वान मंच के साथ वक्त साझा करने के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ. और भोपाल हो या दुनिया हो, सबसे इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है वो मनुष्य है. होमो सेपियंस सेपियंस सबसे इन्वेसिव है और उसने ना जाने कितने स्पीशीज़ को हमेशा के लिए गताल खाते में डाल दिया है. और लेकिन भोपाल उस मामले में कि इंटरेस्टिंग है कि एक ह्यूमन व्यक्ति ने, जो कि जिसके पास ताकत थी, जो पावरफुल था, उसने अपनी बुद्धिमानी से और अपने वास्तुकला के ज्ञान से भोपाल के नेचुरल ग्रेडियंट्स को यूज़ करके 1000 साल पहले हमको बड़ा तालाब दे दिया. और बड़ा तालाब देने के कारण भोपाल वो चीज़ है जो अभी भी जिंदा है बहुत सारी गड़बड़ी के बावजूद. मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी घटना बताना चाहती हूँ. मैंने जब मध्य प्रदेश को ज्वाइन किया, 92 की बात है, तो मेरे भाई हमारे साथ में आए थे, हम लोग दोनों भाई बहन साथ में आए थे और मेस में एक कंबल के साथ हम दोनों झगड़ा कर रहे थे कि हम ओढ़ेंगे कि हम ओढ़ेंगे. और महीना था पहला हफ्ता जून का, अभी बस ये जो वक्त है ना, ये महीना था. तो फिर फाइनली मुझे रात में जाके और पुलिस मेस के प्रभारी से एक एक्स्ट्रा कंबल मांगना पड़ा, क्योंकि वो लड़का तो ताकतवर है, तो होता ही है भाई, वैसे भी आप जानते हैं छोटा हो तो आप क्या ही कर सकते हो उसके सामने. तो इमोशनली भी ब्लैकमेल करते हैं छोटे भाई लोग, ये भी करता है जैसे. तो ये हालत थी उस वक्त. उसके बाद हम विदिशा में पहुँचे, विदिशा पदस्थ हुए, 96 की बात है, कुछ ही दिन बाद की बात है. और लगभग इसी समय कहीं पर हम किसी घटनास्थल पे जा रहे थे
तो सामने एक चिड़िया टपक के गिरी। तो हमने ड्राइवर से कहा कि अरे क्या हुआ, रुको रुको। उसने कहा कि साहब गर्मी के मारे गिर के मर गई। हम लोग चूँकि एसी वगैरह से यूज टू नहीं थे, क्योंकि पुलिस में इसमें अब तो खैर एनपीए नेशनल पुलिस एकेडमी में भी हर कमरे में एसी लग गया है और नाजुक अधिकारी निकलने लग गए हैं, लेकिन हम लोगों के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो हम अंधेरे में और बिना बिजली के एसी वगैरह तो सोच ही नहीं सकते थे। तो वहाँ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कितना गर्म था, उस वक्त भी गर्म था, क्योंकि वो एरिया गोलकुंडा के पहाड़ियों के आसपास है, तो पत्थरों के कारण गर्म था। तो वहाँ पर हम लोग रहे थे, तो हमें उतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। और एक ज़माने में सब लोग जो एसपी वगैरह होते थे उनको मारुति जिप्सी दिया करती थी सरकार, तो वो जिप्सी की खिड़कियाँ खुली रख के हम घुमा करते थे, हवा आती भी रहती, तो पसीना सूखता रहता था, आपका शरीर अपने आप टेम्परेचर कंट्रोल करता था। तो मुझे तो उतनी भयंकर गर्मी नहीं लग रही थी। मैंने कहा इतनी ज़्यादा गर्मी है? बोले साहब विदिशा में। मैंने कहा बगल में भोपाल है, वहाँ हम कंबल ओढ़ रहे थे और यहाँ पर ये चिड़िया मर के गिर रही है, तो ये क्या मतलब है? तो उस बेचारे ड्राइवर ने, जो उस ज़माने में सिपाही लोग 8वीं पास में भर्ती हो जाया करते थे, जो आप लोगों की तरह बहुत पढ़ा लिखा और पर्यावरण का ज्ञाता नहीं था, उसने मुझसे कहा साहब सब तरफ खदानें खोद दी, सारे जंगल ख़त्म हो गए, पत्थर ही पत्थर है सड़क पे, धरती के अंदर ही धरती के बाहर भी, तो आपको कहाँ से गर्मी नहीं बढ़ेगी, चिड़िया क्यों नहीं मरेगी? और ये जो मनुष्य के इंटरवेंशन ने, ह्यूमन इंटरवेंशन ने जो परेशानी खड़ी की है, वो आपके अर्बन चैलेंजेस के रूप में आपके सामने है, जिनके बारे में आपने इतने अच्छे से बात की और कुछ सॉल्यूशन भी सुझाए। मुझे बहुत उम्मीद है कि आज पूरे दिन देयर विल बी लॉट्स ऑफ पीपल हु विल बी टॉकिंग अबाउट दीज सॉल्यूशंस और आपके कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेंगे। मैं जो मेरा सत्र है उसको सुनूंगी भी और अब मैंने आपको बताऊंगी भी कि कैसे सिर्फ सरकार से कुछ नहीं होता और सरकार क्या होती है, क्योंकि सरकार से अभी अभी निकली हूँ तो आपको ये मैं बता सकती हूँ। तो ये जो सर पे कार रख के चलने की मानसिकता है, उससे हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और पिछले साल रोम में एक कॉन्फ्रेंस में एक पोलैंड के बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपको नहीं लगता कि लोगों को अपने अपने देश में रहना चाहिए और हमारे देश में इतना, हमारे यूरोप में इतनी भीड़ नहीं करनी चाहिए? वो हम भूरे लोगों के बारे में बात कर रहा था। तो मैंने उससे कहा कि आपको नहीं लगता कि आपकी ताकतवर सरकारों को पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका में हथियार बेच करके तो फैल नहीं मचाना चाहिए, लोगों को उनके देश में शांति से रहने देना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भीड़ ना बढ़े यूरोप में तो आपको इतना सोचना पड़ेगा। तो मैं वही कहना चाहती हूँ सर, आप ये कह रहे थे कि 50% लोग शहरों में रहेंगे, मुझे तो बहुत हॉल हो रहा है सोच करके। मैं खुद ही नहीं रहना चाहती हूँ और बहुत सारे नए बच्चे नहीं रहना चाहते हैं। ये 50% लोग अगर शहरों में रहने लगेंगे तो भारत माता ग्रामवासिनी का क्या होने वाला है? तो इसके बारे में हम सब सोचेंगे। आज इस अच्छी शुरुआत के लिए मैं SNHC, विकास और पूरी टीम को, मध्य प्रदेश शासन के उन सभी वन विभाग से जुड़े, पर्यावरण से जुड़े उन सभी विभागों को, शाखाओं को मैं बधाई देती हूँ कि आपने इतना अच्छा मौका भोपाल जैसे शहर को दिया है, जो धीरे धीरे बर्बादी की ओर जा रहा है। और हम ये अभी फिर भी वो स्टेज है बीमारी का कि जब हम उसको बचा सकते हैं। और आप यहाँ आए, यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों की बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। Thank you, ma'am. We have concluded the inauguration ceremony wonderfully with that, Mr. Ward. Yes, sir. Yes, sir. Sure. आज के प्रोग्राम पवार साहब की याद करते हुए किया है श्रीनिवास मूर्ति जी ने। मैं अपनी यंग बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि शायद आप लोगों को पवार साहब है क्या। हम लोग तो जितने भी ऑफिसर्स को सब मालूम है व्हाट एग्जैक्टली इज़। तो वो एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। मैं जब भोपाल से MSc PhD करने के बाद क्या करना चाहिए, तो दैट टाइम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नया शुरू हो रही इन देहरादून, तो मैं ही वॉज डायरेक्टर फॉर दैट। तो फिर मैं उनको एज ए रिसर्च स्कॉलर ज्वाइन हुआ था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लाइक PhD के बाद। तो फिर वहाँ उसके बाद मेरा काम था चंबल सेंचुरी के अंदर, और चंबल सेंचुरी में हम काम कर रहे थे। एंड एक अपने आप में लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा था, मैं काफ़ी अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन किसको बताऊँ। तो एक बार ये पवार साहब फील्ड स्टेशन जाते हैं, वो चंबल आए थे, और फिर मैं अपना पूरा जितना हो सके पूरा समझा दूँ उनको।
उनकी खुशी समय के लिए। तो फिर मैंने खूब बड़ा चढ़ा के कह रहा था कि साहब मैंने तो ये किया, ऐसे मेहनत किया, वैसा किया, और यहाँ पे तो आप सब जानते हैं, श्रीनिवास मूर्ति जी DFO भी रहे हैं, सब जानते हैं चंबल का, वहाँ एक अच्छी पेड़ भी नहीं होता। जहाँ पे आपको गर्मी में क्या बारे में बात चल रही है, गर्मी में आपको आराम भी करना चाहे तो नहीं मिलता, सब अकेशिया का, सब कांटे वाला प्लांट है। तो फिर मैंने पवार साहब से बोला था, सर यहाँ पे देखिए हम इतना मेहनत से काम करते हैं और यहाँ छाया भी नहीं मिलता है, हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो फिर ये सब सुना बहुत प्यार से। फिर लास्ट में एक चीज़ बताया, राव कुछ करना चाहिए तो कर लें, किसी को दुनिया को ही मत बताना कि मैं परेशान हूँ, और मेहनत से ही काम करना चाहिए, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। और ऐसे ही काम करो कि किसी को ये मत बताना। इसी भोपाल में मुझे लाइब्रेरी का, ब्रिटिश लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसमें भी एक बुक में लिखा है, द वर्ल्ड एक्सपेक्ट रिजल्ट्स, डोंट टेल लेबर पेन्स, शो देम द बेबी। ये मैंने यहीं से सीखा था, और पवार साहब ने हमको इतना अच्छा किया कि वो कितना हमको हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। ओनली फ्यू डेज बैक वी हैव ए कम्युनिकेशन भी रहा कि राव आई एम रियली हैप्पी अबाउट द चंबल सेंचुरी, और आप लोगों ने अच्छा काम किया है। एंड मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनने मुझे एक मेरा करियर बनाया, और उसी चंबल में विदाउट एनी जॉब मैं वर्क करता था, और फाइनली मुझे भोपाल के बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बनने का मौका मिला, बिकॉज ऑफ द ऑल द क्रेडिट दैट पवार साहब हैज़ गिवन मी। शुरू में जो एंकरेजमेंट हमको किया है उसके लिए मैं रियली धन्यवाद देना चाहूँगा पर्सनली। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. I would like to request Vikas sir to please present mementos to all our dignitaries and guests and conclude the inauguration ceremony. I request everyone to please step out for a group photo, and then we can proceed with the tea and snacks.
Welcome back, everyone. We are beginning with our first technical session of the conference, which is titled Mainstreaming Life Through Living Landscapes, Building Climate Resilient, Biodiverse, and Healthy Urban Habitats. Before we begin, let us reflect on a simple but powerful reality. As we have discussed, for the first time in human history, more than half of the world's population is going to live in cities. By 2050, it is projected that almost 70% of humanity is expected to reside in an urban area. Cities occupy less than 3% of the Earth's land surface, but they consume almost 75% of our resources. At the same time, cities is increasingly becoming the front line of climate change. We saw how the urban flooding after intense rainfall, prolonged heat waves turning neighborhoods into islands, shrinking wetlands, deteriorating air quality, and the gradual disappearance of biodiversity of our everyday landscapes, from our everyday landscapes. Yet cities are not merely centers of consumption and crisis. They can also become centers for solutions. And this is exactly what we are hoping to end with today's discussion. I would like to invite the chair, Mr. Jagdish Krishnaswamy, Dean, School of Environment and Sustainability, Indian Institute of Human Settlements, Bangalore, to kindly chair this session. Mr. Jagdish work in climate science and impact of extreme rain and warming on ecosystems across India, as well as his policy-relevant work in conservation planning, led to his nomination for the scoping and design at the IPCC Special. He is one of the few scientists across the world who has been involved with both the IPCC as well as Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES. I would like to invite sir on the stage. To set the stage for this discussion, we have with us speaker whose work has consistently bridged the worlds of science, policy, and sustainable development. It is my pleasure to introduce Dr. Chandrasekhar M. Biradar, Earth System Scientist and Lead, Global Green Growth Community of Practice, Bengaluru. Mr. Chandrasekhar M. Biradar is a globally acclaimed Earth System Scientist, landscape ecologist, and green growth architect with more than 30 years of work experience in multiple countries. I would like to invite sir on the stage, and I would like to ask Vikas sir to please welcome him, and Mr. Jagdish sir with the planter. With this, I hand over the stage to you. Thank you, sir. So now we will be getting into a session where we can actually look at this topic in a bit more detail. So we are looking forward to the presentation by Dr. Chandrasekhar Biradar. Good morning. Yeah, okay. So thank you, namaste. Can you turn up this one light? Oh, perfect. So first of all, thanks to Vikas and SNHC Society and Bhopal community and all the green hands and environmental crusaders here and all the officers and students, delegates and future citizens. I think this is one of the important aspect. The mission life is why is so important, why should be where we are heading on that. So in this aspect, we chosen the topic of kind of mainstreaming the mission life. We have been talking about the mission life almost like
10 years now. It's launched in the COP26 in Glasgow, where I met the Prime Minister. So this is what we wanted to, what are the indicators to mission life. So Bhopal, it's not new to me. Have been coming to the Bhopal several times since the 2008. We were working the programs. Then we recently launched the one program. It's called AMLA, the India's legume platform. All the ministers and chief minister, Indian ministers were there, and we are kind of a self-sufficient the pulses. And when you're flying through the Bhopal, see a lot of the lakes, and I see that these lakes are much better than the lakes in Bangalore. So, so yesterday, in order to keep those lakes, we need all of your support. And yesterday we were talking about the blossom city of the India, and last year we had started a program called Regreening the Urban Landscape and Living Surface Infrastructure. Then we're moving from that to something more prominent. And you know, this cherry blossom festival in Sakura in Japan, that's a $1.3 trillion economy. And here we are destroying our infrastructure. So looking at that as a framework, and last few months ago, we organized one of the largest urban forestry program in Mumbai. And as because you know that one, everything starts from small, and even he was not expecting that a big road will be here. And same thing happened earlier, but this year, the Arbor Day Foundations, and the first city declared like a green city or urban Arbor Day city because of this, all the support, and government come forward, how about they can transfer the city landscape. I work nearly 50 plus countries, and working especially in the urban landscape as well as the rural landscape and agricultural landscape. Very clear that we are deteriorating our natural resources, landscape, land degradation, every aspect, doesn't matter where, it's America, Europe, or India, everywhere. So it's very, not only that land degradation, not the impact, but to look into that, what you call a surrogative impact, or what's called impact on the humans. Until we hit that heat, we won't try to improve ourselves. And this way, looking into the statistics, when I come back to India around 2022, looking into all the ICMR report that every second Indian adult is lethargic, not fit for doing any physical work, and 1/3 is diabetic, and 1/4 is cardiovascular, another number of things. And look at all things happens, it's a major causes is the pollutions in every level, whereas the food, water, and all the Pancha Mahabhutas. And urban heat island, you know everyone. So it's what's happening now, burning everywhere. Everyone talk about when summer comes, oh, urban heat island is flood, everything. Then the winter comes, they forget the heat island effect. And the amount of energy consumption is massive. Every 4% green count reduces 1 degree temperature, but we are not looking at that as the solutions. And this is where my home in Bangalore, and even the small transition can be changed in the big way. So as Dr. Jagdish has also mentioned that how there is a bee homes and urban beekeeping and biodiversity protections. We last bird count, we did about the 57 birds in our surrounding homes. So if provide little bit landscape, they come. And in Egypt, like a very dry landscape in the rooftop, I grow about nearly 150 types of the plants on the rooftop, and you won't believe that nearly 6 to 7 species comes to every day in the rooftop. There was not a single bird was there. But they just a little bit habitat to protect, and it has a massive benefits. That property, when I rented, it was a 6 million. When I created the rooftop garden and birds are coming, he sold for the 10 million. Just a landscape that make a big difference. But we are not looking. This is my friend home. Every day peacocks comes and mynas, then all these songbirds build their nest. So this is beautiful, right? They make their home. But people are not happy with that. It's my home. They shouldn't build the nest here. Immediately they call someone to remove them, and a lot of the rock bees, and build a nest because of we cut all the trees in the cities. And in the rainy seasons or off season, they come and build the nest. First we'll kill them, but not looking that they are the one behind our food and sustainability. So we bought the kind of awareness. I put the 6 bee colonies in my balcony, despite our resistance by the city, what's called a management committee. Then I show that, and one single bite of the bee, it's good for your health.
resistance, build your resistance. Yes, actually, that's true. And then they said, oh, really true? Yeah, you are joint pain, come here, I'll bid. I took the 1B and put, they said 500 rupees per one bite. Yes. And when they do free, why you are removing them? Someone came that, no sir, because of in the balcony they bite me twice. What you are doing there? No, I went to smoke. So obviously, right? So this is the very common things in that. And my home to next to home, that sees they grown up in this very like recent incident. The typically a gecko came in wall. He left the house and stayed in the restaurant for the hotel for 3 days because of gecko came in. Because of the childhood, you made them that all things are bad. Honeybee is bad, lizard bad, snake bad. So we have built the huge companies required to bring the awareness. They all are good. So we talk about the tourism, and this is what happens, unconscious tourism. The biggest threat to environment is the lack of civic sense. This morning, I was telling someone is with me this morning. That lady in the airport, that small child, he's wake up in the morning maybe, so he chocolate and throw, and I thought that, oh beta, usko nikal ko dustbin mein do. Their parents looking at me. That's what you can see, all the statistics showing that. So this is what we read. In order to be what is called a per capita green space, we are much less than any country in the world probably. And look into our cities. Sorry, I not have a Bhopal data, I didn't put that, but this is the situations we have. But simple things you can turn like that, what you did in earlier. So this is what we often think that is only urban issues, what is the rural issues. Wherever people they're living, it is the issues there. Whether garbage, whether it is a drainage, whether it is a throwing the waste, all this is there. And then this is the one in the Gadag and also in Madhya, few places to build it. The graveyard, people not want to go to graveyard, right? We turn the graveyard into the garden, beautiful garden. Then we call it as a Shanti Vanam. वहाँ जाने के तो शांति मिलेगा. So someone going there in the evening walk, made a beautiful benches, nice plants. Then they're realizing that, yeah, whatever money we are making, at the end of the day, I'm coming here. That brings the real awareness what they're supposed to do it. So this moment is started with the city garden, graveyard. Wherever you can see the soil, you think about planting a tree there. So this is the concept. You also bring the US, we used to do the spring fling, and we used to grow a lot of the plants at home, and you bring them together, kind of a picnic we go, and bring their plant, you can swap. Hey, मेरे पास ये tomato है, मेरे पास ये variety है, change करो. Then you bring their food exchange. That really created momentum for the children. So that's really bring the big, I think it's called that. And another things is when I came to India, then a lot of my friends there in civil services and big jobs, everything, and often like my friends, oh, let's go to the party. We came from that one, we're raising the party, we're going to camping. But the problem with the people go to the camping is they drunk, they eat, then they put the loud music, and then they hang over there, they never see the sunrise, never see the bird chirping. Right? That is the case of the camping. Then I said, something wrong with all the youth here. Then I started the ecosystem restoration camping. When I started in the Bhutnal tank, that's what the tank it used to be, completely barren, nothing was there. That's big story. We planted 5 crore trees, like a Panchakoti Ruksha Abhiyan. And the children's and all the youth, I said that I demonstrated one camping there. Then you can, everyone buy one camp tent, you come here, we talk about the nature, environment, how to clean, how to enjoy the real thing. And I saw that, so you can see in the night meditations, and wake up in the early morning, then do someone told me, so you are hundreds of people coming there, put the plastic toilet. I said, no, we have no plastic toilets in the before. We planted the trees, let the people take water, go to every tree in the jungle, they can do. That's very fun thing happened there. But people used to sitting on the western commode, no one sitting on the squat. And you come back, they're all telling the stories. So first time we realized that when you cannot able to sit. Because someone holding the tree, then tree removed, then fell down, someone holding the grass to sit. So that is the situation of the youth. We're not able to properly walk, physical strength is not there, and all linked to we're not exposed to the nature. The COVID is the best case. Someone is working with the nature, close to nature,
along with the trees, hugging the trees. They never any issue of any flus or vaccines or anything, right? So this is the what kind of the situations we have to connect into the life mission. So I'm so excited speaking about this event in the COP 26, 27, 28, then I stopped going to the COP. So not going to happen. So this is where, when I mission life, I was so excited that lifestyle for the environment, the forest and environment, and how best can really that can make a living for us, right? So we need to see all the indicators where you go to lunch, they put a very big nice poster, all the indicators of the mission life, but we need to do in something much bigger way. It is our everyone responsibility to be with nature. We are moving away from the nature, then we are spending more time in the hospitals. People, they want to go to the walking or park or putting the garden, they say they won't time, but every week they spend hours in the queue in the hospitals, right? Just switching that little bit sensitive in the nature, walking the bare feet, and of course in the city becomes so dirty you cannot do it, but still we can make it. And keeping a small garden, you would actinomycetes, geospin, feel good hormones that make you feel good. So that's what the connecting the nature is there. We have so many ways to do it, right? So the living surface infrastructure, all things you can do it. And this is where even syncing with what we called a daily rhythm. How many people go to the bed at 9? Raise the hand. 9, 10, before 10? Okay, still there some. Who will wake up at before 4, 5? Oh, still. Because people though go early, they rise early. Simple concept. Just shifting to our rhythmic cycle, syncing with the sun, what I call, your 30% energy saving at home. Because of the people sleep very late night, because of the brain, our activity, our thinking, the sync with sun. As a rhythmically, Brahma Muhurta, I wake up at 3:30. So today coming to this conference, I wake up at 3:30 in the home, and that's my regular cycle for me, not a big deal. Though yesterday someone came to home and we have till 10 o'clock our Ender Blossoms Tea workshop and follow up. Then a friend came, we were talking till 1 o'clock, but I slept only 2 hours. But body need certainly some sleep. But sleep is the what called state of restfulness. While sitting here also, you have not thinking too much, now worried about, that's the kind of restfulness. So that's what you need to adopt to that one. This is just simple things, that one, and that change a lot of the things what we talk about it. So this is the green generations, we talk about that, what is the conventional thought about a ornamental object, all things you're doing that one, what we can do, that is the concept we need to adopt, a living landscape paradigm. Whatever you do that, whether from the inside home and the balcony, we design the living landscape, whatever space we have, doesn't matter. When like a slum areas, people think that, oh yeah, it's very difficult, तो बड़ा लोग है, बड़ा the roof है, balcony करते हैं, हम क्या करेंगे? मैंने कहा था तो tin seat है slum में, और पीछे तो garbage water आता रहता, you can put a couple of the creeper there, तुरई डाल दो, drumstick डाल दो, beans डाल दो, that will cover your tin seat, और ठंडा रखता है, अच्छा दिखता है, and सब्जी भी मिलता है. This is how our the old home, we have a bath water is to come out. We are not using any harsh chemicals, mostly the ash and some the shigekai, Rita, those things are regular, all things natural. That water comes out, we are putting the one banana on the drumstick and 3 to 4 creepers, like a ridge guard, turai, then there is sponge guard, then beans. So that fantastic, they're going so healthy because of they get all the ash and waste thing there, and that's where we need to create. Then in the couple of design we did that grey water management, like a city में गाँव में जाए, so पानी बाहर आता, then they go in the street. We made a similar small pit. I not put that picture. I'll show that when you've been interested, it's already in the Facebook or LinkedIn. So that really transferred that pit, the toilet pit became a garden site and producing the good site. So look into all the Pancha Mahabhutas of talking about. Why it's so important here? So we often think that Panchabhuta means like a theek hai, hamara food is poison and water is polluted and air is also polluted. Have you ever think about light is polluted? Entire city, the spectrum V3 where you get our vitamin D3,
all the people living in the cities, they have vitamin D3 deficiency. I'm sure that some of you may have. Maybe Bhopal, you are lucky. But you live in Delhi. I came from the US, in the Jordan and in the Middle East, and first my job came to India as a country director. I used to wake up in the morning, go to the ICR campus, beautiful sunset, sunrise, and I do the yoga, meditation, all things. But within 6 months, I see something is happening, the brain fog or something not good. When tested vitamin D3 deficiency, I said, how come it's possible? I'm getting the sunlight. Then doctor told us that we will get sunlight, but the spectrum that reach your skin, you're not getting it because of the pollution load. Because of most people have the vitamin D3 deficiency. So, अग्नित हमारा वो भी खत्म हो गया and आकाश कभी कोई घर के ऊपर सोता नहीं. No one see the sun and moon and sunrise. Other day I was talking about Agni, we just were called earlier. One of the ISRO scientists came to their farm. सुबह उठते ही बोले, sir, we saw the sun today. He's a space scientist taking about an exclamation that we saw the sun and moon. So that's the situation. That with the Pancha Mahabhutas, we are gone, so that to restore. The sinking of the sun, I talked about that. We have like recently we do every year that 9 o'clock we turn it off your lights, and 1 hour there's so much of the energy. And that simple concept, you can really rejuvenate your life. And it's not just about yourself, it's about environment, energy saving, and light. Lot of the night, the owls and nocturnals, they impacted by lights. They cannot do much of their hunting. And like that, so many, the light, they're putting the street lights in the light going up rather than going down, is light pollution. No one can see the stars and the moons. So this is where the situations, so this is where we need to do the kind of the mission lifestyle living systems. We need to look into all those climate resilient habitats, what we can do in the cities, in the urban, everywhere. Because of the city often think that no space. Even you can dig a small hole, you can plant a tree there, because of in the bottom of your concrete, your pavement, your city, there's a beautiful soil. They do so wonderfully. Only people afraid of that, that damages my wall and my compound wall. अये भैया वो तो 10 साल लगेगा डैमेज करने में, उतना डैमेज तो आपको 1 साल में हो जाएगा, वो ट्री नहीं रहे तो. So that have to they to understand that they're protecting the something immobile, something is non-tangible. They're worried about not to plant the trees. They kill the trees. They congest all the see the. So Jagdish sir, you should tell them what is happening in Bangalore. How much trees you lost? Congested trees. Put the concrete next to their neck, they die. Then put the chemicals, die. But they're not realizing how much is there. And go to the farmers. I have a lot of the cases coming. They cut the mango tree. Last week we had a big thing. They said, ट्री के नीचे कुछ ग्रो नहीं करता है. मैंने कहा यार ट्री गिवन द 6 क्विंटल्स ऑफ द फ्रूट्स, यू नॉट रियलाइजिंग दैट. वो समर में देखता है वो ट्री के नीचे ग्रो कुछ नहीं होता, बट दे नॉट टैलिंग इनटू द व्हाट दे गिवन. So those things of the water sensitivity is very big issues. We are harvesting so much of the water, but we are not harvesting that much. We are building all impervious layers, and nutrition, that's not happening that one. So this is the kind of the city landscape we are living. And this kind of a simulated one for the one of the apartment in Delhi, they want to do it as a simulator for them, but it's not. They still they not want to put a vegetable garden because of they thinking the monkey will come. Arey monkey ke liye you can put the barrier. Even you can put not a edible, put non-edible. But they are think about a peacock will come, snake will come, and frog will come, lizard will come. So this is our mindset. If all those insects goes, all those support system goes, will you leave? No. That awareness you have to bring. And this one in our apartment, and all the people living there, the fast people. Then roof they design. When the builder is very nice person. He built very beautiful pergolas, planting things, but none of them wanted to plant a tree. Why should you plant there? मैंने कहा शाम को जाओ बैठो. So धूप सुखाओ, all things that one. Then I design these things for them, so that they can do the yoga and something grow there. And even like a small space, like a roof के ऊपर, I think it's about 75-25 feet का space है. If you have the house, इतना तो रहता है सबके पास. Most of the space, or you can 1/10 of the space, put about the field. This is what we designed also in when I was in Jordan, in Egypt, and different parts of where not have a ground floor. I didn't get there. We did this one.
So those kind of things you can build it. You have put a nice reading chair, go there, enjoy, and that's just connections with the nature that make a huge difference. This is what we call all the lifestyle missions. It's not just about talking about. And did you see this one? Is every city, wherever I go, in the circles, in the squares, in the junctions, in the roundabout, they put the statue. And then so many statues, if the politician, some guard, something, okay, ठीक है. मैंने कहा यार statue तो लगा रहे, then अभी now there is a temperature very hot. I see many cities, they putting all the four तरफ से, they putting the shade net. वो traffic jam होता है, so they provide some shade net लगा रहे. Instead of those things, can you put one tree there? How many circles in the cities? Put one banyan tree, one peepal tree, one tamarind tree, evergreen trees, not maintenance. They cover beautifully entire circle area. उसके नीचे लगा दो आपका जो भी भगवान का फोटो है, किसी का फोटो है, नीचे रख दो. But removing everything, creating circle, it's a bad idea. Can you take Bhopal as a city initiative? Wherever the statue is there, put it in one corner. So one, put in the proper aeroplane. So that's the simple small step. I see Delhi, Bangalore actually recently, they cut the one tree to put a statue. Yeah, because I'll show that one, but it's a political issue. So, but these there are, I'll show the few examples there. And on the roadside, there is the cinema actor. So this is the another thing, like where we are living, entire the pavement is percolated. The water goes down, and you see, city like Bhopal and Bangalore is about nearly 700 to 1,000 millimeter rainfall. And we build our house in a village, and 5 people for the 1 year, 75,000 liter tank in the ground, and a rainy filter, and all the water for 1 year we can do it. Requires simple structure, lime coating, and a single 1-inch line of the copper. Put every month a little bit of pachkarpur. It's such a medicated water because of, you remember this. In the someone come to home, someone serving the water in the plastic cups. Oh no, cancer aata hai, nahi plastic mat de do. But all the pani, water coming to your tap, it is non-food grade plastic. From the river to the treatment plant to the supply chain to your home, how do you think about that? No. So we are thinking the last mile में देखते हैं हम पूरा पीछे के क्या होता पता नहीं चलता. So look into the rainwater. Except some, you keep the roof clean and put the regular lime or some coat, something like that. First water you can leave it. Except some dust particles, not much pollution in the rainwater. We can bring them into put one little ash, and that become most drinkable water. And I grew up in the village. Just 35 years ago, we drinking the stream water next to my village. We are swimming there, drinking that water. Forget that stream is gone. Your water from the Krishna, Kaveri, Tunga, Ganga, you cannot drink. Anyone going to the Krishna, like we do that Sankranti, earlier never carry water bottle. Everyone carry water bottle to go to the river now. Is that a good situation? No. This is the situation you have to revive. People think about is a problem with the rivers. No, rivers start from the streams. So this one I taken in the one of the restored river in Oklahoma, and that water become like this, and you can go, people sit there. Only condition that you cannot spoil, you cannot throw anything there. So you can put the camping next to it, you can do it. That my parents. So they're telling that this they used to do the like when the child. So within 100 years you gone that, so you have to restore. This consciousness is only possible when you bring that setting there. So I took this picture. This is you can see this is in C.V. Raman Road in Bangalore, probably. So Jagdish sir, you know that. And look at that. This halat of the tree ke kya halat bana liya unhone. Itna nail dala usme, and they congested so much this one, and almost that's completely damaged. I just simulated that into this way. So much of the wires congested, telephone wire, all things hanging there on the ground. Just little bit change they can do it.
And all the street vendors, they're putting next to the footpath, कोई जगह भी नहीं रहता जाने के लिए. So थोड़ा change किया तो we can build into the city of the Tokyo. The Tokyo, you go to the Tokyo, in the drainage water, a koi fish swimming. Then I thought that is a Tokyo problem. Chinese can do it, but last Beijing I saw that the Beijing where the Olympic city the built, the streams water flowing clean. The moment the way they changed the entire city in just 3 years since COVID, you won't believe it. They transformed the entire city, and 90% of all the cars are electric there. So this is where the urban one health is very, very common. We know that health of the people often think that oh, health is my health, so I should worry about it. No, health of the everything. One health is health of the everything around us. We are part of the system. If the plants are healthy, if the gecko is healthy, then I am the healthy. So that's the concept we used to bring it a local nutrition, where the school nutrition gardens, the community orchards. I'll show some of the Bangalore. The entire school they transfer into the food garden. Not a single tree is useless. All the food trees, children know where that food grows, which way they are fed. I'm giving example one. And soil often we ignored in the cities and still required. And the circular health is very important. And you won't believe that one. This is what my first garden I started about 8 by 8 square feet. 15 types of vegetables growing there, all that harvested from that little space. This is what the Nutri Thali. Now in Andhra Pradesh, with the Heartfulness Center, with government support, we've taken the very big project to transform all the schools into the food gardens, biodiversity gardens, rooftop gardens, so that they know where the food is coming from, how the food is grown, how they connected with the nature, so that they come out of the schools, they can able to do the farming much better than the graduates coming from the agriculture universities. That can be often people that you know to go to nature, so they say that I am leaving the city, nothing in the nature is surrounding it. If you not have time to go to nature, bring the nature to your home. And this is one in my home in the village. Instead of expanding the void, I put half of the area to instead of putting a horizontal, I put in a vertical. Then half of the area west side, I put the 50 types of the fruit trees, fruits, herbs, and all, whatever things you require day to day. The simple thing you can change the landscape. Every garme, every city is living city, and 20% of their land area left for. They put extra bedroom. एक घर में 3 लोग रहते हैं, 5 बाथरूम रहता है, right? It's very common. Attached bathroom है, guest के लिए अलग है, मतलब काम वाले के लिए अलग है. So they put so many bathroom. Do you need that? They put so many bedrooms. अरे एक bedroom कम करे, एक bathroom कम करे, garden area बन जाएगा. So that had to be create that. We did that once, the example like this. And of course, I always tell that to all the teachers and parents. Best investment parent can do for the children is taking them to the nature. Nature teaches many things. I was in Scandinavia, so there's one of the teacher teaching the children in the outdoor, like Gurukul mein hota hai, hamara paas hota tha pehle. Once some children sitting in the tree, some in the ground, some here in the playing in the mud. They said, Mary, are they listening to you? Yes, sir, I'm talking about environment, I talk about the cloud, they see the cloud, I talk about soil, they touch the soil, I talk about trees, they touch the tree and enjoy. I think that is what connectivity. We have to move a classroom, 4 classroom compartment to the living nature classrooms. And this is also very important. I didn't know about that one. This is my US backyard garden, about more than 150 species growing there. And city has very interesting called a certified wildlife habitat. So probably IHS, you can think about it. Okay? So what they basically, there's criteria. You are growing that one, you're supporting the bees, butterflies, birds, you have the habitat is there, then you can certify a national wildlife federations. They give this small name plaque and to put in your garden, and there's also support in other way as well. I think that way to bring in. So building blocks is very clear in the living cities. I not want to go all those details. And very clear that a soil and water is the first crops in the cities. Then the biodiversity and a food. And often think that not about food coming from the less distances. We often think about the food security of the only city people, not the rural people. If farmers grow the food, he won't eat the good food. He sell it to the because the money is there. I think you think in that aspect as well. So
in order to bring our mission of the mission life, sustainable landscape, living cities, it's very start from the home. Household, what you can do, how can you avoid the plastic, minimalistic, saving the energy cost. Modi ji said 7 appeals, energy one of the crisis. You don't know that how much energy spending, 1,000 crores per day because of subsidized our petrol. 120 lakh crore for the fertilizer, we have subsidized fertilizer. 3,000 के बैग हम 300 रुपए में बेचते देते. We're not looking at that one. It's everyone's responsibility. It's not only the government. So that start from home, and community is very power. If you do something, the community garden, community together, अनुभव मंडप, what you call it, you come together, talk about this one. आप क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक plant लगा रहा हूँ, आप ही लगा दीजिए. Exchange the ideas. That's the way of the power. Then institutions like this SNHC, the IHS, GG, so many like a WWF. My friend is here. So a lot of institutions, they come forward. We made a program to every institutions, they have a 10% of their area because of all the institutions and the extra areas. Can you turn into a food forest, not like a Miyawaki. We have the proper native food forest that you're not able to eat it, at least let the monkey, let the peacock, let the bird can eat them so that they won't ride you. Then it comes to the municipal. I think this is where the Vikas you can. So this is one of the critical. Often when you do the environmental program, and city people, municipal people often try to avoid it because they want to remove the trees. For the construction, kuch nahi karna hai, wo karna hai. But that awareness is required. Yesterday we had a very long debate on that. They realized that one. If the people won't come to city, what will you do with cities? Moving away. So I think that awareness is there. Municipal, cities, politicians, policymakers, bring the awareness, show them what really helps them. And I think that is, you cannot ignore them. You can convince them, calm them, talk them. So I think they're required. Then the policy. I'm sure like a lot of you did enough policy in India, but implementation is lacking. So I was just looking at the Bhopal lake, so such a beautiful lake it is. And a lot can be done here. It can be one of the ecological and biodiversity hub for the city, and one of the lake city of the India can be transformed into one of the beautiful landscape. And approaching all the native species, protecting them, as you said very clearly, Jagdish, in the keynote. And often we put a lot of payments on the lake beds to make sure that the water won't flooding or all things beautiful looks like, but that's not the case. But how best we can use the lot of the native species as instead of concrete, we have fantastic like a vetiver, like a lot of this what you call ground covers. They cover entire soil so beautifully. You don't need to invest anything. They do fantastic their job. So they can well protected, they can infiltrate all the garbage, all the pollutants, all the arsenics, they absorb everything. Clean water come to the lake look beautiful. So I think that is simple concept is there. Biofilters are so many, bioenzymes are there, but you are not using them. So that you can turn one of the best crystal clear lake if possible. And that's required a very systematic master plan. I'm just thought about what can be done in those cities, and lake can become one best of the example. And you won't believe that in New York, every water, tap water is a spring water. You won't believe. You cannot drink our water. In New York, the rural I cannot drink water from the tap, but New York City, in any city in the Europe and America, you can drink the tap water without hesitations. And New York, what they built, the very huge catchment. They maintain the catchment forest cover. The rules is that no one can go there spoil, but no one can go there, but cannot do anything there. They don't spoil. They only monitor the little bit of variations there in the water turbidity or sometimes occasional any virus, anything. They check it. Just the entire spring water come to the reservoir. That water come to the city. We pay here for that mineral water. They drink it free. I think that should be our, instead of putting the huge pipeline to her tap water, we build the beautiful lakes in the villages and the cities. And that's simple. Pathway is very clear. I know, sir, the time is, I don't know, in a few minutes, okay. So implement is a few more slides. And this is what I'm just putting some of the conceptual framework, because we design so much of things, different part of the cities.
So looking into that world level biodiversity registers and rewarding those people who have the more garden, more biodiversity, they have more plants in their homes, something like that, and they make it that ward is beautiful. Community in accents, community gardens, and school gardens, municipality gardens like that to do that, and lake and wetland protected zones. Being we talk about the city of the lakes, can the people around that lakes can become as crusaders? They become a frontliners to protect it. Until you cannot connect the community, nothing happen. This is our system is built like that before the British came in. We have the urban or the village lakes, village forests, village gomalas. Village community used to manage that. Right now, when I was in Nagaland and Manipur, I went to a remote area. The tribal not want any government officer come there. I saw that one so beautifully. They have their own community pond, community temple, community sports center. They all people together manage. Then every home has their home pond and home garden and this system. It's such a beautiful system because of they want to maintain themselves. Then the British came in, they said that we need to pay the tax. Then people ask, why should you pay tax? We'll maintain your lakes, we'll maintain your properties, community properties. But what happens? Now it's a government ka job hai, hum kya kare? Why I'm paying tax kar. So that should have, that mentality had to go. The Panchayat Raj need to be reversed into what used to be in the past. That's only you can save. So then institutional living campuses. There should be any institutions talking about the education, they should have a model to demonstrate. We talk about the way so many institutions are there. We talk about the Argils universities are there. They talk about farmers to go this model, that model, but they have their own model not existing with them. What they can teach. I think seeing is believing is very important. And this is the Green Avenue corridor. It should be learned from the Europe. Of course, after the huge storm in the Oklahoma where I was living, and after the dust storm, they realized that without trees they cannot survive. They build the concept of avenue plantations, native trees. They build it. But here you putting like I was passing there this morning, all that what you call a bottle gourd plum, royal palm. Yeah, royal palm there. Yeah, why are you putting into dry lands in the royal palm? उसमें कुछ फायदा नहीं होता, शेड नहीं होता. उसके अंदर हम नेटिव चीज है यार हमारे पास उसका देख लो कि दिस स्पीशीज फ्रैग्रेंस इतना लाइक हमारा सोप नट ट्रीज है, नेटिव है, ड्रॉट रेजिलेंट है. When fragrance flowers, it's full of fragrance. I think that you need to do. Okay, fine. So this is where the measuring the blueprint outcome very clear. I think I covered already those aspects. And future is the cities will not be secured by the concrete alone. Concrete you need, but a transferring lifestyle requires transferring the landscape, and every citizen should be eco-consciousness. I think she gave me right warning. I'm about to say thank you. Thanks. हाँ जी नहीं सर इज नॉट palm अच्छा नहीं लगता palm ना मैंने पूछा था why this one एक नर्सरी में पूछा था मैं सर यार उनको मैं पूरा प्लान करके दिया था आई मेड ब्यूटीफुली बिकॉज ऑफ palm tree cost 5,000 rupees so उसमें कमीशन ज़्यादा मिलता है. In Delhi, when I come back to Delhi, and I wanted to create a rooftop garden, my owner said that, "अरे यार दिल्ली में क्या grow करोगे? कुछ नहीं होता यहाँ पे. Don't waste your money." Sir, can you give the permission? I can do it because rented property, had the permission. Then owner said that I saw some pictures of Egypt and those things. Yeah, you can do it, but I not want to invest, but you have to invest yourself. I said, ठीक है, at least you can cover some 50% of the fence I want. But he said, no worry, you can do it. Then I created the beautiful garden in Delhi. Then they become so green and our heating cost reduces. Then parrots are coming. Then so that owner came that, यार इतना बढ़िया हो गया. So I need to come back to this house. आप दूसरा घर देख लीजिए. Now we're just kidding, but he is enjoying now. Yeah, it's possible. Now Delhi में 2-3 hospitals they approached me,
And when I was creating the hospital, जो बना रहे थे पहले उनको plan किया था, so you can leave 1/3 of the space so that you can create the garden. So अभी बना रहे हो, तो बना चुके हो ना already. So it's possible. It's not a dream. It can possible. Over is asking question. Please just mention your name and institution and then ask. Since you have done so much about the I'm Raman, retired forest officer. We just recently came across an algae tree in Bhopal. Since you are talking about the Bhopal and you focused your presentation on that, and it is about the Blue-green algae. yeah, green algae. So could you throw some light on that? How do we? Where are we going? Yeah, I think that as I said that instead of putting that concrete structures around, we're leaving that enzyme. A lot of very good enzymes that can blew the blue-green algae. Actually, it's toxic, so we cannot even swim into those areas. And it's because of algae is eutrophication, because a lot of the fertilizers coming also, then all things coming. So putting that the bio filters around the what we call a riparian zone. We have a lot of species. In the one of the geological missions, we bought that lake restoration around that. What can be done, what plan to be done. I think that can be easily done. If you won't take it, I can be happy to share all those details. So basically, you have to that water comes from the city and outside agriculture. That should be filtered it out before they enter the lake. I asked a different question. Yeah. Oh, यहाँ पे एक algae tree का installation हुआ है भोपाल में अभी पिछले. अच्छा okay, I got it, okay. Oh, algae tree no. and about the pollution and the No, lifestyle. sir, actually that was done now I got it, what you're saying, that recently algae, that glass, algae in the glass, right? Okay. It has some, looks like a very fancy, it is efficiency and investment in comparison ratio, it's not much. So that Europe they tried, in German they tried, and it's kind of a one time someone want to do it, make a big money, those that they can do it, but a single tree they can do 10 times better than that algae tree. Any questions? Yeah, please, all the younger folks in the audience. Yes. Just introduce yourself briefly and then ask. Hi, my name is Siddharth and I work with the People Foundation in Education Organization. Yeah. Are you able to hear me? Yeah. Yes. My name is Siddharth. I work with People Foundation, an education organization. And I had a question around civic sense. Right. So when you're mentioning that, we need the public to have some sense of responsibility, one of the ways that you see is if there is a negative incentive, then there is a way to kind of, penalize people for breaking civic sense. But then, do you have examples or have you seen ways through which that responsibility can be a bit more intrinsic? So like what kind of experiences are important for people in their everyday lives such that it doesn't need penalization, but it is something that can be self-governed? So if you guys know about Michel Foucault, who is like a philosopher, he talks about this idea of self-governance through the Foucault's lens. So I'm also wondering what kind of behavioral alternatives do we have so that like this group of people in this room here, right? What do we need in our everyday mindsets to be better at self-governing? I think it's a very, very important question. I think this is very common now. The most of the environmental crises happen because of the lack of the civic sense. Recently, Vande Bharat CEO was telling that you buy the ticket with your civic sense, right? And a prime minister telling that you need to clean your road, right? You have to the segregate. So that is because of that shows that we not have a sense of a civic sense. But the same person, they go to the Middle East, follow, right? We cannot, as being a democratic country, so liberalizations, we cannot do the strict regulations of what they do there. But simple concept like that, being a good to the environment or creating the small, like it's not comes to the old people like that. When the what called the old age educations you come, right? Aksharastha, the program what was there, the trying to teach the 60s people adult education, right? And they didn't work because of they said, "Arera, hum abhi seek ke kya kare?" That is we start from the schools level. हम शुरू किया तो होता है. And simple like I usually telling that like recently we had in Bangalore this dog bite was our biggest issue was there. This one simple example because the people the moment they see the dog they throw the stone. The dog's intention is that
banda आदमी मतलब is खराब है, then they remember, then try to somehow attack when he's not there. So this is the same thing. And Egypt was there. I was living in Egypt, so I used to go to the office to the Rome, the walkable distance, and used to take some dogs bites, and I used to throw that on them. They become very friendly. They would leave it to the office, then शाम को वापस छोड़ जाते थे. Then when they started treating them as nicely, they became good friends. Then we started Bangalore BBMP. They started that on feeding the dogs. Right? Whenever the feeding dogs, we can bring them, treat them, give them the food, so that they, when the stomach is full, they have calm. Not like human beings. Humans, when the stomach is empty, is only one problem to fill the stomach, and stomach is fill 100 problems, but not with animals. पेट भर गया तो चुप रहे. So this is the common sense one thing. Then secondly, like we started the movement of the rooftop gardening and balcony gardening. अरे एक garden में क्या होता? It's not about the what you can grow, but you grow one tomato, you know how much farmers effort they put there. When cutting tomato काटते हैं ना, then क्योंकि वो काम वाली लेके आती है tomato, कोई पैसा देता है, कोई value नहीं रहता. The moment they grow the one tomato, then the value of the tomato. Then they started reducing the waste. Simple concept reduces a lot of the waste. I think this is a kind of a common, simple civic sense we have to bring. I have a lot of the story to tell because time is short. I'll cut it short. I'll give one practical example that we were able to implement in our institution. So we have after every lunch, people have to wash their own utensils in our institution, and so there's a dashboard kept. And every day's water usage is metered. Even the energy usage in the building is metered. So every day people can see as a community how much we have water we have consumed, both in the toilets as well as for washing utensils, as well as the energy consumed, etc. So that we have seen, at least in terms of amount of water being used, it has had an impact. Because when evidence is staring at you in the face on a day-to-day basis on a dashboard, I think that will help. Yeah, most of the kitchens, they're introducing that. Thank you so much, sir. Would you like to have some concluding remarks for the session? No, so as Dr. Biradar has been showing examples of how at different scales, from individual houses all the way to the entire cityscape, we need to integrate green thinking and green living. And the small steps will make a big difference. So the first thing we can do is start with our own households and then move on to our neighborhoods. And then in whichever institution or space that we have control over or influence over, we need to inculcate this thinking and attitude. And at least then, hopefully, then it will scale up into larger scale impacts. So that's all I wanted to say, and thank you for listening to us. Thank you, sir. So this is what the bottle link. Simple core concept. The SDGs talk about 17 SDGs. 17 SDGs. We brought 17 SDGs काम नहीं करता. Then we brought them to the 4. Better production, better nutrition, better environment, better life. So 4 में खत्म हो जाए. क्योंकि all the 17 SDGs interconnected. We are trying to address them isolated. That didn't work, as you mentioned this one. So now we are grouping them. So please accept the memento for the of the conference. Thank you for the engaging discussions and insights. We'll move ahead with the second technical session. As we continue the exploration of sustainable and climate resilient urban future, we now turn the attention to the challenge that is increasingly shaping the future of Indian cities, the relationship between urbanization and biodiversity. Indian cities are expanding at an unprecedented rate. While urban centers drive economic growth and innovation, they also place immense pressure on natural ecosystems. Wetlands disappear beneath concrete, urban forests shrink, natural drainage systems are altered, and biodiversity is often viewed as an afterthought rather than an essential component of urban planning. Yet biodiversity is not a luxury for the cities. It is a necessity. It helps regulate temperatures, support water security, improves public health, strengthens resilience against climate impacts, and ultimately enhances the quality of urban life. Today's session, India's urban crisis and city biodiversity, invites us to rethink the way we imagine cities,
not as spaces separate from nature, but as ecosystems where human well-being and ecological well-being are deeply interconnected. To guide us through this discussion, we are privileged to have with us an experienced conservationist and biodiversity governance expert as the chair for this session. May I invite Shri R. Srinivas Murthy, retired IFS, former member secretary of Madhya Pradesh State Biodiversity Board, Bhopal, to kindly chair this session. During his 33 years career, he held various positions as Deputy CF DFO. As Deputy CF Wildlife, he had written annual wild animal population estimation manual for Madhya Pradesh and invented tiger tracing kit. Presently, he is in the process of a collaborative writing of a bigger whole Panna story in Hindi and English. His services are publicly acknowledged by NGOs and government within the following state and national level awards. It is now my pleasure to introduce our speaker, Dr. Gautam Talukdar, Scientist F at the Wildlife Institute of India, Dehradun. Dr. Gautam Talukdar is Scientist F and Professor at the Wildlife Institute of India, holding a PhD in Environmental Sciences from Indian Institute of Remote Sensing, IRS, and the University of Pune. With over 30 years of experience in extensive field and laboratory experience, his work focuses on geoinformatics, macroecological modeling, landscape dynamics, species distribution modeling, and urban biodiversity. Ladies and gentlemen, please join me in warm welcoming of the session, start of the session on Indian urban crisis and city biodiversity. I hand over the stage to you, sir. Yes. We would like to welcome the guest with the planter first. I hand over the stage to you, sir. Thank you very much. So the topic for the session is India's urban crisis and city biodiversity. Quite a vast subject, but how my speaker is going to do justice another 30 minutes will be very difficult task, but still it's a beginning. I would like to just give some introduction to the topic before handing over the platform to Mr. Gautamji. I see the urban crisis with respect to issues not only related to biodiversity, but also related to the quality of life. That has also need to be taken into account, because as on today, around say 40% of the human population lives in India in urban areas. Very soon people were telling it will touch 50%, and then by 2050 it will be 70%. I don't know how this particular slide is going to happen from rural areas to urban areas, because the civic facilities and civic health issues are going to be a big challenge for anybody who is administering the urban areas. So water is one big issue, air is another issue, waste disposal, that's another important issue. Then building and architectural issues will be another issue, which just covered by the previous speaker. And then responsibilities, he was telling, one audience was telling about the responsibilities. Responsibilities will be at the individual level as well as at the institutional level. So for everything which I am telling here about the water quality, quantity, wastage, pollution, source of water, and then who actually supplies to you, how you conserve the water, for every aspect that I am covering here, all these issues need to be kept in back of the mind, because it is going to decide the quality of life for you on day-to-day basis. Then green spaces and civic sense. So
these are some of the broad issues that we have to address. Of course, it's a beginning of such an urban, what should I say, habitat-related issues, and then involvement of communities into entire aspect that we are deliberating here. There will be certain gaps, but I am sure this is my idea of what need to be discussed and deliberated and arrived at some, what should I say, actionable recommendations. That's what I feel. Now from here, with my own thoughts, I think I have confused Mr. Gautam Talukdar, but I request him to stick to his own way of thinking, but we can amalgamate everything at the end of the day. Now platform is for you. Thank you very much, sir. And thank you, Vikas, I don't see him, for inviting me here. And yes, to all the audience, I am the same Gautam Talukdar who has been, repeatedly coming and talks that very nicely. And it simplifies my job a lot. And probably I'll go, a little bit into the nuances of stuff, both in terms of urban heat island as well as the city biodiversity, a little bit into the governance part if time permits. I am also very happy to be in the August gathering of senior people like Srivastav sir, like Rao sir, Krishnamurthy sir, as well as Dr. Fayaz being here, to be in this gathering in addition to all the students that are here. So, within this presentation, I already mentioned I'll talk first about the urban heat islands, green spaces primarily, and the governance part. You will see the tagline, that's crumbling governance, heating homes and warmer nights. Okay. I think this summarizes the entire presentation, but how it does, I'll go through that. You've seen this figure repeatedly, many times today from morning, but you must be realizing that I have highlighted only one, that is 11, because all the rest of the goals that are there, they are actually there, and like the previous speakers have already mentioned, if you see them individually, it is very difficult to make sense out of it. In fact, I end up feeling many of them are conflicting each other. If you achieve one goal, you will lose out on many other. Just imagine, tomorrow we don't have any poverty in India. Is any of the other goals likely to even go somewhere near it? So there needs to be a transition for anything that we do, and we need to give its own sweet time that is needed. There's another new thing that has come up of late, not just the SDG, but the Global Biodiversity Framework. Within that also there is a target 12, which specifically talks about the green spaces. At the cost of repetition, I will once again, delve maybe 30 seconds on this slide. What is the urban heat island and what are the blue-green spaces? Urban heat islands is wherever you see the city, a lot of concrete, the temperature tends to be much more than the surrounding areas, as Dr. Krishnamurthy has already mentioned that it compounds the effect of climate change. Okay, in addition to climate change, this is something new that is happening. You generate your own heat. And in some cities, the central part of the city is relatively cooler than the suburban. Okay, the old city where there is a lot of greenery is cooler, and some of the other cities, the central part of the city becomes more hotter because you don't have a lot of green spaces. They are relatively new. And the peri-urban spaces are relatively cooler. So that's how the graph, this graph that you see is basically the temperature graph. And the green spaces is basically where you can have dense vegetation, trees, parks, gardens, and of late, even vertical gardens and rooftop gardens have started coming into the definition of green spaces. But mind you, we need to again get back into the term which Dr. Krishna Swami mentioned earlier in terms of two words, nature-based solution and ecosystem-based adaptation. So nature-based solution are usually the dense vegetation part.
the ecosystem based adaptation. Whereas vertical gardens, rooftop gardens, you know, they are still permeable surfaces. They mostly figure into the nature based solution part. So this is the basic distinction. Please understand, as an engineering solution, when you put in something about nature, that's the nature based solution. Ecosystem based adaptation is more about permeable surfaces. The heat crisis, the midnight that wouldn't cool. What does it mean? We all know, you know, the context. There was a time, at least people who are as old as us, the young people may not be aware, but there was a time that you did not need fans in your house. And today you debate that you should have an air conditioner in your house. And specifically for cities like Dehradun, Mussoorie, they really did not have any fans. You know, the first time I went to Dehradun about 30 years back, you didn't see fans in Dehradun city. In Mussoorie, it was impossible to hear of it. Today, even in the Mussoorie, which is about 1800 meters height, you have air conditioners. Summers are hot. So the natural cooling system is being lost. So how do we have this urban heat bubble? I already mentioned they generate their own heat burden. Concrete, asphalt, steel, glass. I have also mentioned here solar panels. I am sure you all must have not thought about it. Okay, they are also, you know, it's a black body. It absorbs radiation and then gradually emits when the surface becomes cool. And plus compounding effects like vehicle exhausts, you know, industrial waste heat, air conditioners. So we keep on generating a lot of heat in the urban areas. So every air conditioner cools one room and heats up the street. So even in this room, we are heating up the street outside. We have to be mindful of that. So how does it happen? Heat builds up. The second part is indoor also heats up subsequently. Waste heat is dumped, ambient temperature rises. And the result is city's average temperature is not the average of its rooms. What I mean to say that is, if this air conditioner wouldn't have been there in this room, it would have been probably hotter than outside temperature. This is something that needs to sink into our heads. And heat waves are not just environmental events. You have got stress because of that on power grids, on water demand, on food inflation, outdoor labor, humidity multiplier, inequity of cooling. We don't talk about it at all. Tell me in this room, how many people of you do not have air conditioners in your house? You all face the brunt of it, isn't it? When does it cool at night? Does it cool? So the patterns of heating of Indian summers has changed. Okay, what does it mean? There was a time when the temperature fluctuated between say 27 degrees and 42 degrees. Okay. And today it fluctuates between minimum is 32 and maximum is around 42 degrees. Which means the daytime temperature is not increasing that much, but the nighttime temperature is gradually increasing. And what impact does that have? You know, there's some study, 50 households told about indoor heat. Temperatures where you do not have air conditioners, okay, in the households that you do not have air conditioners, they rarely drop below 31 degrees. The peak temperature is somewhere around 35 degrees within the rooms. And indoor range, early morning hours, even early morning, okay, when it is supposed to be the coolest, is in the range of around 33 to 34 degrees temperature. So that's the kind of situation that you are there. And
basically 75% of the urban population is basically, you know, having some kinds of ailments related to heat stress. This is what happens. Okay. If the temperature is more than 26 or rather 28 degrees, sleep quality is impaired. You know, you will not be able to sleep properly. You will not get a good night's sleep to be effectively functioning next day morning. Greater than 30 degrees, you will have a physiological stress. Greater than 31 degrees, you know, is that the 50 household is the Chennai sample actually that was, you know, the study that was done. And evening peak is around 34.7. So that is at the time around 9 o'clock or 10 o'clock in the evening. Okay. That is the peak temperature rise within the indoor. So hot nights are definitely more dangerous than hot days. Okay. Mechanism is, again, Dr. Krishnaswamy has already mentioned that we have the evaporative cooling during the daytime, and usually, you know, the trees are able to offset. If you have large trees, you are able to offset the effect of the heat. But at night, the story is something different. When nights don't cool, the offload never happens, and the next day starts from a higher baseline. A person is never able to fully rejuvenate for the next day's functioning. Most exposed people are elderly residents or infants, people with cardiovascular illness, household with tin, asbestos, concrete roof sheds, okay, usually low income people, and anyone without reliable cooling. If you don't have proper ventilation, even that is a big challenge. So currently the situation is we need a revised heat action plan for cities, we need passive building codes, we need empowered city governments. Of course, there is one part also, restore urban ecology, which we have been discussing since morning. Worker protection, equitable cooling access, a lot of things need to be done. It is inevitable and very difficult for the urban local bodies to go with all of these aspects together. I am surprised that today we don't have any representatives from urban local body, but they have a huge challenge ahead, and we'll also discuss some of the governance issues. Next, let me come to the blue-green spaces. So it's the part, maybe a restoration of urban ecology or just blue-green spaces. We'll not bother with the semantics one. But can urban blue-green spaces ameliorate the temperature effect? Everybody here says yes. Is there anybody who says no? But do you even have the remotest idea how much? This is a thermal image, okay. This is from Wildlife Institute of India. That is the built up area, and there you have got some vegetation, okay. The lowest temperature is 31.4 degrees, okay. At the peak, it's around 1 o'clock time when we flew the drone image. So the lowest temperature is around 31 degrees, which is basically these areas where you have the trees. This is the point, okay. And we took a point here. This is 72.7 degrees temperature. So yes, Celsius. Please understand, this is not air temperature. This is land surface temperature. When you can't walk bare feet on the ground, what does it mean? Okay, that is the temperature. And Dehradun is relatively cooler to Bhopal. So imagine, let us go to the more, you know, greener areas within our campus, Wildlife Institute of India. So this is the water body. I have taken a temperature here, and this is the tree canopy. The lowest is 20.7 degree, same time, okay, hardly a minute or two difference. And this is the bare soil, which is about 48 degree.
So please understand that even bare soil can go very high, but it is not as high as concrete. So we need to be mindful. The surface temperature is a huge impact. It is absorbing the solar radiations throughout the day, and it will emit only during the night. Okay, when the surrounding temperature cools down, the air temperature cools down. That is known as emission. Yeah. 72.7 degree. So please understand, it is land surface temperature, not air temperature. Okay, mind the difference. Yeah. No. So this is the point. You can see this point? Surface temperature, and this is the point. This is the tree temperature. Okay. So now again, Dr. Chandrasekhar has probably, given some statistics that, who recommends a minimum of 9 meters square of urban green space per capita with an ideal target of 50 meters square. Okay, that is unimaginable. Please understand that Bhopal does not have these 9 meters square, okay, per capita. It is highly criticized because it is not possible in the developing nations. Okay, the kind of cities that we have, but just criticizing doesn't help. Okay, so 9 square meter of area per capita is almost unachievable. Even in a green city like Bhopal, we have got, when I come to the City Biodiversity Index, I'll talk a little more. The World Health Organization also recommends that every person should live within 300 meters walking distance of some kind of a park or a open blue-green space. Okay, which can be just about 500 square meters, that's fine, but there should be some space within a walking distance of 300 meters. So now let me come to the City Biodiversity Index. If you have the blue-green spaces, you compute this matrix. Bhopal has got one, Indore has got one, the City Biodiversity Index. I am very happy to say, during Srivastav sir's time, we could manage to do the City Biodiversity Index of Bhopal, and maybe I'll just give an overview of what was done. It's also known as the Singapore Biodiversity Index. It's a self-assessment tool, and it is only index specifically monitoring the biodiversity in cities. Now, it's a voluntary tool, it is not mandatory, and ideally it should be carried out by the urban local bodies. However, here in MP, the state is much more active, and the State Biodiversity Board took the initiative to get this study done. Quite an old concept, started from 2008, and even in 2025 we have 19 plus cities in India which tries to follow a metric and is trying to do something about the biodiversity and the blue-green spaces of the cities in the country. So there are two parts. One is profile of the city, and part two are a lot of indicators that we actually measure upon. And these indicators, there are 28 indicators in total, amounting to about 112 points. Indicators 1 to 9 talk mainly about the native biodiversity of the city. Indicators 10 to 14 talk about the ecosystem services provided by the biodiversity or the blue-green spaces in the city. And the biggest set, that is the indicators 15 to 28, talks about governance management of biodiversity. So a lot of work to be done by the urban local bodies or the state authorities. So anyway, I will not go a lot into each of these indicators in detail, but the native biodiversity has got about 36 points, ecosystem services provided by biodiversity has got about 20 points. This also talks about climate regulation, benefits of trees and greenery. Okay. And then we have the governance and management of biodiversity. So usually
what happens is you are able to score only up to the indicator number 23. Beyond indicator number 23, these all things 24, 25, 26, 27, 28, these are activities to be done by the urban local bodies very, very specifically. And if they are not involved, you can't score them. So even though Bhopal as a city performed very well on these indicators, it was not an initiative led by the urban local bodies. And therefore, Bhopal couldn't get the marks that it deserved. And this needs to change. And this can be changed only by the citizens of Bhopal. Nobody else can change it. But we'll talk about some of the other issues. As such, for Bhopal, we could not, score a lot of the questions that were there were not right for Bhopal. It was for the first time that we were doing. So the maximum scoring that was possible was only 72, and it got 44 out of 72, which is a very good parameter. There is a lot of scope for improvement in future, but this is the index. I'll just give you an example. If I compare it with Dehradun, Dehradun has scored just 31. So also understand these biodiversity index cannot be compared across cities. Each city has got its own design issues, own biogeography, own set of things that need to be considered, and this metric is supposed to measure against itself only. You are not supposed to measure it or compare it with other cities. So this is something about the city biodiversity index of Bhopal. Now I'll come to the last part of it, that is the governance gap. You all might be aware that the 74th amendment of the Constitution, which happened in 1992, it amended the Article 243W, where it gave for the urban local bodies constitutional identity. Elected city governments, and it gave the 12th schedule. The problem for this amendment was that it uses the word may and not shall, that states are invited to hand over the 18 functions they are required to. So the 12th schedule talks about 18 functions that the urban local body is supposed to carry out. And that word may, it's up to the states whether they give those powers to the urban local bodies or not. And what we have seen, in fact, not what we have seen, it is basically the CAG audit findings of 2024 says, the powers have not been completely devolved. What does that mean? So these are the 18 schedules in the governance which the urban local body needs to carry out. Urban planning, including town planning, it's the least devolved. So whether land use change or how city should be actually planned and what should be done, that powers are not fully there with the urban local body in most of the cities. The ones which are in blue, they are like building roads and bridges, public health and sanitization. So all these things have been more or less been given to the cities, but most of the powers are yet to be devolved, and some states like Uttarakhand and Orissa, they have hardly given any powers to the city, less than 4. On an average, about 4 functions have been devolved by various states. And some states are forward looking like Jharkhand and Maharashtra. They have devolved up to 10 functions of the 12th schedule. Mega cities with miniature governments, 3 out of 10 of the most populous world cities are in India.
18 functions, and only 4 of these functions are fully entrusted to the urban local bodies. The price that we pay for living in cities, 2-tier urban citizenship. One class of resident receives privately purchased water, power, security and green cover. We all stay in gated societies. Okay. Another lives with whatever the municipality can manage. Their everyday cities are no longer the same place and increasingly no longer the same temperature. Weakened public demand, because there are these 2 tiers. The most capable of pushing municipalities to perform, the literate, the connected, the politically articulate, opt out. The institutions that need their pressure to function lose their largest advocates. And therefore, we have hallowed institution. The civic body is left to serve people, the least ability to pay or protest or the least resources to do so. So there lies our urban crisis, governance gap, round-the-clock heat and trapped indoors. What happens now? Concluding slide. As people, we always tend to think, there is an opportunity in every crisis. Challenge is an opportunity. Every people, people who think are thinkers, they always see opportunities in challenge. My worry is that we have gone too far, seeing this opportunity, seeing this as an opportunity. The moment there is a lot of heat, the air conditioner companies think that they can sell more air conditioners. You can sell more fans. You can sell more fridges. I bought shares for the company of Whirlpool and Voltas because I was expecting a peak in demand, and it worked. I profited out of it. But it's not an opportunity. Please understand. Hot nights are not the weather. They are the verdict on the city. Jai Hind. Thank you, Gautam ji. You have brought out one very important aspect about the Urban Biodiversity Index, very clearly in a way supported what Mr. Chandrasekhar ji has advocated. If you have green spaces, you will have local control mechanism that can really moderate the temperature around. So what we require is a very amicable climate where the temperature of the air plays a bigger role. So you have brought out that point very clearly. Thank you very much. Now the session is open for questions and discussion. So Gautam, very good presentation. I am Devadatta from the Center for Legal Policy. I told that. I said that. Devadatta from the Center for Legal Policy. Yeah. So in your second last slide, you mentioned that the literate, connected, and politically articulate opt out. So I want to know the reason. Is it because they are the people who are causing it, or they are the privileged to have the resources to escape it? What is the reason of that? So there is no easy reason to that. Okay. I'm sure nobody would have wasted a single bit of water, or for that matter, the energy that we are consuming today. So we are away from our reality, and we should get back to our reality by being in nature more often, probably. Yeah, hi, I am Meeta Wadhwa. So I am an environmentalist and a social worker. So very closely worked with Nagar Nigam, and my question actually comes with one of your points which you just mentioned, that we have elected somebody who takes the responsibility. So we tried doing that. Like if you look into the architecture and the interiors, they have started providing modular kitchens, they have started providing air condition, which is a part of the building now. But we tried a lot that the green belt becomes a part of the campus.
So we tried with 2 to 3 builders. What happened is when they started construction, we demanded for green belt, we did plantation, we started taking care, and then when we handed over to them, and when we went there after 2 to 3 years, very recently, we realized that they have created a parking area, which is a very small thing which can be implemented. So the reflection is, you know, people should proactively think about it rather than it becoming mandatory. If they see profit in it, people will start doing it on their own, like Dr. Chandrasekhar is doing, like I am doing in my house. So anybody who is environmentally conscious, they start doing these things in their own houses and in their own localities. But because you are from the Nagar Nigam, I'll give you. I am not from Nagar Nigam. I was brand ambassador Nagar Nigam, and sorry to say I surrendered my position because nothing was happening. Okay. So the point that I am trying to make here is, look at Paris. Okay. It's one of the most traveled cities of the world. And the mayor there has taken a decision, she's been elected for that, is that she needs to reclaim the city roads. Half of the highways or the big wide roads that are there, they are all being converted into parks and avenue plantations. Because the citizens demand it. People who reside there, they want. I am pretty sure, like, you know, the kind of development that is happening in my city, Dehradun, the locals are not at all happy about it. They are very unhappy, but they don't have the power to do anything. So, unless the elected officials are able to utilize their powers and do what the citizens want, it is going to be a little dicey to get ball rolling and the government's part happening. So I again say the same thing. So the government has to be a part of the system, has to contribute or make some mandatory rule. Then we can actually do, like if there is only one person contributing towards environment, to bring from 1 to 10, it has to be the government who has to also participate. Exactly, ma'am. That's what he didn't get time to elaborate those things, but there is a governance gap. And governance, as you have specifically pointed out to one society, really, does the societies have really any power to control if somebody is converting the tree area into a parking area, or whether the society herself is doing it, or if even both the residents and societies are violate the law, does the civic bodies have the right to stop it? So this is the big gap that we have in India. So thank you for pointing out this issue. Last question or one more question, that's all. Namaste, sir. Myself Videsh, student of silviculture and agroforestry. Sir, like ma'am said, there is no specific governance or there is no centralized power behind that. So, like companies produce carbon, companies produce pollution, so they are suggested to plant trees to balance the carbon credits. So can we do the same for the apartments also, because apartments also have ACs, refrigerators, they also use car, so they also create the pollution. So can that be applied here? See, we are a democracy. Anything what the people want can happen. The point is, do the people want it to happen? So that is the bigger question. Everything is possible. That's the beauty of democracy, and the power lies with us. I don't know whether I've answered your question, but hope you get the sense. Last question, if there is any, please. Hello, sir. I am Nirupama Vaid. Basically, I am biotechnologist and ex-student from EPCO Institute, and I earlier worked on emerging viruses. And my question is this: you have mentioned in one slide there is a WHO recommended some criteria which one should follow, and regarding that, ma'am is also telling there is a governance gap, and is there
any centralized or state government policy regulation according to environmental law where WHO recommends their guidelines and person should be aware of all these things together in a one platform so that we can make a public centric or biodiversity? So, see, these guidelines exist, but they are not mandatory for, uptake. And this is where the challenge lies. When you are firefighting your everyday stuff, कि यहाँ पे नाली बंद हो गया, कहीं पे आग लग गई, है ना? If you end up firefighting stuff like that, you don't have time for figuring out what are the guidelines where it does not fall in your priority. So unless citizens make it a priority, these guidelines will never But it seep should be into. governed by the government only. It is our duty also, but how can government is involved to a particular topic or like this? We know that हमें ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. Then So, there is, this is where the spatial disaggregation is very important to understand. I gave you an example that there is a highway from Dehradun to Delhi, okay, where you can travel between 2.5 hours, okay, from Dehradun to Delhi now. Earlier it used to take about 8-10 hours, now just 2.5 hours. Now, the people who are in Dehradun, they were never interested in this highway. Okay, majority, I would not say all, but majority, people who don't travel to Delhi regularly. But the people who travel to Delhi regularly, they all are interested, and people in Delhi are super excited about it because they are now able to come to Dehradun in 2.5 hours and clog all the roads of Dehradun. So, there is this spatial thought process about different people at different places. Unless there is a uniformity or convergence in terms of thought processes, this doesn't happen. And that is where I think in the last session, somebody asked a question, how do you incentivize, how should people proactively do these kind of things? The idea is catch them young. Right from the childhood, they should be, taught. We have lost our community sense completely. We are all nuclear people these days. Because sir, we have already taken lesson from Corona. This is what happens. Thank you. Okay, thank you ma'am. वैसे अभी एग्जाम्पल जो आप कह रहे थे उसके बारे में अभी मी एंड देन फयाज हैड डिस्कशन कि 2.5 घंटे में पहुंच के करेगो क्या आगे चूँकि यू विल नॉट बी एबल टू रीच मसूरी इन अनदर से 2.5 hours. नेदर यू कैन रियली गो टू मतलब हिमालयास इन अनदर से 5 hours. सो जल्दी पहुंच के करेंगे क्या मतलब हर आदमी का अपना परसेप्शन अलग है. देयर इज नो सिनर्जी व्हाट इज नीडेड एट दैट टाइम. सेकंड थिंग, जस्ट टू कंक्लूड दिस सेशन, कि मी एंड देन अदर्स फॉरेस्ट ऑफिसर्स हु गॉट ट्रेन्ड इन Dehradun almost say 40 years back or 35 years back, we had fans there, but they were never used to. We never used to use them when the fans were there either in the classroom or in the hostel. But now the situation without AC, Dehradun cannot work. So this is how really we progressed. If you consider it as a progress and development, there is no issue. If you consider it's not a progress in a sustainable way, then one has to seriously think about it. With these remarks, I would like to conclude this session with a big thanks to Gautam ji and all the audience. Thank you. Thank you so much, sir. So please accept a memento as a token of thanks. Thank you for the presentation and the discussion, sir. Let's move ahead with the next session, the third session. We shift the focus from understanding urban ecological challenges to examining how governance decisions are made, as asked in the questions, as well as how sir has mentioned the urban local bodies play main role in the development of the cities. There is a saying in urban planning that cities are not built overnight, but their problems are often decades in the making. Traffic congestion, air pollution for many years. Delhi provides perhaps one of the most important urban lessons in contemporary India.
While it has pioneered several urban environmental initiatives and government innovations, it has also struggled with some of the country's worst severe air pollution and urban environmental challenges. For cities such as Bhopal, the question is not simply how to avoid Delhi's mistakes, but how to learn from its experiences and chart a different development pathway before challenges become crises. To guide this session, we are privileged to have as the chair for this session Shri K. Raman, retired IFS officer, former APCCF, Madhya Pradesh. And Mr. Raman has his experience of about 34 years. He was pioneer of implementing the flagship of one of the 8 flagship national program, Green India Mission, one of the 8 missions of National Action Plan on Climate Change and World Bank funded Ecosystem Service Improvement Project, ESIP, in the state of Madhya Pradesh as its project director for more than 4 years. Sir, we are honored to have... Sir, I was just about to welcome. Yes, sir, so please. Okay. Yes. I would like to introduce our speaker, Ms. Jinita Varghese, Program Manager at Enviro Catalyst, New Delhi. Ladies and gentlemen, please join me in the session. No, we'll just welcome you with the planters and then we can start. Yes, this session, after this session, we'll be moving ahead with the lunch. Please accept the planter as a, as a welcome. Thank you, sir. Sir, yes. आपका टॉपिक है नहीं टॉपिक तो सबका है नहीं मतलब हाँ नहीं ये लंच दिख रहा है बहुत जल्दी आने वाला है और फिर होगा कि जल्दी खत्म करो हमारे पास कितना टाइम है वो बता दीजिए We have 30 minutes. आधा घंटा तो 1:15 हो रहा है वो वाला भेज दीजिएगा सर हमारे पास भी वो somebody please give it तो आधा घंटा है तो wrap it up in 20 minutes दिल्ली और भोपाल का कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री का ठीक है yes. तो दिल्ली और भोपाल दोनों नेशनल नहीं है इंटरनेशनल ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं फेनोमेनन है और दिल्ली से हम लोगों ने एक चीज़ सीखा जिस दिन दिल्ली में बीटीएस कॉरिडोर डिमोलिश हो रहा था जिस दिन दिल्ली में भोपाल दिल्ली में बीटीएस कॉरिडोर डिमोलिश हो रहा था मैडम बीआरटीएस कॉरिडोर उस दिन यहाँ लॉन्चिंग हुआ था भोपाल में और पिछले साल वो डिमोलिश हुआ तो इस तरह के ट्रेजेक्ट्री पे हम लोग चल रहे हैं और हम लोग अभी मैं इतना सारा चल रहा था सब गवर्नेंस उसकी हम लोग क्या हो गया यार इतना कंफ्यूजन हो रहा क्यों ओके जल्दी शुरू करें तो जल्दी हमारा ख़त्म होगा तो विकास जी ठीक है ओके विकास जी तो हम लोग शुरू इससे कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे बट हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे इतनी 20 मिनट में अपना बता दीजिएगा आई जस्ट लाइक टू मैं पूछ रहा था अभी कृष्ण स्वामी सर से जगदीश कृष्ण स्वामी सर इसमें स्मार्ट सिटी कहाँ गई उसमें भी अर्बन फॉरेस्ट्री की बात थी वाटर कंजर्वेशन की बात थी हम लोग पूरे अर्बन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और दिल्ली का पहले ही बता दिया गलत हो गया दिल्ली गलत हो गया पहले ही बता दिया तो रिजल्ट इट इज आउट फॉर दिल्ली भोपाल स्टार्टेड विथ वन थिंग व्हाट डू वी रिमेंबर भोपाल फॉर one thing that everybody remembers for Bhopal. So we started with a tragedy and are we looking at another tragedy? जैसा कर रहे हैं तो फिर वैसे ही होगा. तो I'll stop here. Your time starts now and try to wrap it up in 20 Sure, minutes. sure, We sir. have 10 minutes for the Yes, sir. Sure. So, good morning. Sorry, good afternoon, everyone. Sorry for extending to the lunch time. Definitely, I will conclude very immediately.
Myself Janita, I am program manager at Enviro Catalyst. So I am here with a different story. So I want to take you on a journey from decades of Delhi's air quality degradation to the Bhopal's present status. So why it is coming? Okay, before stepping into the session, let me introduce us. We, Enviro Catalyst, we are a data backup organization, policy and action organization, working at the intersection of data, policy and environment. Our focus areas are clean air, sustainable energy, climate, and mobility and urban systems. So what we used to do is like that, we help the organizations, government and the policy makers for making the decision based on the data and evidences and not based on the assumptions. So first of all, thank you so much for having us at the first national conference of mainstreaming the life. Thank you so much. So let us start this session. So this is a roadmap for the session. First I will start with the Delhi's story, which is embedded in the pollution. Then I will explain a few things what went really wrong in Delhi in controlling the air pollution and what we did really right in Delhi and what is the takeaway to the Bhopal. That is what my conclusion. So let me start. So this is just a refresher thing, concept I want to share with you. Like I know everybody knows with this thing what is air pollution. I just want to share you so that you can think less, okay, I am remembering this thing. So air pollution, it's a mixture. Air pollution happens when these harmful substances are mixed in the air. So these harmful substances will be coming from the man-made sources and the, natural sources as well. And these are the major key air pollutants. I just want to freshen up from where it is coming and what is the effects. Effects means we can conclude in one single line. The major effects is our health concerns and the major environmental deterioration that can be diversified or split into the different subcategories. Okay. Now, let us start the session. First of all, let me explain what is the story of Delhi. Actually, Delhi had polluted not on over a night. It had become gradually, steadily over a decades. It is what I should say, it's just like the story of the frog sitting in the warming water. When this temperature of the water increases degree by degree, the frog doesn't recognize that thing. Just like that, in Delhi, when urbanization starts, we just enjoyed that things or goals we had gone through the urbanization. We ignored the all lateral things, what happened along with the urbanization. And just like the frog, we realize the danger when its time is too high to act and everything gone out of the hand. That is what happened in the Delhi. So let me say one thing, like look at the AQI data of Delhi. Delhi witnessed zero good quality air, good air quality days in the year of 2015, 16, 18 and even in the last 2 years. The zero good air quality days means that is even not a single day with air which is clean and healthy to breathe. That is the situation in Delhi. Then come about the particulate matter 2.5, PM 2.5. Let me explain PM 2.5. It's a so tiny particle that cannot be disturbed or blocked by our human system. It's directly going inside our lungs, even penetrate into the blood level system and actually affecting us very seriously. So the PM 2.5 level of the Delhi in the last year, annual average is 96.4 microgram per meter cube, whereas the global standard, that is WHO limit is 5 micrograms per meter cube. Almost 19-20 times of that globally approved. Then when we see the millions of people are breathing this toxic air, when we see like that, actually it is happening. Almost 20 millions of people are in Delhi breathing this toxic air. So let us go through the timeline. I'm just explain to explain what really happened in the Delhi, what the ignorance matters. That is for convincing only that thing. I'm going through the timeline. So in the timeline, when you are seeing in pre-1980s, like in Delhi, it was a gradual urbanization was starting. So everything was very normal, as like in Bhopal, I must say. Like we were start growing and we are start enjoying the urbanization. And from the period of 80s
to 90s, the rapid urbanization had happened. And the major milestone had happened in 1996 when this MC Mehta public interest litigation, PIL, has filed in the SC, Supreme Court. After that, government had taken this air pollution not as a nuisance, as a serious health issue on which we have to be act upon. So after this MC Mehta case, it's actually watershed happened in the Delhi. The government starts acting on the air pollution aspects, but by that time, everything had came into the high time, and still now we are keep on acting, but it is an uncontrollable situation, but we are trying our maximum level to manage it. So here one lesson we had taken away from this history is like that actually judiciary win that cannot replace a systematic governance. Actually Delhi, it is not like that Delhi didn't act. Delhi act, lot of things had happened. CNG inclusion, EV inclusion, public transport promulgation, everything had happened. What is the problem actually happened is that Delhi starts acting very lately when it is very high time. That is a false happened to us. So if we go for a discussion, small discussion, where Delhi went wrong, sector by sector, for deeply intruding the matter, first of all, let us take industrial sector. Industrial sector में, like after this MC Mehta PIL case, industrial sector में government ज़्यादा काम किया. Like the major milestone that had put forward by the government is the order for the relocation. In fact, Asia's largest relocation project, Bhavana scheme, had introduced in 2004. But actually, what happened is like that this relocation scheme was a failure. What is the reason behind that? The action had came after the industrialization happened without any barriers of the land use or zoning regulations. After the industries flourished, industries located in different areas irrespective of the zoning regulation. In fact, there was no zoning regulation. And after that, the government starts acting and impacting this regulation. So definitely the industry is denied for that because it's affecting their economy, they are affecting their market, so they denied. And still also CPCB is behind for locating the industries in the non-conforming area. Almost 1,500 plus industries are still existing in the non-conforming area, especially in the residential zones of Delhi. Can you imagine that thing? Because now the action had taken, but the problem is like action happened in the very wrong time and a very high time may happen here. So if we go for the transport sector also, we were very keen in developing the public transport system. Delhi have the longest metro system. Metro, almost 300 plus kilometer metro is already there in Delhi only. If we are talking about Delhi NCR, it's almost 400 plus kilometer is already developed. Still developing is gone, increasing. But the problem is like that, before the government started thinking about all those things, the people had used with the habit of having their own vehicles. So along with the EV penetration, along with the public transport development, what happened is like that the individual transport sector also starts on increasing. Four-wheeler, two-wheeler, depending upon the diesel and petrol, starts on growing along with the EV penetration. In fact, the data says that its growth is far beyond that the EV penetration. What failure happened is like that the action is not, first of all, action is that came at the late time. Second problem happened is like that action is not based on the data. Blindly we had taken lot of things like EV penetration, incentivization, public transport में EV, sabhi kiya, but these all actions are not based on the data. Nobody look at the data. Along with this thing, the individual transport on the diesel or the petrol is keep on increasing. So that is why now the Delhi is having almost 8.5 lakhs plus vehicle registration in the last year. And that is almost 40% growth had happened from the 19 to 20. And out of this, as I said earlier, two-wheeler and four-wheeler, both the individual transit is the maximum dominate factor. So if we considering the solid waste as well, of course, Delhi is collecting the 100% of the solid waste generated in the Delhi because it's a metropolitan city. Without the collection system, the government can't exist over there. But the problem is like that, the processing, only 64% of the wastes get processed after the collection. And rest of the waste is where it is going to the landfill. We have three famous landfill where this open, burning, everything is happening very simultaneously, very severe manner it is happening. So the failure point is one is segregation. The government is focusing on collecting whatever the waste generating
and developing the processing plants according to the waste generation. But they didn't observe the data whether the segregation is happening properly. What happens? Unsegregated waste is coming to the processing system. It's reducing the efficiency. Thus, this is making the dump site fillings more. And one thing that omitted is the identification of the bulk waste generator and omitting from the common pool of system. That is also not taken care. So when in the solid waste management system, what is actually happening to the city is like that. As I said, city will be focusing on the processing capacity as in adequate to the generation goes on increasing. Nobody is thinking about what is the reason for the generation is keep on increasing. Whether it is urbanization, whether it is people's participation, what is the actual reasons. So along with the processing plant development, we should also focusing on reducing the waste generation, and we should also focusing on ensuring the segregation at the source level itself. So for all these things, what we need is the data, especially the ward level data. If we equipped with the data, especially the ward level basis, we can find out these all root causes and take the exact decision what is really want to be happening in that sector. So in the construction sector, Delhi is having lot of massive construction, especially during the period of 1980 to 1996, because when that metro had happened, and there's almost 33,000 kilometers of road network is already developed, and almost lot of construction sites are already there. Abhi lot of actions we are taking, but it's not in a controllable situation. Above 500 square meters of construction sites are all sites are surveillance by the CPCB is there, but nothing is coming to a conclusion that it is making a larger difference in the air quality, because the situation is out of hand. That is why. So I am not okay. This is just a Delhi's PM 2.5 distribution. PM 2.5, I said that it's very tiny particle and it's very dangerous particle in the air. So when we are seeing the last line, that is the WHO annual average guideline, that is 5 micrograms per meter cube, and above that it is NAQ limit, that is our national limit, that is 40 micrograms per meter cube. See the Delhi's, it is almost 20 compared to the world level, 20 times world to the world level, and it is almost double the national level recommends. So this is the way now Delhi is going. We got some reduction in the COVID period, that is from the 2020 time, and expect that thing all the years are having almost the same things. This is number of good days based on the AQI Delhi was having. I'm not showing these all things to embarrassing the situations, but I want to say the truth. This is what is happened in the Delhi, even after these many actions are happened. So now let us come to the home. Now I just want to give you the picture of Bhopal, where it is, and what is the things what we need to do as a high time. Oh, sorry. This is the slide showing where Delhi wins across the sectors. Sorry. So along with the failure, I also want to show you where the Delhi really wins. I speedily gone through this thing. Actually, we win in implementation of the EV transport. Actually, we have almost 4,000 EV buses. Almost 6,000 clean fuel vehicle, including the CNG, and 4,000 plus e-buses are there for the public transport. And now we are planning for almost 95% of electrification of the public transport by the 2027. It's a very good move from the Delhi. Then end of life vehicle that we implemented. Actually, Delhi had banned any vehicles with the fuel quality of BS4 below is liable to be scrappage. We defined that as an end of life vehicle because that vehicle is not roadworthy. So whatever the vehicle below the BS4 standard is should be liable to the scrappage. And we banned all the goods vehicle entering to the Delhi with the fuel standard below BS4. And aggregator fleeter, that is in the Zomato and whatever the things, where we mandated for the CNG or the EV vehicles to be deployed. And metro transport, I already said almost 300 plus kilometer metro already developed, ABB development is happening. So it's a very good figure. And we are now also concentrating on the last mile connectivity. Actually, we are pooling with different app-based schemes and we are concentrating on implementation of the e-autos, so for ensuring the last mile connectivity. And regarding the EV policy, we had again revised our EV policy, and in the EV policy, we had taken a lot of major steps. That is, we had banned the ICE, I mean petrol and diesel vehicles in the two-wheeler.
from 2026 onwards. And also in three-wheeler also, registration of the diesel and petrol powered three-wheeler we had banned. And the government fleet, we are asked for the 100% of EV. And for the school bus also, we are asked for implementing 10% of electrical vehicle in the school. So this is the major things this is in the draft stage only, this EV policy, but this is the major milestones we are, going to be implemented. And also we are now focusing on the traffic congestion developments rather than this vehicle and whatever the thing it is. So traffic congestion is a major problem. So we are now working on the ITS session. So these are the things where the Delhi went right. This is in the transport sector only. Now, if we go to the industrial sector, I said that now on Abibi, we are chasing for the relocation of the industries, which is located in the non-conforming area. And we had mandated the industries for the clean fuel transition to the PNG fuels. And we asked the coal power plants to be shut down from the 11 kilometer. Sorry to say that thing, because the Delhi's pollution was in that high level because the government has to mandate that thing. And we have the DG set regulations. We have this our grab is actually involved with the industries. And we start identifying the pollution hotspots, and we have the real-time monitoring and environmental compensation we are collecting from the industries, which is not conforming the regulations and all. So coming to the C&D and road dust area, actually we had mandated all the C&D waste to be generated to be processed in the C&D plant only, and we have 4 dedicated C&D plants, and we had implemented on-site dust control norms at the C&D stations. And the real-time C&D monitoring, we had implemented more than 500 square meter construction sites. Every construction sites above the 500 square meters are implemented with the OCMs, and it's directly monitored by the CPCB. And mechanized road sweeping, we are implementing that thing. And the dust hotspot mapping based on the road dust we are doing. And path hole repair, end-to-end road pavement, not that main carriageway, the total end-to-end road pavement to reducing the road dust, and ban on the storage of the construction material. These are the major winning factors that we had done in the Delhi. Okay, so now let us bring on the home. So let us see now where is the Bhopal. This is Bhopal's PM 2.5 trend. As I said, this is very tiny, dangerous particle. So this red is Delhi's PM 2.5 level, and the blue is Bhopal PM 2.5 level, and the maroon is the national standard for the PM 2.5 level, and the green is the global standard for the PM 2.5. When comparing to the Delhi, of course, Bhopal is almost half of all the values. That's very comforting sentence right now, but the fact is not like that. See, the national standard is 40. Forget about the world standard. National standard is 40. Bhopal is now crossing the limits. Like in 19, it was 16. 2020, it just touches the 40. And 2022-21, it was 46. This is actually Delhi was having a decade ago. This is where we were ignored because it was not visible. Only the data was showing, visibility was not there. This is a stage we are ignored. So this is the starting of Delhi. So think about the situation. Bhopal is now crossing the national ambient standard. If we compare it to the global standard, Bhopal is almost 8 times or 6 times more than the global standard. So this is the right time to act upon the air quality in Bhopal. This is the seasonal pattern. Everybody are hearing about the seasonality, meteorology influence in the air quality in Delhi. Yes, of course it is there. In winter, we have a severe air pollution that is actually complemented by the meteorology and the Indo-Gangetic plain, geographical factors, everything. But compare the factors. This red is showing the Delhi's seasonal variation. The blue is showing our Bhopal seasonal variation. Whether these two patterns are similar. We are just behind the race. We are just going to the Delhi. So this seasonal factor, we are struggling over the Delhi. It's there in Bhopal also. Actually, in fact, if we go for the November value, November month's average value for the last 5 years of Bhopal, it is almost 96 or something like that. 96 microgram per meter cube. See, we should think that 40 is the limit, and Bhopal was having in November in the winter, the extreme winter. So this is just a Delhi. I'm not making a threatening statement. I just want to convince you.
So this is just a Delhi versus Bhopal scorecard. The good quality, I mean AQI good days, Delhi was having 0, but Bhopal was having, of course, 47 to 61 days was there. But don't compare with the Delhi, this 47, 61 itself is very poor number. Then our vehicle growth is 8.5 lakhs in 2005 data, and in Bhopal it is 1.38 lakhs. And metro transit we already developed, but Bhopal is under the stage. EV policy, Delhi is having, Bhopal is not having. And industrial compliance, so this is just a scorecard of Delhi and Bhopal. So now I want to convince you that what is the structural advantage that Bhopal have. Actually, Bhopal pollution is at the base level itself. This is the right time to act on the pollution, air pollution of Bhopal. And Bhopal is just starting the urbanization, not in the hand that we can't do anything. And industrialization is also in the pre-growth stage. And Bhopal is having a good opportunity in the two-wheeler. Without any EV policy or something like that, Bhopal is now already having 60% of new registration in the two-wheeler. So if you are implementing the EV policy in the two-wheeler, that is a great advantage for the Bhopal. And for the green cover also, we have the land. We already discussed a lot of techniques and everything. We have the immense land, so we can act upon that thing. And we have lot of data sources already available. For the air quality, we have CPCB. For the transport, we have Vahan data. So in the platform, there are lot of data are available. Grab the data, make the analysis, and find the root cause and act on. So again, I want to conclude with the point that this is a high time act, because Bhopal is in the winter itself. Bhopal is having 10 plus days with a 200 gram above PM 2.5 above 200 gram micron per meter cube. PM 2.5 above 200 gram matlab, like it is below 200, it is good days. It's 3 categories are coming, but it is okay, good days. And above 200 means it is bad days. So we already have 10 plus bad days in Bhopal in winter. And Delhi, this Bhopal's November average itself is 99 microgram, and vehicle growth is also go on fasting. So cost of inaction, we already discussed. Respiratory diseases, healthcare cost, economic productivity loss, irreversible lock in the risk. So this is, I don't want to explain too much. This is in my point of view. I had developed a plan how the Bhopal should act in each area. Immediately within 0 to 2 years, Bhopal should focus on the zoning regulations. Everybody starts speaking on the zoning regulations. We should, find out a correct urban zoning planning map, considering all the factors. And AQI monitoring, make the strengthen in the AQI monitoring, develop the green spaces, and the starts incentivizing the EV, at least for the two-wheeler, because two-wheeler is the massive transport system in Bhopal. Then by 3 to 7 years, you can think about this mass transport, public transport, and solid waste, like build a processing capacity ahead of the generation and concentrate on the generation, and the green space, buffer space development, again on the EV, progressing on the EV policy. And as a structural 7 to 15 years, we should consider as a compact city planning, a mixed land use, so that people do not need to travel more, because a mixed, rather than giving a residential area, commercial area, would give a mixed land use plan. And think about Bhopal Clean City Action Plan. And also integrate a lot of AI-driven mechanisms are already there. Use all data, scrap the data, find out the root cause, and make it happen. So that's all. So this is about my presentations. So whatever the data I presented here, thank you. So we have all the data in our website. We have the live dashboards as well. So if you want to go through any of the data or comparison with any states or anything like that, you can visit. Thank you. Thank you so much. Thanks a lot. Wonderful presentation. Ms. Varghese, please बैठिए. दिल्ली और भोपाल के सुन के ऐसा लगा कि भोपाल बहुत बढ़िया स्वर्ग है और बहुत बढ़िया है, लेकिन अच्छा है, अच्छा महसूस हुआ दिल्ली के तुलना में देखे. सो नाइस एनालिसिस. ठीक है. क्वेश्चंस, वी कैन हैव 5 minutes of questions. माइक दे दें उनको पीछे. हाँ, प्लीज. Myself Pradeep Nandi, an ecologist. It is a nice presentation, no doubt.
But I have a basic question actually. Your data or comparison is based on PM 2.5 only. And the comparison of Delhi's source of PM 2.5 is entirely different actually. Bhopal has the major source of PM 2.5 is the construction industries and mainly burning of waste, etc. So the reasons are different. I have another question actually. You have not touched upon, though you have mentioned about ozone, but you have not touched upon that one. You have only talked about air quality index actually. Ozone is a secondary pollutant. It is increasing compared to sulfur dioxide. And ozone and sulfur dioxide, when in the ambient air together, their effects could be synergistic, that is more than additive, and which can help, which can affect the health much more than PM 2.5. So what is your take on that? Thank you so much, sir, for the question. First question, why I choose PM 2.5? First answer is like that, the PM, yes, of course, I can go for the analysis of all the parameters, but one of the risk factors, what is happening now, ozone is also, as you said, ozone is also an important factor to be considered, but the PM 2.5 concentration in the air is too high. And as well as PM 2.5, PM 10 is also high. Why I am omitting the PM 10 is the health hazards compared to the PM 2.5 is having more. So we should actually, National Clean Air Program, you may be knowing that, which is aimed for the air quality assurance of 130 non-attainment cities in the India. So in which PM 10 is the criteria, because we have the monitoring station to measure PM 10 only. But the fact is like that, okay, our system is having a filtration mechanism for the PM 10 as well. But in PM 2.5 is having the major health hazards that is affecting our health and environment like anything. So that is why for the reference I had taken the PM 2.5, and this ground level ozone, yes, of course you said is correct, due to the vehicular emissions and the temperature actions, this is acting and ground level ozone is keep on increasing. I thought of like start with the PM 2.5, I mean directly going into too deeper side of the air pollution aspects. That is why I started that thing. सर ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है और उसमें इन्होंने एक आधार लेके शी हैज़ डन गुड एनालिसिस, वी हैव सम लर्निंग्स फ्रॉम दैट. हम अभी तो इसको बहुत कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स ले नहीं बिल्कुल सही है आपका पॉइंट है. हाँ राइट. Which is plugging that one. Right, sir. Okay, sir. और क्वेश्चन है किसी? Yes, यहाँ पे क्या? वहाँ उनके पास माइक है पीछे. Yeah. Please, madam, एक मिनट. Siddharth here. I had a question around जब हम public transportation की बात कर रहे हैं specifically, so the people who will need public transportation, let's say in Bhopal, and ये थोड़ा understanding level पे मैं जानना चाहता हूँ इस पे क्या हो रहा है, but majorly they will choose services like Rapido, Uber, Ola, जहाँ पे I'm not very sure कि मध्य प्रदेश में या भोपाल में अभी what are let's say the policy regulations to ensure that these services have a certain mandate of EVs. So क्योंकि वो काफ़ी critical होगा, क्योंकि majority लोग जो public transport use करना चाहते हैं अभी वो services use कर रहे होंगे एक level पे. So if you guys already have some understanding कि मध्य प्रदेश में इसकी policy कैसी दिखती है and दिल्ली में वो कैसी थी and how does it look currently, it will be good to know. Would you like to answer that? Delhi mein na, like now we have a strong metro transit system, and the public transport system, if I am saying the Delhi is lacking the last mile connectivity, like it was not having that much of transit route so that we can use it very explicitly. And at the same time, this Uber, Ola, whatever this transit system, they are going very cheap and very convenient also. So how Delhi had tackled the situation is like that. Now we are concentrating on the last mile connectivity. Like now, if you are seeing this e-auto rickshaws penetration rate is Delhi, it's too high. This is just for implementing or establishing the last mile connectivity. And the next thing what we had done, that we are going to implement in the new EV policy, like we mandated for all aggregator fleet to transit either to the CNG or to the EV.
because that mandate we had given in our EV policy. And regarding the Bhopal, I don't think that this is the stage to implement that thing, because it's related to the lot of factors. So this is the way Delhi tackling the system. It is not tackled, but it is tackling the system. And one more thing, that is the public cooperations against this thing. That's a major factor. So even though whatever the things we had implement, the major factor is the public cooperation. As I analyze the transport data, what we had seen is like that, of course, Delhi's EV transit is going on increasing, clean fuel is going on increasing, but that enhancement of the individual vehicle with the diesel and the petrol, that also go on increasing parallelly, in fact, far beyond that thing. So this is the factor which is contributed by the public cooperation as well. So these are the factors we need to be considered when we think about the Bhopal. आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया? नहीं, कुछ और पूछ रहे थे, फिर से पूछ लीजिए। आपका क्वेश्चन कुछ और था। यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर हम लोग के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, तो हमारे पास में मध्य प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन नहीं वर्क कर रहा है। हमारे पास भोपाल एक बस कॉरपोरेशन सिस्टम था, विच वी हैव डिसमेंटल्ड। BRTS कॉरिडोर जो था, विच वाज मोर ऑफ ए हिंड्रेंस, 10 साल चला, वो प्रॉब्लम ही रहा, तो दैट हैज़ ऑल्सो बिन डिसमेंटल्ड. We have a metro system which is, I think, 20 years ahead of its time. Maybe 20 years later we'll realize कि metro बहुत अच्छा, भोपाल metro बहुत अच्छा हो गया. तो वो a public transport sort of thing अभी मेरा perception में तो भोपाल में नहीं है. Yeah. जो what you are mentioning about the private operators, they are working, they are thriving. Yeah, but that's the problem, right? So because we know भोपाल के भी design में metro में penetration problem same आएगी as Delhi. हाँ. But at the same time, you know, Rapido, Uber and all of these have gained traction, but they're also, like, let's say someone signs up to become a Rapido driver, they have their own vehicle most of the times. So आप EV mandates realistically लगा भी नहीं सकते, क्योंकि then that implies कि हर इंसान जिसके पास एक regular vehicle है, he has to purchase a vehicle which is an EV mandate. So like, given ये ही आपके dominate करेंगे players mostly in Bhopal, so like, how should we even approach this scenario? देखिए, इसमें एक चीज होती है, you have to remember everything. You keep on working the policies. And you get frustrating कि हमारी policy implement नहीं हो रही है, wrong policies are getting implemented. That happens everywhere. ये हमारा historically इसी तरह से हमारा evolution हुआ है. But there is a thing called window of opportunity. Sometimes window of opportunity opens and you have your thing in place. जब चाहते थे, 10 साल पहले चाहते थे या 2 साल पहले चाहते थे, it gets implemented. Like अभी जो guidelines आए हैं हमारे पास में, प्राइम मिनिस्टर ने दिए, क्या क्या बताएं? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, पेट्रोल कम कर, क्यों हुआ वो? एक वहाँ पर गल्फ क्राइसिस हो गया, हॉर्मुज बंद हो गया, तो बोले कि अब फॉरेन में शादी मत करो, पहले फॉरेन में शादी के लिए कहते थे कि जाके करो, आप कहते कि यहीं करो, सब कुछ बचाओ, एनर्जी बचाओ, एवरीथिंग. नाउ 7 गाइडलाइंस आई हैं ना मोदी जी की, वो बहुत टाइमली है, बट दैट इज अ विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी. लाइक कोविड ऑल्सो गेव ए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें हम लोगों ने हमारी ग्रीनरी और सर जो 20 में इन्होंने बताया था कि उनका 2.5 लेवल भी काफ़ी डाउन हुआ था. कोविड में 2021 में 22 में हम लोगों ने देखा कि 2.5 लेवल काफ़ी कम हुआ था. फिर हम लोग का जब कोविड खत्म हो गया, देन इट अगेन शॉर्ट अप. तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कुछ आएगी ऐसी, एंड मोस्टली इट इज़ हमारा सोचना अपना जारी रहना चाहिए. जैसे प्रेजेंटेशंस आए, जगदीश कृष्ण स्वामी साहब के जो थ्योरी बताए, आपके बताए, अभी इतने बढ़िया बढ़िया प्रेजेंटेशन दिए, ये आना चाहिए. फ्रस्ट्रेशन रहेगा कि देयर इज गवर्नेंस फेल्योर, लेकिन कहीं पर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आएगी. तो जो मोदी जी ने अभी कहा पिछले महीने कि हमको इन सब में कट डाउन करना, ईवी का भी बताया उन्होंने कि यूज मोर ईवीज. तो सर्टनली ऑलरेडी सी सेइंग दैट 26 से इनका जो पॉलिसी है उसमें 100% उसका ईवी की बात कर रहे हैं. तो भोपाल में भी ऐसा एक क्राइसिस जब फील होगा, क्रंच फील होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा लागू हो जाएगा. दिल्ली में जैसे उन्होंने लागू किया, पहले सीएनजी का था ना, सुप्रीम कोर्ट वाज डेली मॉनिटरिंग हाउ मच सीएनजी हैज बीन अडॉप्टेड. नाउ द सीएनजी इज आल्सो पोल्यूटिंग. सो ऐसा फिर एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, कुछ कीप वेटिंग फॉर दैट. नहीं तो फिर भोपाल का स्ट्रेटजी तो हम लोग देख ही चुके हैं. वी स्टार्टेड फ्रॉम दैट. One more thing I want to add is like each policy should need the buffer time. It's not like that I am ordering this by next month onwards. It's like it won't be possible. But what I'm trying to say, just start the beginning.
So this EV policy for the Delhi is the second revision. We had already implemented way before, and this is the second revisions. So give the buffer time for the each of the regulations. For that, we should start now. That is what I am trying to convey. So one more question we can take. अब लिमिट है एक क्वेश्चन की, किसका हाथ पहले जाता है? ए मैडम का हाथ पहले से उठा हुआ, तो लास्ट क्वेश्चन. ओके. Okay. Good afternoon. So just you have covered my point. To that only I want to make a concern, also a question. Like CNG is also polluting nowadays. So somewhat if we go back for the waste management for EV, so we are using lithium batteries for that. And somewhat it will be dumped up in the tin boxes in the marine life, in the oceans. So, so how we will manage that? Means even today, like there has been a somewhat 5 years that EVs are coming mainly in the Delhi. So how they are being dumped up or going into landfills? It's very. दूसरे का भी हेल्प ले सकती हैं, यहाँ पर बहुत एक्सपर्ट पैनल बैठे हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इस टॉपिक के लिए, तो बाकी एक्सपर्ट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. No, actually this is very good thought you shared. Like everybody starts speaking on EV, nobody is not speaking on electronic waste that is generated after this thing. So definitely that area has also to be concentrated, to be expanded. We have very limited electronic waste authorized disposal centers in India. We are, most of them are in Bangalore, I think. So that's a very good point and very high point to be discussed and to be included in the policy as well. एक चीज़ और बता दूँ, EV is not the solution to everything. EV का जो एनालिसिस आया है, जो ओवरऑल एनालिसिस सेज दैट जो हम टोटल एमिशन बताते हैं, कार्बन फुटप्रिंट जो बताते हैं, तो EV को यूज़ करते जब पूरा ये करते हैं, चूँकि उसको रिचार्ज भी करना है, उसको क्रिएट भी करना है, उसका जो टोटल फुटप्रिंट है दैट इज़ मोर देन अ नॉर्मल व्हीकल. ये भी है, तो अल्टीमेटली वी एंड अप डूइंग whatever economic activity will do, will take, it will create more entropy. जो लोग entropy समझते हैं, तो it will, any activity will create more entropy. Only thing that is relevant here, in urban setup, in high, like Delhi में it is super metro, Bhopal is the state capital. इन सब जगहों पे, when we are faced with the traffic congestion, the emission levels are high and that is creating lungs problem to your lungs. All the citizens are getting impacted by that. So there EV comes to your help, that it is not emitting very severely at this in this urban setup. So it gets dissipated over other areas, not here. The pollution is not here. The carbon is getting adjusted somewhere else. Okay, so that is the scenario we are in. But ultimately we have to lose out more. We develop, like we say, from no fan to AC. This is what we have progressed to. So that is the cost of progress that we have to pay. Any अब हो गया हमारा time? Okay, so I'll like to close. एक hand इनका आया है, विकास जी अगर आप permit करें तो ले लें. एक मैडम पूछ रही हैं. देंगे सर. ये हमारे नहीं सर, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है सर, वो कह रही है ना कि 100% कर Yes, देंगे. yes. Then we can think about the renewable energy. Everything, if we all keep on, like everything has a solution. Thank you. But मतलब मुझे लग रहा था कि बजट में यदि चार गाड़ियाँ यूज हो रही हैं मेरे घर में. जबरदस्ती पूछ रही तो मैं इसमें जवाब देता हूँ. जो मैंने बताया, नेट एमिशन, नेट कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होना पॉजिटिव होता है इवन विद द EV. If you charge your EV with a solar panel, then the carbon footprint is negative. This has been established. So, yeah, I use EV. I have come with an EV. I charge it with solar panel. So I am negative carbon footprint. But not everybody can afford that, na? Thank you. Thank you, sir. The time has run out. Okay. And thanks a lot. So thanks everyone. So please accept the memento of a token of thanks. I try to save the time. Yes.
Thank you. Next, we have poster presentations. So I request all the candidates to stand beside their posters. The evaluators will be evaluating it, as well as we will be starting with the lunch as well. So once the poster presentations are done, the presentators can also go and eat their lunch. The lunch is of about 45 minutes, so let's meet after 45 minutes of lunch, starting now. Less green area than industrial area. So if you take the industrial area, in order to survive that one, they need to develop that area. 1:3. That should be there. So how we can bring the awareness? घर में जो भी कीड़ा आता है इसको मारते हैं, इसको कैसे अवॉइड करते हैं? So when insect enter the houses, people kill them. No one take them and leave it outside. So how we are addressing that? उन्हें अगर करना चाहिए जो बायोलॉजी मतलब हम इंसेक्ट का बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल कैंपेन यूज कर सकते हैं
As example, Biodiversity. That's all. Even honeybee, they know that honeybee is a good, but some of them are there. Try to do that. Afraid is there. 3 years is there. So we have to bring that awareness. Hello. It encompasses these BGI, nature-based solutions, and also these campus green. In terms of area, it is currently 350 acres. The entire campus is spread across 350 acres, which has integrated farming system in it, and biospheres, and also some water harvesting units have been set up. It provides a complete overall example of how these strategies can help in overall reducing urban climate change. And we can also experience, because we are in Jhansi where the temperature is very high, like 40 to 43 degrees Celsius. But while in our campus, because there is a large agricultural forestry cover, we are experiencing a significant increase in more than 2 degrees in the overall local temperature. So this temperature, but there are also other parameters like humidity, bees. So have you looked at some of the other parameters? So they also determine comfort. Yes, it is. The humidity is perfect because we have regulated all This green area, what do you mean by green area? Green area means the parks and all. Parks, what do you mean? Parks, trees, In the green area, I've taken the parks and all. For the presentation, I'm using only it's on that use time, source gas
सिस्टमेटिक होना चाहिए, उसको रीयूज करना है। लेकिन नॉइस इफेक्ट को थोड़ा हम लोग कॉमन करना है, प्लांटेशन मतलब प्लांट लगाकर जगह जगह पे जाके हम लोग का टीचर सेवियर क्लब है हम लोग का बीएनएस का, हम लोग जगह जगह जाके प्लांट लगाते हैं, ठीक है, और लोगों को अवेयरनेस फैलाते हैं, लगाते हैं और चौराहा यहाँ भोपाल में आप स्टूडेंट सेकेंड ईयर इस चलो पूछ मुझे ले लो उसके लिए सारे लोग कहते हैं झीरी, और झीरी में सर 135 चेक डैम बनने थे, जिनमें से 50 चेक डैम मिलने का वाटर लेवल अपडेट कर, और मेरा टारगेट 56 काम अच्छा वो मेथोडोलॉजी ना आप लोग करते हैं ना वो लिखिए, ये तो आउटकम, ये तो आप सजेशन बता रहे हैं, आउटकम्स या बेनिफिट्स से मतलब बेनिफिट सजेशन जो आप जो कैसे गए डोर टू डोर कंपेयर किया, कम्युनिटी मोबिलाइज किया, लोगों से बात किया, ये स्टेक
इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं। हाँ तो सर वही ना वो वो आप बैन करने के लिए बोलो ना सरकार को। वो तो यूके अमेरिका तो बैन कर दिया इंसेक्टिसाइड हम लोग मच्छर मारने के लिए हम लोग कॉकरोच मारने के लिए डाला है। अभी बदलने से यूज करते विच इज ऑल्सो नेगेटिव पर वो आप लिखो नहीं क्या बैन कौन सा सब्सटेंस बैन करना चाहिए। तो समझ गया आपने बढ़िया थोड़ा उसका एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं दिख रहा है आपका ये इसमें एक एस्थेटिक्स पे भी है डिज़ाइन आपका बहुत अच्छा है। ये सारा चीज़ थोड़ा और इसको खूबसूरत बनाना चाहिए फोटोग्राफ का क्वालिटी का है ना बट कंटेंट बहुत अच्छा है। क्या है आपका मोनिका मोनिका My topic is Jhansi-Nagar one as a recommendation सर बेसिकली देखा जाए तो अर्बनाइजेशन की वजह से हीट बढ़ती जा रही है टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस होती जा रही है ग्रीन कवर कुछ नहीं बच रहा है मतलब पूरा फॉरेस्ट तक टच करते जा रहे हैं तो इसके लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन बन सकता है सर जैसे नगर वन में जैसे अभी हमने झांसी-नगर वन की स्टडी करी है सर ये 25 हेक्टेयर्स का एक ही है सर बुंदेलखंड रीजन में एक ही है सर उसमें हमने सिटी जो है उसका टोटल इंडिया में ऐसा तो अच्छा होगा कि दे देंगे जितना R&D उनके लिए
and all energized for the next sessions. We'll start with the session 4 in the technical sessions. As we move ahead with the session, we turn our attention to the question that is becoming increasingly relevant in rapidly urbanizing societies. What is the role of protected areas in the cities? Urban protected areas serve many purposes beyond conserving biodiversity. They act as green lungs to cities, help regulate local temperatures, support groundwater recharge, improve air quality, provide habitats for wildlife, and offer citizens an opportunity to reconnect with nature in their daily lives. In the era of increasing heat waves, pollution, and ecological stress, protected areas within cities are no longer merely conservation assets. They are critical components of climate resilience and urban well-being. To chair this session, we are privileged to have with us Shri Jagdish Chandra, retired Indian Forest Service officer and former director of Van Vihar National Park, Bhopal. Jagdish Chandra is a retired Indian Forest Service officer from the 1990 batch, Madhya Pradesh cadre. Over a career spanning nearly 34 years, he served the state's forest department in vital administrative roles, including more than 28 years in wildlife conservation of PAs of MP. Serving as divisional forest officer and director Van Vihar, he wrote the first management plan of Van Vihar. Sir, we are honored to have you chair this session. It is now my pleasure to introduce our speaker, Dr. Sudesh Wagmare. Dr. Sudesh Wagmare is a prominent environmental expert and the former DCF and Deputy Director of the Van Vihar National Park. He is currently member of MP State Wildlife Board. He is widely recognized for his work in wildlife conservation, ecology, and forestry. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming Dr. Sudesh Wagmare. Welcome, sir. I now request Vikas, sir, to please welcome the guests with the planters. Thank you, sir. I hand over the stage for the presentation on significance of protected areas inside a city. Good afternoon to everybody after the lunch. और जैसा कि आपने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया है about the protected areas in and around the city, I would just like to add one change in the subject, resilience and the importance of the protected areas in and around the city. When there is no place in the city, probably you have to be in search of the areas where we can develop these kind of activities. Not only that, इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो वन विहार के अतिरिक्त there are many areas of forest lands like Ekant Park in Bhopal, like I'll say IIFM Bhopal, and then the Law Academy, which has a good forest, and the Swarn Jayanti Park. What I mean to say is not only the protected areas with regard to the wildlife and the forest, such areas should also be considered. So I would now request Sudesh Wagmare to kindly go ahead with your talk, please. थोड़ा खाना खाने के बाद का सेशन हल्का सा थोड़ा सुस्त हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा डाटाबाजी ना करके हम लोग इस सेशन को हल्का फुल्का बनाने का कोशिश करेंगे अगले 20 मिनट। पूरे सेशन में वक्ताओं ने गर्मी को लेकर काफ़ी बात की, बहुत गर्मी पड़ रही है। अब पहले के ज़माने में जो इंडस्ट्रियल एरा था उससे पहले कोई डॉक्यूमेंटेशन की बहुत अच्छी तरकीबें तो नहीं थी, थर्मामीटर नहीं था, मगर एक कवि हुए हैं सेनापति, उनने एक कवित्त लिखा ब्रज भाषा में
देखिए जो हम लोग बोलते हैं ये खड़ी भाषा कहलाती है, खड़ी बोली कहलाती है। जो बोल रहे हैं हिंदी, ये ब्रजभाषा से निकली है। वो डॉक्यूमेंटेशन गर्मी का बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन है। आप यदि उसको ध्यान से सुनेंगे तो मजा आएगा कि वृषभ को तरनी तेज सहसों किरण कर। वृष राशि, मेष राशि के तत्काल बाद सूर्य वृषभ राशि में आ जाता है। वृषभ को तरनी, तरनी मतलब सूरज, वृषभ को तरनी तेज सहसों किरण कर, ज्वालन के जाल विकराल बरसत है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जाले डाल दिए हों उसने ज्वालाओं के। तचती धरनी जग जरत झरनी, ऊपर से झर रही है गर्मी, ऐसा लग रहा है झरने की तरह झर रही है। और सीरी छाह को पकड़ कोनो पंछी पंथी बिरमित है, ऐसा लगता है कोई दिखाई नहीं देता है और पंछी और पंथी दोनों जाकर कहीं पर छिप गए हैं। तो सेनापति नेक दोपहरी के ढरत, नेक मतलब थोड़ी सी, सेनापति नेक दोपहरी के ढरत हो तो धमका विषम, धमका मतलब जो बहुत तेज गर्मी होती है, जो ना पात खरकत है, पत्ता तक नहीं हिलता है। वो मेरी जान पौनो सीरी ठीर ठोरी को पकड़ कोनो, ऐसा लगता है कि ठंडक कोई कोना पकड़ के बैठ गई है कहीं पे। मेरी जान पौनो सीरी ठोरे को पकड़ कोनो, घरी एक बेड कहीं घाव में बितबत है। तो भाई साहब गर्मी जैसी अभी पड़ रही है, सेनापति आज से 325 साल पहले हुए, गूगल करके देखिएगा, गर्मी तब भी जम के आज के जैसी ही पड़ रही थी। अंतर इतना आया है कि हमारी प्रतिरोध क्षमता, हमारा रेजिस्टेंस पावर खत्म हो गया है। गर्मी वैसे ही पड़ रही थी पहले जैसे अभी पड़ रही है, कोई अंतर नहीं है बिल्कुल भी। और ये इंडस्ट्रियल एज के पहले, तब तक औद्योगिक युग भी नहीं आया था, तब ये कवित्त सेनापति ने लिखा था। वो मेरे को कभी कभी लगता है कि ट्रंप साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि भाई कोई जलवायु परिवर्तन नहीं है, कोई क्लाइमेट चेंज नहीं है, थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाएगी तो हम देख लेंगे अमेरिका में कितनी पिघलती है। तो कभी कभी उनकी बातें सही लगती हैं। मेरे को लगता है कि हम लोगों ने अपना, हमको एज ए ह्यूमन, एज ए होमो सेपियंस अपने बारे में भी विचार करना चाहिए कि हम चीज़ों को कितनी तरह से ले रहे हैं, किस तरह से हमको लेना चाहिए। हम बहुत डेलिकेट हो गए हैं, हम बहुत नाजुक हो गए हैं। अब हमको जरा सी भी गर्मी, भाई मैं चूंकि जिस विभाग से मैंने 40 साल नौकरी करी, मेरा तो पूरा का पूरा अमला अभी भी तेंदू पत्ता तोड़वा रहा है। गरीब उठ रहा है सुबह 4 बजे, पत्ता तोड़ने जाता है, 10 बजे वापस लौट के आता है, फिर शाम को 4 बजे फिर पत्ते को गिनवाने चला जाता है। जो लगभग 4-5 हजार करोड़ का बिजनेस हो रहा है गरीब आदमी के बीच में, जो आदिवासियों के बीच में, वो तो चल ही रहा है। तो गर्मी, मेरा मानना है कि जिस बात पे हम विचार कर रहे हैं वो इस तरह से नहीं बढ़ी है। अब हम आते हैं कि हमें शहरों के में हमें पीएस किस तरह से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। पीएस से मतलब टेक्निकली हुआ हमारी सेंचुरी और नेशनल पार्क, वो क्यों बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूं आपको। कान्हा में घूम रहा था पिछले दिनों, कान्हा में था मैं, तो एक बंगाली महिला, जहाँ पे भीड़ रहती है टिकट में, वो कह लेंगी 3 दिन से मैं अपने रिलेटिव्स को लेके आ रही हूं, यहाँ पे 3 दिन में टाइगर नहीं दिखा। हम 50 रुपए में वन विहार में टाइगर देख लेते हैं। है? ये अनुभूत सत्य है। ये जो विषय है हमारा कि हम कैसे पीएस को बनाएं। देखिए एक अभी जो आप, यदि जो लोग अनुभव होगा जिनका थोड़ा सा, आप यदि किसी नेशनल पार्क में कान्हा चले जाइए, पैंच चले जाइए या कि बांधवगढ़ चले जाइए, आपकी जेब में यदि 3 दिन आपको रुकना है तो कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। इतना रुपया होना चाहिए, अफोर्ड नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि जो चीज़ें आपको कान्हा में दिख रही हैं, जो पैंच में दिख रही हैं, जो बांधवगढ़ में दिख रही हैं, जो पन्ना में दिख रही हैं, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में दिखेंगी, जो काबिनी में दिखेगी, वो सब चीज़ें आपको भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क में बनना चाहिए। तो ऐसे नेशनल पार्क हमारे पास होना चाहिए इस तरह के। अभी मेरा तो ऐसा मानना है, बल्कि ये ऐसे पार्क का नहीं ना, नेशनल पार्क वहाँ होना चाहिए, बल्कि गाँव में होना चाहिए। वीडियो चालू करेंगे प्लीज़, ऐसा वीडियो। ये हम लोग काम कर रहे हैं रायसेन जिले में, छोटा सा काम है, देखिए। वन देखे हैं?
ऐसे पवित्र वन जहां पेड़ों को काटना पाप माना जाता है। नर्मदा जलग्रहण के रायसेन जिले की धरती पर छिपे हैं ऐसे पवित्र वन यानी सेक्रेड ग्रोव्स, जहां हर पेड़ एक देवता है और हर छाया में बसती है आस्था। यही नहीं, इन वनों में बहती नदियां और जलस्रोत, पक्षियों की आवाजें, जानवरों की हलचल और छोटे छोटे कीटों की दुनिया भी उतनी ही पवित्र मानी जाती है। सदियों से बिना किसी कानून के इन वनों की रक्षा हो रही है। न कोई बाढ़, न कोई पहरेदार, फिर भी ये सुरक्षित है क्योंकि यहां डर नहीं, विश्वास पहरा देता है। इन वनों में सिर्फ हरियाली नहीं बल्कि कहानी है, परंपराएं हैं और एक ऐसा रिश्ता है जो इंसान, प्रकृति और जल को जोड़ता है। हम लेकर आ रहे हैं एक खास सीरीज, रायसेन के अलग अलग सेक्रेड ग्रोव्स की कहानियां, जहां हर जगह एक नया सच, एक पुरानी आस्था और एक अनकही कहानी आपका इंतजार कर रही है। स्टोरीज ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स प्रेजेंटेड बाय नर्मदा समग्र। ये एक छोटा हमारे भोपाल से लगा हुआ जिला है। अभी सुप्रीम कोर्ट का कुछ दिन पहले डिसीजन आया था कि जहाँ जहाँ सेक्रेड ग्रोव है, वो डिसीजन हालांकि राजस्थान के ओरन फॉरेस्ट को लेके था, इसी तरह के सेक्रेड ग्रोव्स, पवित्र वन या देववनों को लेके था, उनको रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर किया जाए। ये हम उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे जंगल जो है वो बिल्कुल ओएसिस हैं, वो एकदम नखलिस्तान है बीच में, उसके पूरी आबादियाँ जो हैं उसके बीच में। तो वो ना केवल प्रोटेक्टेड एरियाज के बाहर भी, अदर देन द प्रोटेक्टेड एरियाज, वहाँ पर भी बहुत सारे इस प्रकार के जंगल हैं। अब मैं आता हूँ इस बात पे कि प्रोटेक्टेड एरियाज में मैं हमारे जो पीएस हैं इंडिया में लगभग अभी एक आध दो बड़ा कम हुआ होगा, तो 107 नेशनल पार्क है जिनका स्क्वायर किलोमीटर थोड़ा सा भाई हेल्प करिए इसमें। ओके, नेक्स्ट बैक बैक, बस यही वहीं रहिए, पिछले बैक बैक करिए, यस, पिछला बैक, नेक्स्ट, नो, यस, ओके। देखिए मेन ऑब्जेक्ट था जगाना भाई, ये बात हुई थी पहले कि खाने के बाद लोग सुनेंगे नहीं। तो ये 107 नेशनल पार्क है, ये सेंचुरीज की संख्या आपको दिखाई दे रही है। इतना स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हिंदुस्तान में है जो कि एलिट क्लास के पास चला गया है। मैंने आपसे जैसा कहा 1 लाख है आपके पास, तो आप जाइए नेशनल पार्क सेंचुरी घूमने के लिए नेशनल पार्क, वरना आपको वहाँ पर प्रवेश नहीं मिलना है ना। 50,000 तो कम से कम जेब में रखिए। इतने स्क्वायर किलोमीटर का एरिया ये अब केवल हायर क्लास और एलिट क्लास के पास में है। मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप वाले के पास, तो लोअर मिडिल क्लास के पास तो एरिया है नहीं। पब्लिक को क्या देखना चाहिए, ये बात आती है कि पब्लिक क्या देखना चाहती है असल में। तो बायोडाइवर्सिटी वाला बात तो भाई मेरे को समझ में नहीं आती, कोई भी पब्लिक बायोडाइवर्सिटी देखने नहीं जाती है ना। टूरिज्म हिंदुस्तान में 3 तरह का चल रहा है। पहला टूरिज्म जो है वो 80% टूरिज्म जो है, बल्कि 50% टूरिज्म है दारू मुर्गा। दूसरा टूरिज्म है बाकी 30%, 40% मान लीजिए आप, वो टूरिज्म है पूरा का पूरा धार्मिक, और 10% में हमारा वाला टूरिज्म है यार, जिसके लिए हम सब इकट्ठे होते हैं, बात करते हैं। तो ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं उन पीएस पर आता हूं जो शहर में या शहर के नजदीक बस गए हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि जो शिवपुरी टाइगर रिजर्व है, माधव राष्ट्रीय उद्यान,
वो शहर में बसा हुआ है, पर कोई मानता नहीं है कि वो शहर में बसा हुआ है। उसकी एक हार्ट ऑफ द सिटी में है, मगर पूरा हिंदुस्तान मानने तैयार नहीं है, कहीं आते नहीं है नाम कि उसका है। यदि वहां से वो तो दीवार एक नहीं हो तो टाइगर वहां पर रोज बाजार करने आएगा, मार्केट में घूम फिर के वापस जाएगा। तो ये सबसे मैं पहले बताऊंगा, संजय जो यहाँ का है, संजय गांधी टाइगर नेशनल पार्क मुंबई का, ये अर्बन में मान सकते हैं, पूरी तरह से अर्बन में है, छोटा सा एरिया है इसका। दूसरा है गिंडी नेशनल पार्क चेन्नई में, इसको भी आप मान सकते हैं, छोटा सा एरिया है, 2.7 स्क्वायर किलोमीटर का। मोस्टली चूंकि रेप्टाइल और पहले यहाँ पे क्रोकोडाइल बैंक था पास में, इसलिए भी ये एरिया जाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बनरघट्टा, इसको भी माना जाता है कि ये बेंगलोर के बाहर ही है, बेंगलोर वालों को जाने में। हालांकि माना जाता है कि सेंट्रल बेंगलोर से 20 किलोमीटर है, मगर आपको 20 किलोमीटर पहुंचने में 3 घंटे लगेंगे कम से कम। बनरघट्टा वेरी गुड, बहुत बढ़िया राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ साथ तितलियों के बारे में बहुत अच्छा काम हुआ है। इसके अलावा बच्चों को बड़ा इंटरटेनमेंट हो जाता है। पेड़ पौधे तो बहुत अच्छे ही हैं, मगर जिराफ वगैरह, जिराफ, जेबरा, जू भी है। जहाँ भी मेरा ये सोचना है कि जहाँ भी नेशनल पार्क शहर में बनाए जाए, वहाँ जू जरूर बनाया जाए बच्चों के लिए। अगला जो है वो ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क हैदराबाद में है, दैट्स आल्सो वेरी फाइन नेशनल पार्क। इसके बाद एक बर्ड सेंचुरी है, वो भी काफ़ी अच्छी बर्ड सेंचुरी मानी जाती है, ओखला बर्ड सेंचुरी, नोएडा की यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। आप तो खैर अच्छे से परिचित होंगे उससे। बढ़िया बर्ड सेंचुरी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये कम खर्चे के पैसे, कम पैसों वाली जगह है, जहाँ जाने में आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगना है। और वन विहार नेशनल पार्क जो भोपाल में है। वन विहार नेशनल पार्क कैसे बना, ये अगला प्रेजेंटेशन डाल दीजिए प्लीज। वन विहार नेशनल पार्क कैसे बना, इसकी कहानी बड़ी जोरदार है। एक मुख्यमंत्री थे जो थोड़ा सा प्रो पर्यावरण माने जाते थे, प्रो एनवायरनमेंट माने जाते थे। उनने कहा कि 3 दिन में फाइल लेके आइए प्रपोजल की। एक छोटा सा जू टाइप का हुआ करता था, 3 दिन में फाइल लेके आइए कि कैसे नेशनल पार्क बना दिया जाए इस क्षेत्र को। अभी भी जो वन विहार नेशनल पार्क है भोपाल का, वो अभी भी रेवेन्यू लैंड है ना, अभी भी फॉरेस्ट के कोई कंपार्टमेंट्स उसके नहीं बनाए गए हैं स्टिल। उनका ये कहना था कि इस तालाब, एक तरफ तालाब है, एक तरफ पहाड़ी है पूरी की पूरी, तो इसको जो प्रशासनिक सेवा के सबसे वरिष्ठ लोग होते हैं वो चाहते हैं, काफ़ी दबाव है उनका कि यहाँ पे हमारी कॉलोनी बना दी जाए। तो 3 दिन में यदि फाइल नहीं आती तो मेरे को मजबूरी में, आपका यदि डिक्लेयर नहीं करवा पाते हैं आप इसको, तो 3 दिन के बाद मेरे को ये कॉलोनी बनाने के लिए, प्राइवेट कॉलोनी बनाने के लिए जगह देना पड़ेगी। इस तरह से ये लगभग 450 हेक्टेयर फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट नहीं थी, फॉरेस्ट नहीं, पहाड़ी, बैरन, ऑलमोस्ट बैरन लैंड थी उसको, और लोग यहाँ से वहाँ से निकलते थे और भदभदा घूमने के लिए जाया करते थे। तो ये मुख्यमंत्री एक हुए मध्य प्रदेश में, पर्यावरण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया और काफ़ी बड़ी बड़ी ज़मीनें दी। उनके समय में ही मानव संग्रहालय करके एक जगह बनी है, जहाँ कल आप लोग का अगले दिन का सत्र जहाँ पर है तो वहाँ जाएंगे। वो भी वन विहार से लगा हुआ है। किनका? मुख्यमंत्री जी का नाम बताना जरूरी समझते हैं आप? अर्जुन सिंह जी। हाँ, तो अगली स्लाइड प्लीज। बताने की जरूरत नहीं है। भारत में मध्य प्रदेश में भोपाल, और भोपाल में वन विहार नेशनल पार्क। नेक्स्ट प्लीज। ये जो आपको कलर वाला नक्शा, रंगीन वाला नक्शा दिख रहा है, एक्चुअली ये एलिवेशन दिख रहे हैं, है ना, डिफरेंट एलिवेशन है इसके। और जो रेड वाला है, रेड का एरिया जो है आपका, वो हाईएस्ट एलिवेशन है, प्लेटो है ऊपर जाके। और उस प्लेटो में आपको जो देखना हो हर्बीवोरा का, नील, सांबर, बारासिंगा, चीतल, भेड़की, चिकारा, चौसिंगा, ब्लैक बक, वाइल्ड बोर, खरगोश, तीतर, बटेर, आप जिस चीज का नाम लेंगे वो सब देख सकते हैं। हाँ, मोर भी, मोर का वो, और तो मैं बहुत सारी चीजें गिनाने से भूल गया आपको। मोर भी से ही, पार्क्यूपाइन, एवरीथिंग यू कैन सी।
इसका भी बड़ा जोरदार किस्सा है, किस्से सुना देता हूँ छोटे छोटे। अमिताभ बच्चन यहाँ एक फिल्म बन रही थी, उसमें आए राजनीति फिल्म बन रही थी। प्रकाश झा वो साहब को भी बुलाते हैं, अभी आए नहीं, हमारे PCCF साहब रह चुके वो, तब वो वाइल्ड लाइफ में थे। तो अमिताभ बच्चन को हमारी सफारी देखना थी, जहाँ पे लाइन रहते हैं, लाइन सफारी जैसी चीज़ थी, और वो लाइन सब रेस्क्यूड थे और वो अलाउड नहीं था पब्लिक को जाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि जहाँ पर रेस्क्यू सेंटर में लाइन रखे हैं वहाँ कोई नहीं जाएगा। उनने अप्रोच करा हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को, उनने कहा कि भाई हम तो नहीं दे सकते परमिशन ऑफिशियली आपको जाने की, हाँ आप वहाँ वन विहार के मैनेजमेंट के स्तर पे बात कर लें तो हो सकता है। तो प्रकाश झा का मेरे पास फ़ोन आया, हम जानते नहीं थे प्रकाश झा क्या कर रहा है, न्यूज़ पढ़ते रहते थे कि फिल्म बन रही है, उसमें अमिताभ बच्चन आए हुए हैं, काफ़ी लंबे समय से रुके हुए हैं। फिर उनका फ़ोन आया कि अमिताभ जी वो जाना चाहते हैं वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करने के लिए लाइन्स की, वहाँ बहुत दूर पड़ता है गिर जाना उनको। तो मैंने कहा कि नहीं, हम लोग परमिशन नहीं देते यहाँ पे ऊपर करने की। बात आई गई हो गई, उनने हमसे ऑफ़र भी दिया कि कुछ फिल्म में छोटा मोटा रोल आपको दे दिया जाएगा। हाँ हाँ सही बता रहा हूँ, आप मजाक मत समझिए। और तो बाद में जब फिर और फिर वो फिल्म आई तो एक कमिश्नर भोपाल हुआ करते थे, भोपाल के कमिश्नर थे, उनको भी उनने कहा था कि साहब मैनेजमेंट बढ़िया करिए तो आपको भी रोल देंगे। तो उनका 1 सेकंड के कुछ फ्रैक्शंस में उनको भी रोल दिया, केवल चेहरा दिखता है उनका, है हाँ करेक्ट, पुखराज मारू साहब, केवल अब फिल्म देखिएगा उसमें एक झलक चेहरे की दिखाई देती है। खैर तो मैं उस झांसे में नहीं आया, मगर हुआ ये कि अमिताभ बच्चन अपना ब्लॉग लिखते हैं डेली, तो उनने अगले दिन ब्लॉग में डाल दिया कि आई मैं सफारी गया और मैंने लायन देखे और टाइगर देखे और पैंथर देखे, और लायन के उनने बहुत बढ़िया बढ़िया फोटो डाल दिए। अगले दिन मेरे पास वो बहुत नाराज होते थे सुहास कुमार साहब, क्यों परमिशन दे दी, घुमा दिया अमिताभ बच्चन को। मैंने कहा नहीं सर, बिल्कुल नहीं आया अमिताभ बच्चन, ये देखो तो उनको ब्लॉग में देखो, वो फॉलो करते थे अमिताभ बच्चन को। देखा तो अमिताभ बच्चन के बाद बहुत बढ़िया कैमरा रहे होंगे, और हमारे रोड पे 2 टाइगर हुआ करते थे, 2 लाइन हुआ करते थे, उन्होंने बहुत अच्छी फोटोग्राफी करी। मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि प्रकाश झा ने मेरे को फ़ोन किया, मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ कि वन विहार में एनिमल को इतना बढ़िया रखा जाता था कि अमिताभ बच्चन ने जब फोटोग्राफी करी तो ऐसा लग रहा था कि वो नेचुरल जंगल है, ना तो वो पत्थर की दीवार जो मोटवाल थी वो दिख रही थी, ना मोटवाल के सामने जब आप डायरेक्टर रहे वहाँ पे तो फ्लैग स्टोन्स लगवाए थे, और ना फ्लैग स्टोन दिख रहे थे, और ना कोई ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा था जो कि दिखे कि ये नेशनल पार्क, ये गिर नहीं है। और उसने कहा कि मैं सफारी में गया और घूम के आया। तो फिर मैंने उनको बताया कि ये कहाँ कहाँ किस किस हाउसिंग के पास से गुजरे हैं अमिताभ बच्चन, और गुजरे होंगे, और उन्होंने कहाँ कहाँ से फ़ोटो खींचा होगा। तो इस तरह की बातें हैं। अब हम वापस थोड़ी सी टेक्निकल बातों पे आ जाते हैं। वापस अगली स्लाइड सर। वन विहार की इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए वन विहार सबसे पहली बात तो एक जू है। पहले मीडियम साइज जू था, बाद में सेंट्रल जू अथॉरिटी ये करके एक संस्था होती है, और सेंट्रल जू अथॉरिटी भी वो CBI टाइप की संस्था होती है, कुछ भी आरोप लगाएगी आपको और काम नहीं कर। मैं जो बात है वो मैं कह रहा हूँ, है ना, भले ही से आप उस पर आ रहे हो, है ना, मैं वो काम नहीं करने देती साहब। हमने एक बहुत बढ़िया बनाया था हमने पैंथर का, पैंथर आता था एक जगह, हम उसको खाना डालते थे, पैंथर खाना खाता था, पब्लिक को बहुत बढ़िया व्यू दिखता था। टाइगर से ज़्यादा भीड़ पैंथर पे इकट्ठी होने लगी थी। उसने कहा नहीं, किसी भी जानवर को खाना खाते हुए नहीं दिखाना है, मानव अधिकार की तरह जानवरों के भी अधिकार हैं। वो शो बंद हो गया, लोगों की भीड़ लगना बंद हो गई। तो वो ऐसे ही बातें करते हैं वो लोग, है ना, इसी तरह की बातें करते हैं। जैसे हमने बहुत बड़े बड़े पाइथन ला के रखे, उन पाइथन से हमको भी डर लगता था, तो हमने उन पाइथन को थोड़ा सा ऐसा वैली जैसा बनाया, वैसी वैली जैसी विधानसभा लोकसभा में होती है बीच में, उस वैली जैसा बनाया, उसमें पाइथन रखे। उनका कहना था नहीं, जानवर को आप ऊपर से नहीं देखोगे, जानवर को बुरा लगता है ऊपर से कोई देखे तो, वो नीचे से ऊपर आपको देखता है। ये मैं आपको बस वास्तविकता बता रहा हूँ। सेंट्रल जू अथॉरिटी CZA, और वही CZA वो जो एक और हमारे अंबानी जी ने खोला है ना, जामतारा, क्या है, वनतारा
वहां सब तरह की अनुमतियां हैं। तो सीजेडे ने इसको मीडियम जू से स्मॉल जू कर दिया, ठीक है। वो आप जानते होंगे सर, मल्होत्रा भाई साहब आते थे, हाँ, तो वो कर दिया उन्होंने। जबकि हम लोगों ने क्या करा, आप देखिए हिंदुस्तान में आपको दूसरी कोई एवियरी ऐसी नहीं मिलेगी जहां एनिमल को बिना किसी तरह के पिंजरे में, कोई केजिंग नहीं है। आप पूरे हिंदुस्तान में चले जाइए, आपको बर्ड्स जो हैं जू में बर्ड्स बंद मिलेंगी। आपको 295 स्पीसीज की बर्ड्स, उसमें 100 के लगभग टेरेस्ट्रियल बर्ड्स हैं। खालिद साहब बैठे हैं, संगीता बैठी है यहाँ पे, इतने लगभग 100 टेरेस्ट्रियल बर्ड्स और 195 दूसरे बर्ड्स में आके 295 बर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। और आप कहीं पे भी कोई बर्ड उड़ के जा सकता है, सारस क्रेन से लेके और नौरंगा तक सब बर्ड्स में दिखाई देते हैं। बिल्कुल वैसे का वैसा हमारा हर्बीवोरा है, कोई भी हर्बीवोरा कैप्टिविटी में नहीं है, पूरे हर्बीवोरा खुले में है। यदि आप मात्र 200 रुपये खर्च करें तो आपको ऊपर का जो मैं बताया कोर एरिया जो बोलते हैं, 200 रुपये 1500 रुपये की गाड़ी आती है, 8 लोग बैठ के आराम से जाके उसको देख के आ सकते हैं, पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। तो दूसरी बात है जू है, पहली बात जू है। दूसरी बात आप देख सफारी है पूरी की पूरी, हर्बीवोरा सफारी, टाइगर सफारी भी बनने वाली है वैसे वहाँ पे। अब अगली तीसरा महत्व की बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी कोई घायल हो जाए, जानवर इंजोर्ड हो जाए, बीमार हो जाए, इलाज के लिए रेस्क्यू सेंटर है। अभी भी मध्य प्रदेश का सबसे बढ़िया रेस्क्यू सेंटर भोपाल में है। वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल है, सबसे बढ़िया हॉस्पिटल है। घंटी बजा देना सर। सर क्या कहूं सर, 1-2 जख्म नहीं, 1-2 बच्चे, पीछे वाले बच्चे, 1-2 जख्म नहीं, बदन है सारा जख्मी। 1-2 जख्म नहीं, बदन है सारा जख्मी। दर्द बेचारा परेशान है, कहां से उठे। तो चलिए, हाँ नेशनल पार्क तो खैर है ही नेशनल पार्क। रेस्क्यू सेंटर, एक बात और जो आप लोग नहीं सुन पाते, फैयाज साहब शायद आप तक भी बात नहीं पहुंचती होगी, वो ब्रीडिंग सेंटर भी है ना, टाइगर का, लायन का, इन 2 का, और पैंथर का भी। तो पैंथर की जरूरत तो है नहीं, पैंथर तो बहुत बढ़ गए हैं। लायन हमको दे नहीं रहे, मिल नहीं रहे हैं, वहाँ से आना मुश्किल हो रहा है, लायन तो नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। कोशिश करी हमने लायन को देने की, आयुर्वेदिक दवाई भी खिलाई जो लायंस थे बूढ़े हमारे पास, उनको वाकई ब्रीडिंग कराने के लिए, है ना। खैर वो मगर टाइगर का है, टाइगर कई बार टाइगर हुए, मगर टाइगर के बच्चे जिंदा नहीं रह पाते हैं, है ना। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हम किसी को स्टडी भी नहीं करने देते, डाटा वाटा आप लोग तैयार करें, कोई साइंटिस्ट तरफ से बिल्कुल कोशिश मत करना कि क्यों नहीं रह पाते हैं। देखिए एक सीधा सा फंडा होता है, यदि टाइग्रेस को ये लगेगा कि वो सुरक्षित नहीं है तो पहले तो ब्रीडिंग ही नहीं करेगी, और ब्रीडिंग कर भी देगी और उसको जरा सा एहसास होगा कि बच्चों को कोई हानि पहुंचाने वाला है, अबेंडन कर देगी, है ना। इस पे बहुत ज़्यादा बहस की कहीं गुंजाइश नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बता रहे हैं। एक बिल्कुल आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक बार हमने ब्रीडिंग कराने के लिए टाइगर को छोड़ा टाइग्रेस के पास गया, वो टाइग्रेस का बिल्कुल मन नहीं था करने का, हाँ, उसने उसका गला दबा दिया 2 मिनट। मतलब हम लोग जब तक कि वाटर कैन वगैरह पानी वानी डालते उतने से मतलब सेकेंड्स में उसने उसका गला दबा के मार डाला टाइग्रेस का, जरा सा टाइग्रेस ने रेजिस्टेंस करा, मार डाला। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपको पीएस के प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बारे में जो देखना चाहते हैं। हाँ, तो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में हमने ये बताया आपको कि ऐसी चीज़, हॉस्पिटल बहुत ही बढ़िया हॉस्पिटल है जहाँ हम वो सब कर सकते हैं जो ह्यूमन के जितने तरह के टेस्ट होते हैं, ह्यूमन को ईसीजी करते हैं तो टाइगर की भी ईसीजी कर सकते हैं आप, सब कुछ वहाँ पे सुविधाएं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। चलिए 5 मिनट सर, है ना। हिस्ट्री मैंने बता दी, इससे अच्छी हिस्ट्री कुछ नहीं हो सकती कि अर्जुन सिंह जी ने बनवाया था। नेक्स्ट स्लाइड, अगली। चलिए अगली, आगे स्लाइड, और आगे चलिए, और आगे चलिए।
आगे चलिए। देखिए इंटरप्रिटेशन सेंटर निकल गया, अच्छी बात है, मगर ऐसा इंटरप्रिटेशन सेंटर में आप लोगों को दो चीज़ें जरूर जाके देखना चाहिए, यदि कोई वहाँ विजिट करे या बच्चे भी जाएं तो बताइएगा। एक तो टाइगर का स्केलेटन रखा हुआ है ना, तो जैसी हमारी फीमर है, जैसी टिबिया फिबुला है, जैसी हमारी बोन्स हैं, वो सब बोन्स देखने को मिलती हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। और दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टाइगर के मसल्स कैसे होते हैं, वाई दे आर पावरफुल, वो मस्कुलर टाइगर भी रखा हुआ है, बहुत बढ़िया टैक्सीडर्मी करके रखा हुआ है, वो जरूर देखना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज, अगला। फॉनल डाइवर्सिटी, फ्लोरल, आगे और चलिए। अच्छा सर, हमारे सामने प्रोफेसर राव बैठे हुए हैं, डॉक्टर राव, ये एक बार वन विहार गए थे हमारे पास। वो डाइवर्सिटी कैसे इंटैक्ट है, हम एक वैसे ही हमने बताया, शायद पूछा सर ने कि वो ये कौन सा पेड़ है, क्या बात है। डॉक्टर व्यास भी हमारे साथ थे, तो वो पेड़ मैंने बताया था, सर आप भूल गए होंगे नाम, मैं आपको वो पेड़ बताता हूँ। एक पेड़ होता है दतरंगा, एलोपैथी में आयुर्वेदिक में दोनों में दतरंगा, दांत आए हैं ना, तो दांत के लिए आपने उसकी वो बनती है, दवा बनती है, वज्रदंती में वो डलता है खासतौर से आयुर्वेदिक दवा में। वो मैंने एक पत्थर उठाया, उसको थोड़ा सा स्क्रैच करे, ऑक्सीडेशन होता है उसका बार्क का, और बार्क लाल होना शुरू हो जाती है, वो पेड़ की पहचान ही है। पूरे पेड़ खत्म हो गए। आप उस दतरंगा के पेड़ जंगल में ढूंढने जाएंगे तो यदि 1 लाख पेड़ों का सर्वे करेंगे तो आपको 10 पेड़ मिलेंगे। वन विहार का प्रोटेक्शन, द एहरेसिया लीविस, हाँ, वो खत्म होता जा रहा है जंगल में, धीरे धीरे पहचानते नहीं है लोग, खत्म होता जा रहा है एहरेसिया लीविस। दूसरा पेड़ वहां पे पाया जाता है, एक और पेड़ होता है, बड़ा अच्छा नाम है उसका, दही पलाश, कार्डिया मैलकॉमनाई। अंग्रेजों ने कटवा दिया। प्रॉपर्टी यह है कि उसके लीफ पे आप कोई चीज लिख दें, पत्ता तोड़ें उसका ताजा, आप कोई भी संदेश लिख दीजिए, अच्छा बड़ा, इतनी बड़ी लीफ होती पलाश के जैसी, कुछ भी चीज लिख दीजिए, आपको उस समय कुछ नहीं दिखेगा कि इस पर कुछ लिखा हुआ है। इसके बाद आप पहुंच जाइए 5 घंटे बाद दूसरी जगह, उस पर पूरा का पूरा जैसे प्रिंट आउट होता है ना, ऐसा प्रिंट आउट जैसा लिखा हुआ दिखाई देता है। दहीमन, दही पलाश, कार्डिया की स्पीसीज है, कार्डिया मैलकॉमनाई। ये 2 स्पीसीज, एक और है काक्लोस्पर्मम रेलिजियोसम, इतना ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स आते हैं कि आपके बाकी सब दुनिया के ये टेकोमा वेकोमा के फ्लावर्स बेकार हैं बिल्कुल। ऐसी स्पीसीज वो प्रिजर्वेशन के कारण, पीए बनने के कारण, नेशनल पार्क बनने के कारण प्रिजर्व हो गई। लोग बाग वो तो समझ ही नहीं रहे हैं इंपॉर्टेंसी के, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंसी किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया को डिक्लेयर करने से कितना बड़ा पोटेंशियल जो हमारे पास है वो इकट्ठा होता जा रहा है। तो चलिए अगली नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर के 5 मिनट खत्म हो रहे हैं। चलिए मैं बजाय स्लाइड्स पे जाने के, नेक्स्ट स्लाइड, आपको ये बताता हूं कि राजनीति करना चाहिए। पॉलिटिक्स करना चाहिए। आपको पर्यावरण बचाना है, आपको करना है, आपको यह कहना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकले, आपको यह करना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड नहीं निकले, आपको पर्टिकुलेट मैटर कम करना है, आपको टेम्परेचर कम करना है, राजनीति करिए। मैं आपको बताता हूं कैसे राजनीति करिए। 2 एग्जाम्पल दूंगा, इसके बाद मेरी बात खत्म, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल एकदम। एक मैडम यहां बैठी हुई है, वो कह रही थी, मेरी बात कर रहा था मैं तो वो सुन रही थी, बिल्कुल उन्होंने मेरी बात की पुष्टि की। पिछले 20 साल से कोशिश कर रहे थे कि ओंकारेश्वर नेशनल पार्क बन जाए, ओंकारेश्वर सेंचुरी बन जाए। शासन ने कमिट किया था नर्मदा के डूब में जो एरिया आया था कि हम बनाएंगे। पिछले 20 साल से हर बार में एजेंडा में जाता था वो कि बनेगा, और वापस आ जाता था नहीं बनेगा। मैंने राजनीति करी सर, मैंने राजनीति करी, मेरी राजनीति करने के कारण मुझे को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड में मेंबर बना दिया गया। सही बता रहा हूं आपको मैं। और भी विद्वान लोग बैठे हैं काफी सारे, और भी मेरे से बड़े बड़े जानकार हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, मगर मैंने राजनीति करी तो मैं बन गया। और इस अब आप देखिए कि वहां मैंने जाके करा कि ये मेरा एक मोटो है, दो मोटो थे। एक पहला, इस सेंचुरी को डिक्लेयर करवाना। मैंने मेरे जैसे 7 मेंबर्स को पक्ष में लिया। एक वाइस चांसलर है मेंबर पत्रकारिता विश्वविद्यालय के, एक दूसरे सज्जन है, वो बहुत बड़ी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनको पद्मश्री मिला है अभी। एक तीसरा बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उधर सतना तरफ के,
उनको मैंने अपने पक्ष में लिया, ऐसे चौथा में और ऐसे 3 और लिए। और हम कोई भी बात हो तो सीएम साहब को हम लोग 7 लोग एक सुर में बोलते थे। मैंने कहा कि सर वो ओंकारेश्वर इतने साल से आ रहा है, 20 साल से एजेंडा में, अभी तक ऐसे ये सेंचुरी डिक्लेयर नहीं हुआ, निकालो कहाँ पर है। सब मीटिंग में निकाला गया। 3 एसीएस साहब खड़े हुए कि नहीं साहब मत करो इसको डिक्लेयर। क्यों मत करो? एक बोले कि हमको पाइपलाइन ले जाना है यहां से, तो जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने कहा सर इनको कितनी जमीन चाहिए होगी, इनके पास कुछ कैलकुलेशन होगा। उनने जितनी जमीन इनको बताया उतनी अभी आज आप अलॉट कर दीजिए, अभी बोल दीजिए कि दी जाती है। दूसरा विभाग आ गया, सिंचाई विभाग, मछली विभाग, कि सर वहां पे सिंचाई होती है और पानी वाला एरिया इनको नहीं दिया जाए। हमारे वन विहार में आपको बताया पानी का एरिया भी है, पानी की भी एक बीट है, पानी के अंदर भी हमारा एरिया है। मैंने कहा साहब हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारे कर्मचारी जहां भी पानी होता है मछुआरों से बहुत परेशान रहते हैं और दीघ से नाव चलाने वालों से बहुत परेशान रहते हैं। ये दोनों लोग इंट्रूशन करते हैं, आप पानी का एरिया बिल्कुल मत दीजिए। 2 लोग निपट गए। और किसी की कोई डिमांड है क्या? नहीं है तो सर घोषित कर दीजिए। आपको सही बता रहा हूं, 7 लोग बोर्ड के कहेंगे तो घोषित हो गया। बिल्कुल ऐसे की ऐसी घटना घटती थी ये राता पानी टाइगर रिजर्व में। जितने दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं उतने दिन से मैं वाइल्ड लाइफ बोर्ड का सदस्य हूं, है ना, लगभग दोनों बराबर है। साथ ही साथ डिक्लेयर हुआ था मेरा। वो बिल्कुल राता राजनीति करिए भाई, मैं कह रहा हूं, सही बता रहा हूं, राजनीति करिए, पॉलिटिक्स करिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सब बेकार की बातें हैं बाकी। तो वो राता पानी टाइगर रिजर्व घोषित नहीं हो रहा था। उसके कई सारे कारण थे। एक बहुत बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी थी, और जो सबसे बड़ा कारण वो बताते थे कि साहब लोगों को शिफ्ट करना पड़ेगा अंदर से बाहर, और शिफ्टिंग में बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी, बड़े जन आंदोलन होंगे। पहले वाले जो मुख्यमंत्री जी हैं वो तो बहुत विरोधी थे इसको टाइगर रिजर्व घोषित करने के। एक आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा। हम 7 लोग फिर खड़े हुए कि साहब हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं, कोई आंदोलन खड़ा नहीं होगा। दिक्कत क्या है? तो साहब कोर एरिया डिक्लेयर करने में दिक्कत है। अधिकारी बोले और सब बोले, ब्यूरोक्रेट्स बोले। तो कोर एरिया में कितने गांव आते हैं? 2 गांव। तो 2 गांव आते हैं, उन 2 गांव वालों को आप सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में ले जाइए और दिखाइए कि उनका कितना अच्छा ट्रांसलोकेशन हुआ है। बिजली है, पानी है, अस्पताल है, नहर है, खेती है, हर चीज़ है उनके बच्चों। और जितने गवर्नमेंट की योजना है वो सब उसमें आ गई है वहाँ पे। उनको ले जाएंगे साहब हम दिखाने। साहब वो 2 गांव वाले भी तैयार हो गए कि साहब हम जाने तैयार हैं बाहर। कोर एरिया डिक्लेयर हो गया। बफर में गांव में कोई दिक्कत नहीं है, बफर देते रहते ही है गांव में। तो राता पानी टाइगर रिजर्व घोषित हो गया। ये लेटेस्ट की बात है आपको। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि पीए हर जगह होना चाहिए, पीएस, है ना, पीएस तो होना ही चाहिए, और राजनीति जरूर होना चाहिए। मगर हमारा मोटो क्या होना चाहिए हम लोगों का, हम सबका, कि पेड़ नदी पर्वत बचें, बचे हमारी झील। पेड़ नदी पर्वत बचे हमारी झील, हरे भरे फैले रहें जंगल मीलों मील। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरा कोई टेक्निकल प्रेजेंटेशन मैंने नहीं, ये टेक्निकल नहीं, बहुत प्रैक्टिकल मैंने कहा नींद के बाद का था। यदि नींद के पहले मतलब खाने के पहले यदि होता तो हो सकता है मैं टेक्निकल बातें कर। ये बहुत प्रैक्टिकल था, और आई थिंक एक अच्छे प्रोफेशनल को एक प्रैक्टिकली आदमी होना चाहिए जो आप हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ फ्लोर ओपन है, किसी को कोई सवाल हो तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कोई सवाल तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए कुछ यदि पूछना चाहते हैं तो यू आर नाउ प्लीज फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड। नो क्वेश्चन। Okay, so no questions. Thank you very much. Now your time, please. Already concluded. मैं समझता हूँ थोड़ा सा एक पॉइंट में ऐड करना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने बताया कि PAs 1000 P है, 106 नेशनल पार्क सेंचुरी 570, then we have community reserve 220, then conservation reserve around 215, and biosphere reserve 18, marine reserve 130, and sacred group की जो बात कर रहे थे आप, वो करीब 1 लाख के आसपास हैं इस कंट्री में। टोटल की बात करें हम तो ये हो जाएंगे 1,13,020
इतने हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क में फैले हुए हैं. बट अगर हम बात करें नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक सेंचुरीज और ये जू और प्लेस लाइक वन विहार, तो वी हैव ओनली 155 इन द कंट्री. तो मैं समझता हूँ कि जो सदेश पुराण जी का जो सजेशन है, इट इज़ वेल टेकन कि हर ज़िले में, मैं कहता हूँ नॉट ओनली ज़िले, इवन गांव-गांव में इस ऐसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ का विकास होना चाहिए. दैट इज़ माय कंक्लूजन टू इट. Let's move ahead with the next session. For the next session, we turn our attention to a resource that is so commonplace in our daily life that we often overlook its significance: sand. Every road we travel on, every building we occupy, every bridge, school, hospital, and piece of urban infrastructure depends upon sand. In fact, after water, sand is considered one of the most consumed natural resources in the world. As cities continue to expand and infrastructure development accelerates, the demand for sand has increased dramatically. However, this demand comes at a cost. Excessive and unregulated sand mining can alter river channels, degrade aquatic habitats, affect groundwater system, increase erosion, and threaten the ecological integrity of entire riverine ecosystem. This raises an important question: how do we balance the demand of urban development with the need to protect the natural systems upon which the development ultimately depends? To guide us through this discussion, we are privileged to have as chair of this session Dr. Vipin Vyas, Professor and Head, Department of Zoology and Applied Aquaculture, Barkatullah University, Bhopal. Dr. Vyas holds a PhD degree in limnology. I hope I'm pronouncing it right. Limnology. 30 years of experience in teaching and research. He has keen interest in outreach activities in environmental conservation, river and wetland ecology, biodiversity conservation, and river health science popularization. Sir, we are honored to have you here. It is now my pleasure to introduce our speaker, Dr. Kumar Gaurav, Associate Professor in the Department of Earth and Environmental Science at ISER, Bhopal. Dr. Kumar Gaurav is an Associate Professor in the Department of Earth and Environmental Sciences at Indian Institute of Science Education and Research, Bhopal. He has expertise in river sciences, earth surface processes, and remote sensing. Dr. Gaurav has done PhD from Institut de Physique du Global de Paris, I hope I'm pronouncing it right, IPGP, France, on morphology of the Himalayan rivers in 2016. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcome Dr. Gaurav for his presentation on impact of sand mining on riverine ecosystems. Sir, we would like to welcome you both with a planter. Thank you, sir. I hand over the stage to you. So very good afternoon to all of you. So when Vikas approached me and he wanted me to give a talk on this in this conference, so I said on what topic I should speak, because this seminar is mainly about the ecologist, botanist, geologist. I'm not geologist, I'm not botanist. I don't understand even the birds. I'm a geomorphologist and I work on river processes, how river operates. And as you see, river is not a conduit of water. It is a system that has its own ecosystem that supports different species, riverine species that stay in the river, and
also those stay in the floodplain. So it's very important to understand. And what we are doing so we are living in era of, so as previous speaker he said, the climate change is questionable. Yes, we can question always, but we have some evidences. And other than climate, we have anthropogenic stress. Anthropogenic intervention on our natural system, that creates problem. What are those problems that we'll discuss? This presentation, I have not kept it very technical so that I can cater wider audience. And I hope I'll try to answer a few questions that you may have thought about. So sand mining, so let me put this, I'll not say it's sand mining. Sand is a grain size. It is not related to the grain size. Let's say it river aggregates. It can be sand, it can be silt, it can be boulder, it can be some gravel also. So technically, by definition, removal of natural sand and sand resources or river material from natural, environmental, terrestrial, riverine, coastal, marine to extract valuable material. These are valuable material. After water, these are the most widely used materials. So what happens, river, as we know that river is an important source of sand. So what we do, we extract material sometimes from the river bed. That means in-stream channels. From the middle of the channel, we get fresh sediments. Also, we get sediments from the floodplain. So we dig floodplain because it is developed by the floodplain is developed by the river in geomorphological time scale. So material is also available there, and we extract those for our construction purposes. So in response to that, what happens, if you see the demand, this demand has gone exponentially. It has exponentially increased after 2000. That means the rate at which we were mining before is now manifold more. So we need a sustainable management of these river sands. Otherwise, if we keep on doing sand mining or river mining in this way, we will destroy our rivers. So what are destructions? So what it does, so if you see a river system, it is a complex connected system. So where we have human activities that alters, we have climatic controls, we have hydrological conditions, and other than that, we have some natural system that also affect, which is the tectonic activities, geology, biological processes, fluvial processes, and so on. So all together, if you disturb any, that is going to disturb the hydrological system. So here in this presentation, I'll mainly focus on the human interventions, okay? Not the natural intervention into the system. Now, what it does, so everything is in equilibrium. We are equilibrium, we get disturbed when some perturbation occurs to us. Similarly, our river systems are in equilibrium, means it is adjusted to change in flow and sediment over a longer period of time. And then it is at dynamic equilibrium. So that dynamic equilibrium is balanced by these two parameters. So one is the sediment, another one is the flow. And if you see that, so at equilibrium, both these two things are balanced. Any disturbance is essentially going to disturb this balance. So in terms of what? In terms of slope. When you increase discharge, river will start eroding. If you increase sediments, river will start degrading. And similarly, if you decrease sediments, river will again start incising. So this balance of sediment and water controls the river morphology. Any changes is going to. So how it affects? So if you see its response, this is the process. And if you see the response, we can have response in, as I told you, in terms of incision. So if you have a great erosion of something, the channel will incise, and then the energy gradient of river will change. So for example, this is an example where you have created a ditch, and in response to that change in ditch, you can think of as a mining of river bed material. It is going to go propagate further, and eventually it will change the slope profile. So in real system, okay, why we should bother about it? We should bother about these things. Why? Because we have these structures standing that we have created by doing some sort of modeling. So if you disturb
which has not been modeled, if you disturb to a larger extent, what it is going to affect is the erosion of pillars, okay? And then it can collapse. So this can happen to the structures that we have. Also, naturally, what it can do, if you do abrupt mining, what it can do in response to this, erosion and deposition processes will disturb. That means this river bank or city, which was stable before, now because of this disturbance, it is going to come under threat, because the changing regime can alter erosion processes, and you will start eroding your bank and your cities will collapse. That you were thinking that that is safe. Okay? So altogether, so if you see, so these are the morphological changes, but all those, these morphological changes is further connected to the connectivity of system that supports different habitat also. So for example, longitudinal connectivity of the river means how river is connected from upstream to downstream. Vertical connectivity means how the groundwater system is connected to the river system, because both exchange material, okay? And also the lateral connectivity. Lateral connectivity means how your floodplain is connected to the river system. If you do mining in the floodplain, that means you are disconnecting your channel, okay? And therefore, this material and flow and sediments that will flow during as a runoff during monsoon season will not reach to the river. And similarly, if you disturb the bank, it can also, so when river floods, water level goes up and it floods the adjacent area. So that processes you are going. So what we do, we disturb hydrological connectivity in terms of longitudinal, vertical, and lateral. And then it has consequences in terms of other habitat degradation also. Now, so here, I'll give you some examples and why we should not have just a universal model to tackle these problems. Because our system, river is not same. We have Himalayan system, we have a cratonic control system, where, for example, Narmada, where you have a bedrock system, and alluvial also you have some mixed bedrock and alluvial. So if you see this kind of river, this is heavily mined. You cannot consider this as a river. There is no, its ecosystem is completely lost, connectivity is completely lost, and it is in irreversible condition. It's very difficult to manage this river now. Now if you see another river, this is a small tributary. Another river is the Yamuna river. This is Yamuna river, Old Delhi Barrage and Hathni Kund Barrage. So if you see here, so this image is taken in 2020 and this image is of 2016. Now you can see that how much change has already taken place. Okay, so that means, so these minings, so this is probably, so as you can see here, river was wider, and now river is becoming narrower, shrinking. It might be because of the incision. And incision, what happens? So then you have land available, and which was earlier the river part, river portion. And now what we do? We do construction here. That means we are constructing on river bank itself. And so any condition of heavy rainfall or extreme flooding, all those area can be inundated or flooded. So the example which I gave you was on the alluvial system of Himalayan rivers. Those flows on the loose sediments. Now if you see our river where we are living, Narmada is one of the biggest rivers. So if you see some of the articles which has been published in different newspapers, how sand mining along the Narmada river is choking way of life. Sand mining a threat to the mussel and other aquatic species. It's not, the sand mining not only affects the river morphology, but it's also because the river habitat is controlled by the morphology. If you disturb morphology, habitat will degrade, and essentially, eventually your species will degrade and you may live. So there is a statistics which was published by Joy et al. In 2020. It says that about 1,266 sand mines in UP, according to that data, and around 13% are located on the Narmada river. So Narmada river is highly mined. So as I told you, so the consequences can have geomorphic impact, hydrological impact, and ecological. So everything is connected.
So according to the Tobler's law, everything is connected to everything. So if you disturb any compartment, that is going to have consequences on the other compartment. So this is an example of Narmada River from Sandhya to Hosangabad. And if you see the morphology of these rivers, so at some places river flows through bedrock where you don't have sand material. Here it flows through partly confined system where you have bedrock also and also freshly deposited sediment. Those are called mixed reaches. So as you can see here, these bright patches, they are basically the deposition of sediments. They are bars. And these bars are mined in the non-monsoon season. And if you see, this is an example of bar. So bar basically looks this kind. So if you are filled with sediment, sands. So now, as you can see, how intense mining is going on. Okay. So all the sands has been excavated. And then again, it's another story that river replenished also. During the monsoon season, we get huge amount of sediments, and that sediment again get deposited there. So in this reach, you have sand mining. If you go further upstream from, let's say, downstream of Jabalpur, there is a Burman Ghat. Burman Ghat, we have bedrock. And bedrock is weathered. So those weathered material we mine, okay, for road construction purposes. So there you have basically stone mining. So we wanted to see how these mining are affecting rivers. So if you see in the Himalayan system, those are called mobile bed river. So any change, significant change in the mining can be reflected in terms of its planform morphology. Means you will see that immediately river will start responding. But our system, Narmada River, as I told you, it's not alluvial. It is controlled by bedrock. And on bedrock you have sediment deposit. So here response is not so simple. So visually, if you see that, if you just analyze satellite images, so here we wanted to see, so these pink are basically the bars which I showed you, deposition of sediments, and this is the river. So if you see how much area has changed and its shape has changed, so we did some time series analysis and we found that along the course we don't see any changes. That means we should be safe. We can say that, okay, we don't see any planform changes in the Narmada River, so we can do sand mining. Is it true? No. And also we said, okay, how much is the river change in terms of width, in terms of its depth, in terms of its Thalvik. Thalvik is the deepest point. We found that there is no change if you simply do satellite image analysis. But, so what is happening? So we were surprised in the beginning that in satellite we don't see any change. So is it there is no change happening or something else is happening? So as I told you, I just showed you this lane balance, so erosion and deposition. So next thing what we wanted to understand is the erosion and deposition processes. So for that, we performed some analysis. That is, the first one is, I'll not go to the technical aspect of this. So this is called H index, which is the hysteresis analysis. Hysteresis is how the set skip all other plots. I'm coming to the main plot. So if you see here, what we found that H index is the hysteresis index, and if you integrate that, so area under the curve. So hysteresis basically it will have a slimmer rings. And then we found several reports, and that says that after 2008-2009, the ramp sand mining in that area has started. So that matches with our analysis. Now, so further next step we went. Sorry about these technical things, but I think it's important to explain. So a specific gauge analysis is the positive. So it gives you, again, it's y-axis is the water level and x-axis is the time. So positive slope for high signal increase in flood stage and region being hit by consecutive monsoonal floodplain. So what happens, so we have different type of hysteresis. We have clockwise hysteresis, we have anti-clockwise hysteresis, and we have loop 8 hysteresis. What does it mean? Positive hysteresis is when after rainfall, sediment immediately gets mobilized. That means
the sediment is available for erosion. Okay, so the moment rainfall occurs, sediment is there, mobilized, gets mobilized. So sediment peak reaches before your water discharge peak reaches. Anti-clockwise, what happens? Sediment is not available. Sediment is been mined, or it is not immediately available. It is available somewhere in the catchment. So what happens? So first discharge will peak, and then after there will be lag, your sediment discharge peak will occur. So this is called negative hysteresis. And loop 8 hysteresis is because of the impulsive behavior. So you don't know, sometimes it will increase, sometimes it will decrease, depending upon the water availability or also the erratic rainfall. Okay. So from a specific gauge analysis, what we found, so as we did in this analysis for Sandhya and Hoshangabad, because for Sandhya and Hoshangabad we had gauge station there, so we had measurement of discharge and sediment, water discharge and sediment. So what we found that at Sandhya pre-mining, the incision was something around minus 1.6 centimeter per year, and post mining this is minus 4.4. Okay, so the rate at which bed is incising, and similarly Hoshangabad. So in both cases, what we found that after mining, the bed level is increasing. So in case of Narmada River, the surprising thing is it does not reflect changes on the bank, on the plan from the top, but the changes are within the channel. Okay. So then other thing which we wanted to know that how the relationship has changed, because when you change this sediment and water concentration, so what it is going to change is the rating curve, which is the suspended sediment curve is proportional to Q to the power B, which is a power law relationship that tells you how your suspended sediment load is related with the discharge. So this A prefactor tells you the availability of weathered material, and B is the erosive power. Erosive power means how much power your fluid has, water has, and A is what? Sediment is available or not. Assume a reach where you have a lot of sediment, okay? That means that will be mobilized when discharge increases. But if you don't have sediments, what will happen? If river has energy, what it will do? It will try to, because there is no sediment, so virgin water will flow and it will start eroding the system. So this is the hysteresis that it's hard to see from distance, but what I can tell you is the coefficient which A that determines the availability of sediment has changed throughout. So yeah, I'll just conclude. So this part I have already explained, and so just to conclude is hydraulic assessment through H index and specific gauge analysis clearly indicates river bed incision, increased channel area flow capacity due to intense mining in the Narmada River. And other thing that we concluded is the sediment rating curve analysis highlights the decreased availability of sediment, and this decreased availability of sediment is because of the sediment mining, and increased erosive power of the river due to surge of mining, and therefore bed level is changing. And the photographs which I showed you, there is a scouring near the river bridge, that is because of the lowering of the bed. That is probably. So what we do, so this is what we said, so in the background what we do, we try to quantify how much sediment is being mined. So how the indirect way is, this is a drone image, so indirect way, if you have a boat, if you have a dumper and all those things, so you know the density of sand, by knowing their area, you can count them and you can compute. Okay, so this is how we are doing. So this is the algorithm that we have written to automatically classify boats. This is the facility that we have. So for example, all those things, analysis, we try to understand through flume experiment. This is the field measurements that we did, and we have all these instruments that helps us. And the work which I presented is already published in River Research Application. If you get a time, if you're interested, you may look it. And if you have any questions, I will be happy to answer. Thank you very much. Thank you, Dr. Kumar. Very eye-opener presentation you have given.
We are fortunate that we are sitting in this hall and discussing sand mining. जो फील्ड पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं उन पर तो ट्रैक्टर चढ़ा दिए जा रहे हैं. सो यहीं बैठ के हम ऐसी बातें कर सकते हैं. एनीवेज, there is small query. See, this Narmada river is, some dams have been constructed on the main river and on the tributaries, and some dams are still under construction. How this dams are affecting the hydrology and deposition of sand and all this material? Yeah, so this is these questions, we don't have a complete answer to this, but if you go to the lane balance, so according to this what it should happen, because when you construct a dam, so you allow water to, you stop the water, you decrease the velocity, and in response to that what happens, and then you slowly release the water during the lean period. So what happens, all the sediments get settled into the bed, and in response to that what happens in the upstream of dam, you have accumulation of sediments, in the downstream you have virgin water, so again erosion processes starts there, because there is no sediment and water has that capacity to erode. So that's why if you go and try to see in the lean period, downstream of barrage, you may see some potholes, a scouring effect, exactly. So that happens, and also during the high flow season when they open gate, so again sediments transports into the, so erratic transport of sediments occurs. Because in case of Tawa, you will find more sand just downstream of the reservoir, dam, and that is the main source of sand for Bhopal city and other surrounding urban area. Yeah. So that is just after the dam. Yeah, because when they release during the high, and the catchment area, so again this is very, so that also I was thinking about this question. So in Tawa river, if you see, it has a very large catchment area, but at the same time the travel distance it travels to meet Narmada river is not that great, that much. So all the sediments get deposited, and this is why in Tawa river you have lot of sediment. And also if you see the geology of this catchment, so you have more erodible rocks. So the sediment production is very high for the Tawa river catchment. But in the Tawa catchment area, most of the catchment area is under the forest cover. It doesn't matter. So that depends. That also depends upon the geology. What kind of geology you have. If rock can get weathered fast, you will generate sediments. Even with the plants also, I don't know, so I cannot comment. But with plants also, because the expansion of roots and all those things, so basically it generates sediments. Okay. And this meandering of the river, if we see river morphology, the meandering of river also affects the deposition and erosion? No, it's a natural process. It's a natural process. It's a different type of, because in natural system, we cannot have a straight channel. We cannot, even in laboratory, generating a straight channel is very challenging unless you increase the viscosity of the fluid. So meandering is a natural process. तो मुझे लगता है कि सरकार थोड़े दिन में नदियों को भी सीधा कर देगी, क्योंकि रास्ते तो सारे सीधे कर दिए, सारे घाट वाट काट के, तो कुछ दिनों में हो सकता है 50 सालों बाद सारी नदियां सीधी मिलें. तो yeah, so yes. I know that, yes. The river, quantum of the sand for a particular year. Okay, you can drain about so much ton of sand from here. Yeah, so I have not gone through their report, but the way we do is basically you see if you have the very basic things that we don't have, and for many countries we don't have measurement of the bed load, and sediment, particularly sand transport, is a matter of bed load. So what we have measurement of suspended sediment load. So what we do, we approximate some fraction of suspended, you have a suspended load measurement, and then we approximate that, okay, about 10 to 50% or 20% of suspended load is the bed load. That is a very rough estimate. We don't know, okay, and based on that, all these calculations are done. So that means how much sediments river carries and river deposit during the monsoon season.
If we have that estimates, then we can say that, okay, to avoid any kind of aggradation, degradation, so how much sediment river brings, deposits here, that can be mined. That is available for mining. But I don't know how they calculate. This is the ideal way one should do. Yeah, just thanks for talk, Dr. Kumar. We have different geologies all over the country. So, and as you mentioned, some regions of the country, for example, the Himalayas are still rising, tectonically still active. They produce a lot more sediment. So even there sand mining is a big issue, but at least the sediment production capacity of that geology is much higher. But then we also have other parts of the country where we have highly weathered systems which don't have that much sediment to erode anymore, which means that any loss of sand deposits from riverbeds and riverbanks, river islands might be almost irreplaceable, especially since a lot of the sand is already getting trapped in reservoirs. So some parts of the country are particularly prone to almost like an irreplaceable loss of riverine ecosystem habitat because of sand mining. In some other places, perhaps one can think of some form of sustainable sand mining. So is there anything along these lines that can come? Because the demand for sand is so high, and the alternatives to sand manufactured sand by breaking rocks is also destruction of rocks, and more the other real manufactured sand is using building debris and converting it into sand for construction material. But the production of that is very small compared to the natural sand, which is easily available, almost free to people who are basically mining that sand. So profitable that they are willing to kill for it. Is there any way in which we can have, at least for some zones of the country, that this is a sustainable limit of sand mining where the replenishment rate, natural replenishment rate might sort of match with what is being extracted on an annual basis? Yeah, so it's a very good question. And as you said, so very first thing what we know, and you rightly pointed out this, that in some rivers we don't have sediment availability in the catchment, and therefore if you mine further, it is not going to be reversible. So the problem what we have is we don't have sediment budget for our country. That means if we have a sediment budget where we have surplus, where we have deficit, so if we have sediment budget for our river system, I think that can be used to answer your questions. Because we don't know which river is can produce how much of sediments, what is under in deficit condition. So if you know that, that would help us to solve the problem. I don't have any question, but I would like to just, one thing came to my mind. All the urban places are dependent for water on the rivers only in the country. I have almost done some research. So none of the cities does have their own drinking water source. And second thing, all the construction activities happening again in and around urban areas. So we are taking out water and we are taking out sand. I don't think we'll have any future with the rivers, because इसको क्या हिंदी में कहते हैं ना, सॉरी कामधेनु कहते हैं संस्कृत में, और तो ऐसे कोई तो बात तो है नहीं है, लगातार कुछ देते ही रहें. So I think one should seriously think about these issues, because finally we are going to kill the rivers. सर मेरा एक क्वेश्चन था. 2012 के बाद से मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है कि बारिश का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गया है. कई बार 3 से 4 दिन में 20% 10% सीजन का रेनफॉल हो जाता है. उससे जो नदियाँ छोटी थी वो अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा सैंड डिपॉजिट भी रिवर बैंक्स में हो रहा है. जहाँ पहले कुंड हुआ करते थे, मैंने कभी उनमें पानी देखा था हमेशा ही, और अब वहाँ पर रेत भर गई है क्योंकि बारिश का पैटर्न चेंज हुआ है. वो बहुत बड़ा रीज़न है उसके पीछे. तो इसे आप कैसे देखते हैं? अगर ये हुआ है तो आई वुड लाइक टू सी दैट कि कहाँ पे रिवर की विड्थ चेंज हुई है. इट्स बिकॉज ऑफ द इरेटिक चेंज इन द रेनफॉल पैटर्न. बैतूल में तवा रिवर जहाँ से ओरिजिन होता है, छिंदवाड़ा बैतूल जो पूरा पैच है, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत कॉमनली आप देख सकते हैं. I'll visit that, because if this happens, then that means see, there is no boat, but I'll tell you.
this example is only for the, only for the mobile bed river, the river which flows on sediment. So the river width, depth and slope is set by the discharge and sediment. Sediment contribution we don't know. As I said, we don't have measurement of bed load. So what we know is it follows a law which is called Lecy's law. So width and depth goes as a square root of discharge. Okay, that means if some river is showing a increasing of its width, that means the discharge might have increased. And if you say that, if you can quantify that, so the erratic rain that is taking place, it carries about order or more than a 2 order of magnitude change in discharge, then we can try to explain these questions. But I don't know, because if it is not a significant, if it is not significant change in discharge, I don't think it is going to have. Thank you, sir. Yeah. Yes, yes. We are running a little late, sir, so can we? So please accept the memento for the token of thanks. Thank you so much, sir, for the informative session. Let's move ahead with the sixth technical session of today. We continue our conversation on rivers, perhaps the most fundamental natural infrastructure that sustains human settlements. Throughout history, civilizations have flourished around rivers. In many ways, rivers are the original lifelines of cities. In our ancient history, all the settlements revolved around rivers. Yet today, many urban rivers are under immense stress. Encroachment, pollution, altered drainage systems, shrinking floodplains, and unchecked development have transformed vibrant river ecosystems into degraded waterways struggling to survive. Today's session invites us to look beyond maps and policy documents and understand rivers through observations from the field, through the realities witnessed on the ground by those who study and work closely with urban landscapes. To chair this session, we are privileged to have us with Dr. Fayaz A. Khudsar, in-charge scientist of Biodiversity Parks Program at the Center for Environmental Management for Degraded Ecosystem, University of Delhi. Dr. Khudsar is widely recognized for his pioneering work. Please welcome. Yes, yes, yes. It is my pleasure to introduce our speaker, Mr. Saurabh Popley, Associate Professor of Landscape Architecture at the School of Planning and Architecture Planning. Please join me in warmly welcoming Mr. Saurabh Popley for his session on Dying Rivers, City's Lifeline on the Waterfront, Observations from the Field. Welcome, sir. Welcome. Sir, yes, sir. Sir, so we would like to welcome you with a planter. There are not enough plants in your garden. These are the memories we keep. Sir, I hand over the stage to you. Yeah, you want it. एक नई कहानी जगदीश ने हमें कंपेल किया कि तुम सेंट्रल इंडिया में आए और अंग्रेज़ी में बोलते हो और दिल की बात बोलो। शायद नदियों की बात दिल की बात होती है क्योंकि उसको माँ भी कहते हैं। अब मैं थोड़ी सी बस क्योंकि डर लग रहा है, इधर एक उधर बीच में सब मेरी तरफ देख रहे हैं, 2 घंटे लेट चल। नदियों को अभी उन्होंने, गौरव ने भी बोला, नदियों को जानने के लिए भी जानना चाहिए कि नदियों को देखें कैसे। और नदियों को अक्सर हाँ सारे लोग हैं वो नदियों को बहती हुई धारा देखते हैं, लेकिन 25 साल से जब नदियों को समझने की कोशिश की तो सिर्फ धारा नहीं है। गौरव ने एक बार बोला एक टर्म, नदी एक सिस्टम है। तो सिस्टम है क्या? क्या सिर्फ नदी की बहती धारा को देख के नदी कह सकेंगे? क्या उस नदी को अच्छा कर सकेंगे? वो सैंड माइनिंग हो, जो भी इशू हो, या नदी के उस सिस्टम को देखना होगा। जैसे इंसानी जिसमें सिर है, 2 हाथ है, उसके हार्ट हैं, उसी तरह नदी में भी उसका सिर है, उसका एक मॉर्फोलॉजी है, उसका हार्ट है। और जब तक
हम कहें मेरा हार्ट फेल हो रहा है तो सिर तो ठीक चल रहा है, तो इंसानी ज़िंदगी ठीक नहीं चलेगी। उसी तरह नदी का जो सिस्टम है उस सबको ठीक होना होगा, क्योंकि सबके बीच सीरियस इकोलॉजिकल इंटीग्रेशन है। वो क्या होता है? रिवर चैनल सब लोग जानते हैं, पानी जो बहता हुआ है उसको फ्लड वे, वाटर वे कहते हैं। उसके ऊपर एक राइपेरियन जोन होता है, उसको अक्सर मैं कहता हूँ कि नदी उसको हमेशा किस करती रहती है, पानी आया वापस गया। एक्चुअली नेचुरल आरओ है नदी का वो राइपेरियन जोन। उसके ऊपर फ्लड प्लेन है, जो यंग फ्लड प्लेन है जिसको एक्टिव फ्लड प्लेन कहते हैं, कुछ ओल्ड एल्यूवियम फ्लड प्लेन है। उसके ऊपर फ्लड प्लेन में ही अपलैंड है, उसके ऊपर एम्बैंकमेंट है। इन सब को जब एक साथ मिलाते हैं तो नदी का सिस्टम बनता है। और कोई भी अपने ख्याल में या ख्वाब में चाहता है कि नदी बेहतर हो, जिंदा हो, चल पड़े, तो नदी के इन सारे सिस्टम जिन जिन भाग का मैंने नाम लिया है उनके ऊपर काम करना होगा। तो हमारे पोपली जी हैं जो अपनी नज़र से शहर में बहने वाली नदी को देखेंगे और हमें कुछ बताने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है। Thank you very much. Good afternoon to everybody. I start this by remembering two important things, two important beings. One, a little bird I saw yesterday trying desperately to drink water out of a bankrupt water tank. A tap that was attached to a tank in my village. And the other, my guru who passed away 3 years ago, almost to the day. His anniversary is 3 days away. So together we worked on rivers. And today I'm going to speak a bit about what I learned as I started to work on rivers. I have some good news for you and some bad news. The good news first, I had 85 slides, and the bad news, my laptop crashed. So I only have 10 slides. So that's good news. But I will take 30 minutes. So thank you. 20 minutes? Only 20 minutes and 2 minutes further when I drink well. Acha, okay. All right, fine. So I will start by discussing why I consider it's a rather provocative title, Dying Rivers and Notes from the Field. Many of you might feel provoked by my title, but I think it's an apt title. And the reason why I will tell you in a bit. Over the last few weeks, we've been working on, over the last few years actually, we've been working on the headwaters of many of the important streams that feed the Ganga. Murthy Sahab is quick to remind everybody that 40% of the water of the Gangetic system comes from Madhya Pradesh and the central Indian watershed. And all of these are sustained by the headwaters of all these streams. This is a typical, this is almost like a midstream section of one of the important tributaries of the Betwa River in Raisen district. And this is what I would consider to be a rather degraded riparian forest. It's clearly riparian because you can identify, a number of species. There are old growth trees, so it does certainly have, relict fragments of an old growth forest, but it is also degraded, and you can see that, both the landscape has changed, has undergone considerable change. We can go to the next slide, please. So the important thing that I'm going to talk to you about today is that why the streams, why I consider the streams to be dying is because the headwaters are now becoming desert-like. And the increasing aridity of the headwaters means, there's a lot of, I speak with a lot of foreboding about the, condition of our headwaters. Ultimately, the health of our streams depends upon not only what happens to them midsection and later on in the section, but also what happens in the headwaters. These are the headwaters of the Betwa. The Betwa is an important tributary of the Yamuna and therefore the Gangetic system. As you will notice that the only trees left standing in this, what was just a few years ago, very recently, fairly old growth forest. It wasn't a primary forest, but it was, old growth forest. Established over at least the last 100, 150 years. And what we see over here is actually the only mahua trees are standing. And the reason why the mahua trees are standing is because mahua is a riparian species. And mahua
is the indicator that the villagers, that the tribals use to indicate the presence of groundwater. In this entire landscape where we found not a single drop, almost not a single drop of flowing water, and only a few pools of water. So the important thing about our rivers is that our rivers have over time, and not only because of atmospheric climatic effects, but also because of other reasons, anthropogenic reasons, they have become intermittent rivers and ephemeral streams. Most of our first, second, third, fourth order streams are now ephemeral, intermittent. And it's only the lower orders that are actually, that are permanent. So can we go to the next slide, please? So what we see here is that the entire forest has been cleared. And these are the headwaters. So this is the area, and I'll come to a sketch of how these headwaters work. So if you don't understand how the headwaters work and what the importance of the forests in the headwaters is, then we'll easily miss the woods for the trees. Where I really impressed by the last speaker, except like that, I'd like to make an exception to the remark that once we know the sediment budget, we can extract sediment. I take exception to that, because while the sediment will accumulate in the monsoon, it is post-monsoon that the wildlife will come for nesting, and that is the precise time when you will disturb it, even if you happen to know the sediment budget. And the difficulty with all our riparian, all our river restoration projects are inherently misplaced and are doomed to fail for the simple reason that we don't understand the relationship between wildlife and the aquifer. Unless we consider that there is an intrinsic and an intimate relationship between the aquifer and the wildlife and the herbivory, especially the mega herbivory, the free-ranging herbivory that roams the forests, it is impossible to maintain a healthy aquifer. I'll come to that in a bit. Can we go to the next slide, please? Next slide, please. Yeah, so these are the headwaters again of the Betwa River at Jiri. We'll go to the next slide, please. Do we have a pointer? Yeah. Okay, so most of the trees that you see here are either terminalia or they are mahua. Most of them are mahua. Next, please. Next, please. Okay, so what you see is actually the Vindhyan system. So these are Archean sandstone, and what you see, the slopes that you see are talus cones. They are slopes that are made out of the weathered material that has flown down these slopes over approximately 1.2 billion years. And over these have now been they have been colonized by fairly stable systems of vegetation. And the problem with the problem is that we don't, with anthropogenic activity, with clearing, with forest clearing, with the setting up of forest villages, with the setting up of, the lumber trade, with the setting up of agriculture, settled agriculture and so on, what's happened is that there's also been an ingress of, and a very widespread ingress of invasive plants. And this entire forest is overrun by a range of invasive plants. And the reason that you can't have healthy aquifers is because the invasive plants are rampant. And and therefore, since the old growth forests are gone, your grasslands are gone, your old growth, your deep-rooted grasses are gone, you can't have a healthy aquifer. So therefore, your sediment load in the rivers continues to increase. Next slide, please. Next slide. This is all from Jiri, where we were working 2 weeks ago. Next slide, please. Yeah, next slide. Okay, so you see that the Vindhyan system is exposed, and the basalt that overlaid it 65 million years ago with the onset of the volcanic activity over the Vindhyan system, that flowed down and created a rich basin, a rich basaltic soil layer, which promoted this the development of expansion of agriculture. And this is why the societies around these rivers, central Indian rivers, have always been very prosperous. Next slide, please. These are the talus cones. These are talus slopes. Next slide. Next. Okay. So this is the situation at the headwaters. You can see that the entire landscape is bare. It has been cleared recently.
And I spoke to the farmer that lived nearby. And can you go to the next slide? And I asked him that, where do you get your water? The water is dirty. There's no flowing water anywhere in the landscape. So I said, where do you get your water? Next slide, please. And this is the answer. The answer is that this guy is not a local. He has migrated here. He migrated here a few years ago. So these are settled villages, and our headwaters and the forests around our headwaters continue to be colonized by people who weren't originally there. And as they continue to colonize them, they continue to clear those forests. And the more clearing there is, the more disturbance there is, and the more the original, therefore the vegetational system can't, your biocrusts are disturbed, your soil cover is disturbed, your vegetational profiles are disturbed. And therefore, next slide, please. And therefore, the landscape looks like this. It's almost semi-arid. Now, these used to be lush forests, and the Vindhyan system, the escarpment. This is just a few kilometers. This is actually on the escarpment of the Narmada Valley, and this is where the ecotone. This is an ecotone. So actually, there used to be a lot more moisture in these forests than there was, further away, as you moved away down the Malwa system. Next slide, please. And so I drew some sections, and this is how it, I also have many slides that explain the intensity of the scarcity of water. In my village, children as young as 8 have to go 3 kilometers to fetch their daily budget of water, which is not more than 5 liters per person. It's 5 liters of water per person, and they have to get it from 3 kilometers away. There's no water in the entire village. There is only each farmer. I know farmers who have 19 dead borewells on their farms, and they are small holders. These are people who have 1 acre farms. They are people who are landless. They are Dalits. They have 1 acre, and they have 19 borewells on their farm, and not one bringing fresh water. And so they have to collect water from 3 kilometers away. And the reason and the problem is that when we settled this landscape, we forgot that these landscapes are settled on aquifers with a specific yield of just 1%. And our forms of agriculture that we adapted are attuned to green revolution landscapes where the aquifer yield is as much as 30%, as much as 15% at the very least. So because our aquifers cannot support that landscape, and I had many slides from one of my neighbors who is now doing commercial plantation. I met him yesterday and asked him, how are you doing? And he said that, I'm no longer able to draw the 50,000 liters of water I need per day. There are farmers who are drawing 50,000 liters of water per day. And there are children going without water who have to migrate. I know 12 families who have migrated out of my village in the last 2 years. And there are people who are drawing water from 600 feet below surface on free electricity. 50,000 liters per day, right? Now the problem with this is that the budgeting for water, the reason why you cannot have a healthy river is because, and the reason why your rivers are dying is because your aquifers are doomed to die. Your aquifers are doomed to die because they're modeled on an agriculture that can't support them. Where you have a specific yield that's 1%, you have, you are harvesting 600 times the amount of water that is the annual recharge. Even if you were to recharge every single drop into the aquifer, you are still drawing 600 times of what you need, of what the aquifer can provide. How will we not die? So I have in my presentation fairly detailed, explorations of. Can you go to the next slide? Oh, you have to rotate that. Can you rotate that? Or go to the next slide otherwise. Can you rotate that? There's a rotate button. Okay, so this is a typical Vindhyan system. It's an escarpment. This is a hogback. This is called a cuesta or a hogback. This is where the headwaters are always located. All the headwaters of all the principal tributaries of the Yamuna, of the Gangetic system, are always on this side. They're always on the northern side. On the southern side is the Narmada Valley, is in the Rift Valley. On this side, on the northern side, you have deep alluvium. I mean, you have deep basaltic soils. You have black cotton soil. You also have red soils. But you also have, very weak aquifers. You have aquifers that are only giving, 1 to 3%. And you had rich forests. So these rich forests collected
rainfall during the monsoon months and provided rainfall through the year, provided a stable base flow, a stable E-flow throughout the year to all these streams. And now what we have is that we have people who are sitting here drawing 600 times the amount of water that can be recharged, possibly the maximum amount of water that can be recharged. So can somebody tell me how these rivers are not dying? So what you have is now you have disturbance on the surface, you have invasive plants that won't let water percolate, you have an abundance of human activity and anthropogenic activities. I asked that farmer whose Aadhaar card I had attached, I asked him, where do you get your water? He says, no problem of water, we get 2 inches of water. So he's actually drawing about, he's pulling out about 300 liters per minute out of the aquifer. And he's doing moong ki kheti and, he's farming moong in the middle of summer. So he doesn't care about water and he's a tribal farmer. So, this whole dichotomy that we have of this, we've romanticized certain notions about, virtuous behavior and vicious behavior is all now skewed. And we'll have to take a much clearer-eyed view about how this goes forward. So anyway, let me explain this sketch to you. Do I have time, sir? Yes. Do you have time? Okay, so the crests, the tops of these hills are exposed sandstone. They're heavily weathered. Most of the forests were lost, I think historically during the colonial period. What you do have on the gentler slopes, on which all these headwaters of Betwa, Parbati, Sindh, Kali Sindh, etc. All of these rivers are, even the smaller rivers that we have 9 rivers in Bhopal. We have, Uljhavan, we have Shireen, we have Kolhans, we have Kalyasot, we have Kerwa, we have, Patra, we have so many rivers. And we studied all these. And the problem is that, when we studied the master plans of all our cities, and I'm speaking from a planning school, and I talk to all I have colleagues, respected colleagues from the planning department sitting here. We talk to the TNCP. There's no mention of the river. And we ask, where is the mention of the word nature? Where's the mention of the word biodiversity? The word nature is mentioned 7 times in the entire 225-page document of the Bhopal development plan. And not even once as a noun. Never as a noun. It's always a metaphor. It's always, the nature of politics, the nature of economy, etc. So the point I want to make is that because we don't understand nature, and because we tend to see rivers, and we tend to see water, and we tend to see the problem of agriculture as a mechanistic problem, as a problem of mechanistic science, that do this and that will happen, or do this, take this much and the river will bring it back. I'm sorry, you're missing, unless you have free-ranging herbivory on this landscape, and the only way you can sustain that is by having healthy forests and healthy grasslands. And if you can't have healthy grasslands on this landscape, you can't have healthy aquifers. Because otherwise the other model is simply, unsustainable, and it can be very easily proven that the water balance calculation will just simply tell you how. So, should I wind up? A minute? Okay. So we had broad-leaved dry deciduous forests. Typically they would shed a lot of leaves. Those leaves would cool the ground, keep the ground cool. They would create a small microclimate in which a lot of insects would thrive. So you would have your wildlife. You had birds. The birds would bring phosphorus. There's no other source of phosphorus. The phosphorus would nourish the forests. The forests would continue to grow. The herbivores would continue to browse, and that's how you had a healthy ecosystem. That's how you had clean rivers. That's how you had clean forests. And that entire system is completely missing. Our attention to detail on biodiversity will not save us unless we understand that these are ecosystems that are complex systems that require a very light touch. You put a heavy touch, and you'll end up disturbing the system more than you anticipated. So I have many respected and senior colleagues in the forest department with me today, and also people whose work I greatly admire. And I hope I'm not saying too much, but I personally feel that we are probably the last generation to see flowing rivers. And on this very sad note, I'd like to end. Thank you. Thank you very much. A small and beautiful presentation
by Popli Saab. Now floor is open for questions. And I think 3 questions would be all right? 3 questions. Yeah, hi, Meeta again. So, what is the way to rejuvenate or bring back those water bodies, especially in the rural areas? Is there any methodology by which we can bring back? I'll direct this question to Dr. Payas. He's much better qualified than I am. मैडम मैं फिर से हिंदी में ही बोलूँगा मैं बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि पानी दिल का मामला है जी जी बिल्कुल बिल्कुल और हम जानना चाहिए कि शहर में भी जो हमारी बावड़ियाँ हुआ करती थी जो अभी नज़र नहीं आती उनको भी अगर हम वापस लाना चाहें तो क्या वो तरीका है जो हम एज अ पब्लिक मतलब मैं सरकार की तरफ से नहीं बोल रही एज अ पब्लिक हम उसके लिए क्या कर सकते हैं तो हमने क्या किया कि वो ख़त्म हो गई पहले तो ये जानना होगा मैडम भाई क्या करना है तभी तो पता चलेगा देखिए क्विकली मैं आपको बताऊं कि जैसे ही इन्वायरमेंट का नाम आता है जैसे रिस्टोरेशन का नाम आता है विथ ऑल गुड इंटेंशन क्विकली वी कम डाउन टू प्लांटेशन द डे यू विल स्टॉप प्लांटेशन यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट what you need to stop plantation afforestation reforestation a very bad idea in the entire landscape what you need to do it you need to do and practice ecological restoration what do you mean by it ecological restoration means you are helping an ecosystem to recover which is degraded damaged or even lost how you do it it is not your will and my will it is will of the site how you decide the site when you have a site you look at the ecological history of the site that is the first and foremost what you call requirement and prerequisite to initiate any ecological restoration. And then you try to find out nearest possible reference ecosystem, right? Then on the basis of available resource, you start working on the what prescription you prepare for the site. And that is the way when you work, everything will be restored. So what is the problem for restoration? You know, what I see since last many years looking at various rivers, what I see that there are 2-3 very major issues quickly I will address, since Poplis have asked me. A river in the hillocks originates from springs, you know, springs. And how springs functions? When you have rain, water goes inside, due to hydrostatic pressure, water comes out what you call as a spring. Then in valleys, surface runoff flows. Many surface runoff comes together, makes a catchment and creates a small stream. Many small stream meets and make a small river, and many small river makes big river. And many catchment makes what you call watershed, and the watershed up to the mouth of the river makes river basin. It's very simple. So how do you see, sitting in Bhopal or sitting in somewhere, Raisen, what he suggested, Betwa cannot be cured. We need to look at the origin, entire catchment, watershed. The problem is entire catchment is disturbed, a spring is dead. The surface runoff has been either diverted due to many construction or surface runoff reduced drastically due to many reasons, as he suggested, loss of forest cover. That's a very important issue. Invasive plant species. What happens when you have a lot of invasive species? What we call as IAS, invasive alien species. What happens? When you have invasive species like Prosopis juliflora, what you call as Bilaiti kicker, brought by British 200 years ago, when you have Bilaiti kicker all around, the water budget of Bilaiti kicker is very bad. Many papers have been published. Lantana. So all the VD species invasive came from Mexico or South America, has very bad water budget. The amount of water it takes, it never produces water vapor and it never comes back in the form of rain. So that invasive species create problem. There is no ground cover. At many places I have seen in riparian zone very good grass cover, but in upper area, upper stretch, I have seen all farmland, no grass cover. And then surface runoff, line of surface runoff, I have not seen in any photograph that water is flowing a small, what you call channel has been made. In any single photograph I have not seen. Then where surface runoff is going, we don't know. And how aquifer will get recharged until unless you bring all the surface runoff either to the Bavali or to the aquifers. Only then it will be recharged. Surface runoff need to be stopped for a moment. How it will be recharged and how you stop?
You stop through creating wetland and water body. How you create wetland? It is not that your idea to dig a pit and say it is a wetland. There are indicators. What are the indicators? You have like Typha angustifolia, Phragmites. You have many sages suggesting you that subsoil aquifer is very high. So there you create wetland and bring those surface runoff so that your aquifer will be recharged. Only then river may flow, may become life for some time. I think Dr. Fayaz has said it very well. I think the point is that, you know, if at our current level of consumption, there is no river in this country that you can save in the next 20 years. At our current level of consumption, we have consumed more in 5 years than we have consumed in 75 years before that. And our rate of consumption is accelerating at a rate that is completely, I mean, the word sustainable is, I mean, it can't be a more, you know, a bigger oxymoron than sustainable development. Right now, I think the problem is overconsumption. The problem is that we have completely divorced from the reality of our, you know, our society is wired, our economics is wired in such a way that we are divorced. We are, you know, it forces us, it helps us not to see the realities of the rural areas on which we are parasites. And therefore, unless this parasitism is addressed, and the reason and the way we can do that, fundamental way we can do that is by true cost accounting. I tell all my economist friends that unless India moves to a true cost accounting model of economics, there is no way, there's nothing we can do. We are going headlong into this sort of disaster. I have only one thing to say. For all the urban development that we are planning and the way, with the speed that is happening, one has to seriously think about water. And then already World Bank has projected the entire central Indian is going to really, a biggest issue will be the drinking water by 2050. So whatever planning we are do at the urban level, be it infrastructure, be it buildings or whatever it can be, without water things cannot move on. And sorry to say, I have read all the document of more than 1,000 pages of smart cities, which is I think nowadays seen to nowhere. Everything was there other than water. So one has to do a water planning and water budgeting. That's all. Thank you. Thank you, पोपली साहब. Actually, पोपली साहब ने एक बात कही कि हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं. Just 30 सेकेंड में लूँगा. कमा भी नहीं रहे हैं. प्रॉब्लम ये है ना, नेचर में खर्च तो कर रहे हैं, हम कमा भी नहीं रहे हैं कि पानी कमा लें, जंगल कमा लें, घास कमा लें. कमाई कहाँ है? सिर्फ खर्च ही खर्च है. तो अगर खर्च बिना कमाई के करेंगे, अगर खर्च 1 रुपये होता, अठन्नी कमाई होती तब भी मान लेते, चवन्नी भी कमाई नहीं. तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना. आप शायद कुछ पिछले 1 महीने से मेरे कॉलोनी में नर्मदा का पानी नहीं आ रहा. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ द भोपालाइट्स कैन अग्री विथ मी. वी आर गेटिंग ओनली 50% ऑफ वाटर दैट इज अर्लियर a month before it was being supplied. So we are running out of water by as little as 3 years. There will be no water. There is already no water in the villages. We shift our focus from ecosystems themselves to something equally important, the stories we tell about them. Climate change, water scarcity, floods, droughts, and environmental degradation are often discussed through data, scientific reports, and policy framework. While these are essential, they tell only part of the story. Across the world, successful environmental action has shown that resilience is strongest when scientific knowledge is complemented by public participation, local knowledge, and inclusive dialogue. Today's session invites us to reflect on an important question. How do we build a climate-resilient India by ensuring that knowledge, narratives, and local voices become central to environmental decision-making?
To chair this session, we are privileged to have with us Ms. Anuradha Shankar, IPS retired, former Special Director General of Police, Madhya Pradesh. Anuradha Shankar ma'am is retired DGP from 1990 batch of Madhya Pradesh IPS cadre, widely recognized for her reform-oriented leadership and honors like President's Police Medal for Guarantee. We welcome you, ma'am. It is now my pleasure to introduce our speaker, Mr. Ajay Mohan, Managing Editor of India Water Portal, Bengaluru. At India Water Portal, Ajay leads the Hindi editorial portfolio, working closely with the team to develop in-depth, evidence-based stories that make water-related knowledge accessible to a wider knowledge. Welcome you, sir. Please accept the planter as well. I hand over the stage to Mr. Ajay Mohan and Ms. Anuradha Shankar for the presentation on why water narrative, public knowledge, and local nothing, voices you will matter speak. for climate resilient India. मैं सिर्फ आपको आमंत्रित करना चाहती थी बोलने के लिए. सो अपनी बात शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा डॉक्टर फयाज साहब को और पोपली जी को, क्योंकि उन्होंने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, पहले से ही वाटर का नैरेटिव सेट कर दिया है। तो मेरा थोड़ा सा टाइम बच गया कि मैं पहले वाटर की बात करूं और फिर अपने टॉपिक पर आऊं। तो बात यहाँ पर यह है कि पानी, जो मेरा जो टॉपिक है वो वाई वाटर नैरेटिव्स, पब्लिक नॉलेज एंड लोकल वॉइस मैटर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडिया। तो इसके पहले हमें कुछ थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है, और उसको समझने के लिए आप हमसे बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं, आपने इस पूरे सेक्टर में काफ़ी सालों से काम किया है और मेरा काम रहा है इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाने का, वो मैं पिछले 20 सालों से करता आया हूं और आप लोग इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो सबसे पहले मेरा एक निवेदन है कि आप इस समय थोड़ी देर के लिए अपने आप को एक्सपर्ट ना समझ के एक कॉमन मैन को अपने आप में अपने अंदर ढाल लें, तो फिर इस सेशन को समझने में ज़्यादा मतलब मुझे भी बताने में आसानी रहेगी। Not here. यस, सो सॉरी, तो बात जब हम लोग रेजिलिएंट सिटी की आते हैं तो बात करते हैं जब, तो पानी से सीधा ताल्लुक़ होता है। तो आज सुबह जब मैं बैंगलोर से भोपाल लैंड कर रहा था तो मैंने ये पिक्चर खींची थी और ये भोपाल की ही पिक्चर है एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग गुड टू सी द वाटर बॉडीज़ एटलीस्ट हियर, क्योंकि इससे पहले एक काम से मैं दिल्ली गया था तो यमुना रिवर के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। तो थैंक यू भोपाल सबसे पहले कि एटलीस्ट अभी कुछ बचा हुआ है, आगे जो रहेगा वो तो बात की बात है फ़िलहाल। तो हम मतलब कॉमन मैन की बात कर रहे हैं हम, कि जब किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम मतलब इम्पैक्ट को कब महसूस करते हैं, ये तभी होता है जब एक या तो सूखा पड़ने लगा है या फिर अचानक से बाढ़ आ गई, बारिश हो गई, स्नोफॉल ज़्यादा हो गया। तो जितनी भी एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं तभी आम आदमी जो है एकदम से इसके बारे में जागरूक होता है और वो तुरंत सर्च करने लगता है कि अच्छा क्या हुआ। अभी रिसेंटली का जो हमारा एक मेन खबर आई थी बांदा से, तो बांदा वॉज एक्चुअली मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया था। और आपको बताएं कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया उस दिन जाके वहाँ पे बांदा से लाइव कर रहे थे। तो लाइव इन द सेंस, अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का काफिला जा रहा है तो उसको लाइव करना या उनकी भाषण को लाइव करना, यस हम समझ सकते हैं, लेकिन हीट स्ट्रेस है। अब वहाँ पे आप कितना गर्म हो रहा है बांदा, आप कैसे कैमरे में दिखाएंगे, ठीक है। तो वो कुछ नहीं था, बस एक नैरेटिव सेट करना था कि कहाँ पर हम फेल हो गए, राइट। तो मेन स्ट्रीम मीडिया जो होता है वो मेनली ऐसे मौक़ों की तलाश में रहता है जहाँ पर हाइप क्रिएट किया जा सके। और
इस चक्कर में क्या होता है कि जो एक नॉलेज है इस पर्टिकुलर जितना भी ये पूरा सेक्टर है, चाहे वो वाटर हो, चाहे क्लाइमेट हो, बायोडाइवर्सिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इतना सब जो हमारे सामने है, जो हमने पढ़ के आए हैं, उसकी जो कोर नॉलेज है वो आम जनता तक नहीं पहुंच पाती है। और उसमें हमारी गलती नहीं है। वो गलती क्या हुआ कि हम लोग जब छोटे थे, बड़े हो रहे थे, तो हमें सिखाया गया कि भाई हम जहाँ रह रहे हैं, जिस धरती पर रह रहे हैं, उसके नीचे पहले तो मिट्टी है, फिर पत्थर है, फिर पानी है। तो हमको बताया गया कि पानी पानी है नीचे, राइट। किसी ने हमको ये नहीं बताया कि नीचे एक्वेफर्स हैं, एक्वीफर्स हैं, और वो एक्वीफर अगर यहाँ पर हम डिस्टर्ब करेंगे तो इट कैन डिस्टर्ब एटलीस्ट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेयर, वहाँ तक पानी की क्राइसिस हो सकती है। तो ये जानकारी आपने अगर देखी हो टीवी में तो इट्स वेरी गुड, आई विल अप्रिशिएट देयर एफर्ट्स, बट किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब नहीं दिखाया जाता है। उनका क्या होता है, एक नैरेटिव सेट करना है कहीं ना कहीं से, या तो प्रो गवर्नमेंट या एंटी गवर्नमेंट। बट जो ज़रूरी है आज की डेट में, मतलब हमें पता है कि ये ज़रूरी है, इसके बावजूद हम लोग जो है वो पॉलिटिकल नैरेटिव की तरफ चले जाते हैं। और यही कारण होता है कि हम लोग खोजते रह जाते हैं कि लास्ट हमने कौन सी न्यूज़ पढ़ी थी। अभी मैंने बांदा का जिक्र किया है, इससे पहले हो सकता है कुछ जब बारिश के सीज़न में उत्तराखंड में जो रेनफॉल्स आया था वो उसकी बात कर सकते हैं, या फिर जो हैवी स्नोफॉल हुआ। तो हम लोगों को रिकॉल करने में, अभी हम यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, अगर 10 खबरें भी अगर गिनाए ना तो आई एम डैम श्योर कि शायद बहुत मुश्किल होगा, राइट। तो ये बड़ी चुनौती है हमारे सामने, बहुत बड़ी चुनौती है एक्चुअली, कि सही इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही है। और वो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जब ये इन्फॉर्मेशन कब आती है, सिर्फ जब कुछ बड़ा होता है। तो ओवरऑल ये जो मेरा कॉन्टेक्स्ट अभी तक था कि मेन स्ट्रीम मीडिया they just inform, but the knowledge portals who are working across India, they always try to educate the people। और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि आप अगर मतलब सिर्फ इंडिया वाटर पोर्टल की बात नहीं करेंगे, मैं बहुत सारे और चैनल्स हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। और इन सभी वेबसाइट्स का, इन सभी न्यूज़ मैगजीन्स का एक ही मतलब मकसद होता है, जो हम नैरेटिव सेट करें वो एजुकेट करने का करें, ना कि किसी के प्रो और एंटी का करें। कि हम अगर किसी को पानी के बारे में बता रहे हैं तो हमारा ये मकसद रहेगा कि अगर ये बावड़ी सूख रही है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, इसकी हिस्ट्री, इसकी ज्योग्राफी, इसका हाइड्रोलॉजी, एवरीथिंग वी हैव टू डिस्क्राइब इट इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो उससे क्या होता है, लोगों में एक उत्साह बढ़ता है कि हाँ ये पढ़ने लायक चीज़ है, तब वहीं से उनका एक एक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक्शन इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग कि आज मेरे भाई ने या मेरे दोस्त ने या मेरी बेटी ने खबर पढ़ी और कल से वो क्रांतिकारी बन गए कि नहीं हम जा रहे हैं नदी को बचाने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी आर नॉट एट ऑल, वी कैन नॉट इवन एक्सपेक्ट द एक्शन लाइक ये इस टाइप के एक्शंस जो होते हैं। अगर हम थोड़ा सा पानी बचा लेते हैं, वही एक्शन इज़ इनफ, राइट। तो कई बार क्या होता है कि सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो होते हैं, इवन हम लोग भी डेटा के थ्रू बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। और डेटा के थ्रू दिखाते, जब कोई चीज़ हम दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हम लोगों के मन में रहता है कि पता नहीं लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसीलिए कई बार इस टाइप के मैप्स भी सिर्फ तभी आते हैं जब एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। रेगुलरली यू वोंट सी दिस काइंड ऑफ मैप्स। जबकि सच तो ये है कि इस टाइप के मैप्स हम क्लास 5th में भी पढ़ चुके थे NCERT की बुक्स में। बच्चों को पता है इसको कैसे समझना है, कैसे इसके पैटर्न को समझना है, लेकिन हमने उनकी ज्ञान को वहीं पर सप्रेस कर दिया। बस यहाँ से रट लो और पढ़ के एग्ज़ाम दे दो। जब तक वो बड़े हुए, वो न्यूज़ को समझने के लायक हुए, तब तक वो सारी इन्फॉर्मेशन वैनिश हो चुकी थी। और यही कारण है शायद कि लोग इस टाइप के डेटास को जो विजुलाइज करके आते हैं उसको बहुत ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, ख़ास तौर से जो चैनल वाले हैं। हालांकि कुछ बड़े मीडिया हाउसेस हैं जो पैटर्न को समझाने के लिए विजुलाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं आज, और वो कि एक अच्छी बात भी है। और बट मेरा मानना ये है कि डेटा एक आपको इन्फॉर्म कर सकता है, यस, बट कनेक्ट नहीं कर सकता है। कनेक्ट करने के लिए आपको विजुलाइज करना ही पड़ेगा उससे। और इसके अंदर ह्यूमन एंगल नहीं निकाल सकता है डेटा। ह्यूमन एंगल निकालने के लिए हमको नैरेटिव सेट करना ही पड़ता है।
बात अगर पानी की आए तो पानी क्या, बाकी क्लाइमेट के जो फैक्टर्स हैं क्लाइमेट से जुड़े हुए, तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो मतलब ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप इनकी रिपोर्ट पढ़ें तो आई एम मतलब श्योर कि अगर जब आप एक भी हेडलाइन ऊपर पढ़ते हैं तो ऊपर से नीचे लेकर लास्ट शब्द तक आपको पढ़ने का मन करता है। क्यों? उसका रीज़न यही है क्योंकि इन सभी का मकसद एक होता है कि नॉलेज दो तो प्रॉपर दो, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। तो दीज आर जस्ट सम स्क्रीनशॉट आई हैव जस्ट गिवन। तो चाहे वो बायोडाइवर्सिटी की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे हीट स्ट्रेस की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये नैरेटिव सेट किए जाते हैं किसी मतलब सरकार या पार्टी के अगेंस्ट नहीं, बल्कि नैरेटिव सेट करना है टू एजुकेट द पीपल। और मकसद क्या है, मतलब इन ये जितने सारे पोर्टल्स आपने देखे उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि पानी के साथ एक रिश्ता बैठाना। क्यों? क्योंकि आम तौर पर क्या होता है, एक पिक्चर जो हम देख रहे हैं ऊपर, एक महिला ये मध्य प्रदेश की ही है, आई थिंक अलीराजपुर की है पिक्चर, जहाँ पे एक महिला जो है वो तालाब से रोज़ पानी लेके आ रही है, दिखाया जा रहा है। अब जिस दिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे तालाब सिकुड़ने लगता है, तो इनको महसूस हो जाता है कि हाँ अब आने वाले समय में हमारे लिए कठिनाई होने वाली है। इसी तरह से जब आप कुएं से पानी निकालते हैं, तब जब वाटर लेवल नीचे जाता है तब हमें समझ में आ जाता है कि हाँ अब संकट आने वाला है। दैट मीन्स इन ये जो लेफ्ट में तीनों पिक्चर्स हैं, इन तीनों जगहों पर पानी का हमारे साथ एक रिश्ता है, राइट। लेकिन जो हमारे घर के अंदर जो टैप लगा है वहाँ पे पानी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। हमने नल खोला, आएगा, बंद किया, दैट्स इट। और उसके बाद अगर नहीं आया तो वाटर टैंकर बुलाया, ऊपर चढ़ गया, पानी आ गया। तो पानी के साथ एक तरफा रिश्ता को हम दो तरफा बनाने की कोशिश इस प्रकार के नैरेटिव सेट करने में, मतलब हमारा जो एक मकसद रहता है कि पानी के साथ एक दो तरफा रिश्ता उन लोगों के लिए भी बनाएं, उन लोगों के जहन में भी बनाएं जो फ्लैट कल्चर में रह रहे हैं या घरों के मतलब जो अर्बन एरियाज़ में रह रहे हैं। क्यों? मतलब मैं एग्जांपल दूंगा कि सिंपल एक एक्यूफर का एग्जांपल है कि रिसेंटली मेरे घर के ठीक सामने ही एक बोरिंग, वो बोरवेल के लिए बड़ा सा आता है ना, वो ड्रिल करने के लिए ड्रिल मशीन आई। तो यूजुअली बेंगलोर में या सभी शहरों में जहाँ भी जब ये मशीनें आती हैं तो 3 दिन के लिए फुर्सत हो जाती है, साउंड पोल्यूशन रहता है। तो मेरे बच्चों ने पूछा कि पापा ये क्या है, मतलब ये तो पूरे दिन 3 दिन में पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो मैंने कहा पढ़ाई तुम कर पाओ ना कर पाओ, इनको पानी नहीं मिलेगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि जिस जगह पे वो ड्रिल कर रहे थे उसके चारों तरफ ऑलरेडी हाई राइज बने हुए थे, और जो बंदा अपना आई थिंक वो 800 स्क्वायर फीट की ज़मीन होगी जहाँ पे वो खोद रहे थे, तो उन्होंने 2-2.5-3 लाख रुपए तो खर्चा किए और 3 दिन में उनको पानी का एक बूंद भी नहीं मिला। फाइनली वो निराश होकर लौट गए। तो आम जनता को अगर पहले से पता हो कि हाँ पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका सही तरीका क्या है, एक हाइड्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया जाए ना किया जाए, तब उनका भी पैसा बच सकता है और उनकी एक नॉलेज भी क्रिएट हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब उससे इसका फ़र्क क्या पड़ा। मेरे घर में भी आरओ लगा हुआ है, तो मेरी डॉटर ने क्या किया, उसके बाद उसमें एक छोटी सी बॉटल लगाना स्टार्ट कर दी जो उसमें से पानी निकल के आता है। वो कहने लगी पापा इसको पेड़ों में डालना स्टार्ट करिए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि कावेरी वाटर आ रहा है, नीचे भी ग्राउंड वाटर, जो हमारे बेंगलोर में वैसे भी क्राइसिस रहती है, तो जो ग्राउंड वाटर आ रहा है, तो इतना सा जो मैंने उसको ज्ञान दिया एक्यूफर्स के बारे में। अच्छा हाँ, जिस दिन ड्रिल चल रही थी मैंने उसको पूरा ज्ञान दिया कि ये होता है, ऐसे पानी आता है। तब उससे एक छोटा सा एक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि अगर बाकी के मीडिया हाउसेस थोड़ा सा इसके प्रति अवेयर हो जाएं और अवेयरनेस काइंड ऑफ थिंग मतलब लोगों को बताना स्टार्ट करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, तो थोड़ा तो फ़र्क आ सकता है। एटलीस्ट जो आप लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, जैसे अब अर्बन डेवलपमेंट में जो लैंडस्केप बनाया, तो अब हमने सोचा कि ठीक है हमारा जो यहाँ से जो वेस्ट वाटर आएगा, ग्रे वाटर आएगा, उसको हम कलेक्ट करके यहाँ से रीयूज़ करने के लिए रखेंगे। लेकिन अगर जो वहाँ लोग रह रहे हैं वही उसके प्रति संवेदनशील नहीं होंगे, तो वो हमारी पूरी प्लानिंग, जितना भी खर्चा हुआ है वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आज ही का है, इसके बारे में 2007 में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा था, तो नॉलेज प्लेटफॉर्म इंडिया वाटर पोर्टल को लॉन्च किया था। तो बाकी का आंकड़ा मेरे पास है नहीं, मुंगाबे और बाकी के जो वेबसाइट्स हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हैं, तो मैं अपनी ही वेबसाइट का दिखा दे रहा हूँ कि हमारे पास सिर्फ रिपोर्टर्स नहीं है, मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एक जो ज़िले में रिपोर्टर्स होते हैं कि उन्हीं से रिपोर्ट लिखवा ली और पब्लिश कर दी। हमारे साथ बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए। तो बस फ़र्क ये हो जाता है कि जब कभी भी वो कोई टेक्निकल एस्पेक्ट में कुछ भी थोड़ा हार्ड टेक्निकल हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भैया इसको थोड़ा सा आसान भाषा में कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा रीडर समझ नहीं पाएगा। तो हमारे साथ करीब 2500 ऑथर्स जुड़े हुए हैं और हमारा अभी 1 मिलियन प्लस यूज़र्स भी हैं। और इसके अलावा मतलब जो हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ पानी नहीं है, क्लाइमेट चेंज है, एग्रीकल्चर के ऊपर है, इरिगेशन, बहुत सारे सेक्टर है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा मिशन ये है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करें, लोगों की सोच बदलने के प्रयास हमारा रहता है हमेशा। ये तो वही सेम चीज़ है जो रिपीट हो गई है, मतलब इसी में ही इसके फॉर्मेट हैं जो हम लोग ग्राउंड स्टोरीज़ भी कवर करते हैं, क्योंकि ग्राउंड स्टोरीज़ कई बार क्या होता है लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। और इंस्पिरेशन इन द सेंस कि अगर आप देख लीजिए यहाँ पे जैसे ये मेघालय वाली खबर है, तो एटलीस्ट लोग देखेंगे तो हाँ उसके बारे में सोचेंगे कि हाँ यहाँ से मुझे कंटेंट पढ़ने को मिल सकता है। और कई जो वाटर वॉरियर्स हम लोग बोलते हैं उनको, किसी ने अगर कुछ अच्छा काम किया है तो हम लोग उनकी भी स्टोरीज छापते हैं। तो अगर आप इंडिया वाटर पोर्टल हिंदी वाला देखेंगे तो बिबली बाई की स्टोरी दिखेगी। तो वो उन्होंने जल जीवन मिशन का में उनका गांव रजिस्टर नहीं हुआ था, तो उन्होंने एक कैंपेन चलाया, बार बार सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए और फाइनली अधिकारियों को कन्विंस किया और जल जीवन मिशन में उनके गांव को शामिल किया गया। जबकि उससे पहले तक मतलब अभी भी उनके पानी नहीं आया है, आ जाएगा, वहाँ पे फ्लोराइड की समस्या बहुत सालों से बनी हुई थी। खैर, तो ये तो चलिए बिबली बाई की स्टोरी थी जो वहाँ के ग्रामीण ने दी हमको। मतलब हम नहीं जा चुके, मतलब मुझे राजस्थान नहीं जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पे जो ग्रामीण था उसने खुद से वीडियो बना के मुझे भेजा कि देखिए सर यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसर्चर्स या रिपोर्टर्स ही हमारे लिए मतलब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रामीण लोग भी। तो पिछले साल हम लोगों ने एक फेलोशिप ऑर्गेनाइज़ की थी जिसमें आप ये 5 चेहरे नीचे देख सकते हैं। 3 चेहरे जो हैं वो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, 2 रिसर्चर्स हैं। उन दोनों ने पीएचडी लास्ट ईयर ही सबमिट की है, सॉरी इसी साल सबमिट की है और होपफुली दे विल बिकम डॉक्टर दिस ईयर। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं जो लैब में काम कर रहे हैं उनमें भी एक उनके अंदर भी लिखने की, उनके अंदर भी कम लोगों को लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की एक जज्बा है या कहते हैं एक इच्छा है। तो ये जो बाकी के 3 चेहरे हैं, लास्ट में 2 और इधर वाला एक वाहिद, ये वाहिद जम्मू कश्मीर के हैं, बाकी वो 2 यूपी के हैं और थॉमस नॉर्थ ईस्ट थे और वंशिका इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र। तो अब कोई रिसर्चर जब हमारे पास आया तो हमने ऐसे नहीं कि हमने कह दिया कि ठीक है आप खबर लिखना स्टार्ट कर दीजिए कल से, नहीं। तो उसके लिए इस फेलोशिप के दौरान हम लोगों ने उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुलाया कि कैसे आपको काम करना है, कैसे पानी से जुड़ी चीज़ों को समझना है, और तब जाके ये फेलोशिप हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। हालांकि इस साल भी हम लोग जल्दी ही हम लोग लॉन्च करेंगे। और तो मैं यहाँ पर जितने भी सभा में लोग उपस्थित हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास यहाँ पे कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि हाँ लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो हमारे साथ जुड़िए। और मैं यहाँ पे कोई टेक्निकल सेशन, मतलब टेक्निकल सेशन ज़रूर था लेकिन टेक्निकल बातें, आई एम नॉट अ टेक्निकल गाय, और बट हाँ आई एम हियर with the promise that yes, I can take your voice to the mass. Thank you so much. Thank you so much, Ajay Mohan ji. और if there are any questions, कोई सवाल है तो हम 3 सवाल ले लेंगे। और जी
Thank you, sir, for the wonderful session. So I would like to know what are the barriers or challenges you faced while making the story narratives? See, the barriers and challenges are being faced by the reporters only, mainly. I am sitting in the, you can say air condition, but I can feel the pain of the reporters when they call us कि भैया यहाँ पर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, because ये जो आपने लास्ट में एक पिक्चर देखी थी ब्रजेंद्र की, he did a story on sand mining in Mirzapur. So once he is done with, once the story was published, he started getting the calls from Adani Group कि भैया एक बार आके बात करो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है. तो वो मुझे फ़ोन किया कि भैया सर मैं जाऊँ या ना जाऊँ. मैंने कहा नहीं, कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉरेस्ट ऑफिसर से बात कीजिए, आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात कीजिए, लेकिन डायरेक्टली किसी ऐसे व्यक्ति के पास मत जाइए वेयर यू कैन, मतलब जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो जो आपने बोला ना, जो बैरियर्स हैं वो सरकार की तरफ से आते हैं, वो सिर्फ तभी आते हैं जब ऐसे अधिकारी जो काम नहीं करना चाहते हैं. लेकिन जब जो काम करना चाहते हैं, दे ऑलवेज अप्रिशिएट, दे ऑलवेज कम अप डायरेक्टली कि आप लीजिए, ये रिपोर्ट है हमारे पास, आप छापिए. इट इज़ ऑलवेज, आई हैव सीन दिस. एनीवन एल्स? जी. बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका रहा. इसको सुन के एक चीज़ समझ में आ रही है, एक रेट्रोफिटिंग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ नहीं हुई है, गलत हो गई है, तो उसका रेट्रोफिटिंग करके उसको सुधार किया जाए. yes. तो कई सारे जो हम लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सभी करते हैं, कई कॉलोनाइजेशन के लिए मैंडेटरी किया गया है, बट वी नो कि पुराने कॉलोनीज़ में नहीं है, या फिर हुआ है तो नाम के लिए हो गया है. अब वो जब करना चाहेंगे तो ये होगा कि हमने वायलेशन कर दिया, हमारी कॉलोनी ही इलीगल हो जाएगी. लेकिन रेट्रोफिटिंग मेजर्स इसका होगा कि अगर आप प्रॉपर एक डिज़ाइन अगर उसका बनाएं, हम अगर हमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हेल्प करें कि हम उसको रेट्रोफिटिंग करके, उस समय मान लीजिए नहीं 20 साल पहले नहीं रहा होगा अंडरस्टैंडिंग. आई थिंक 90% कॉलोनीज में यही स्थिति होगी, कहीं पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं हो रही है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, पोटेंट सोर्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन. वो उस पर हमने कहीं नहीं चर्चा सुनी. वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए, बट रेट्रोफिटिंग कैसे करेंगे, ये अगर आपसे एस्केलेट हो सके और इसका कोई पॉजिटिव आउटकम मिले तो बहुत अच्छा रहेगा. ज़रूर सर. मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं जब वहाँ बैठा था अभी थोड़ी देर पहले, एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट का मेरे पास मैसेज आया था. ही वॉज रीडिंग आवर स्टोरी ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ही जस्ट पॉइंटेड आउट फ्यू थिंग्स एंड ही सेड कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बस पता है कि हाँ लगाना है, बट कैसे लगाना है, सही ढंग से लगाना है, वो क्या कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं. तो वो जो पैसा बचाने के लिए क्या होता है, एक एक लेवल में जहाँ भी 1-2 लेवल भी कम हुआ, फिर वो प्लांट पूरा वेस्ट हो गया. और जो अपनी बात रेट्रोफिटिंग की है, आई डेफिनेटली आई स्पीक टू हिम, देखते हैं कुछ अच्छा निकल के आए. नमस्ते सर, मेरा नाम अमित कुमार है और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर से ही हूँ मैं. मेरा सर ये क्वेश्चन था, आपकी एक स्लाइड थी जिसमें आपने पानी से रिश्ते की बात करी, जिसमें आपने एक बावड़ी दिखाई, नदी दिखाया, और इस तरफ एक अर्बन हम जैसे लोग दिखाए जो कि टैप वाटर ऑन करते हैं, पानी आता है. तो मैं सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे तरीके हम कर सकते हैं जिससे अर्बन में रहने वाले हम जैसे लोग पानी से रिश्ता बना सकें, कुछ ऐसी चीज़ें प्लीज़. देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि पानी का जो सोर्स है वो अगर हम, मतलब अब हम लोग तो काफ़ी बड़े हो गए, हम लोग को पढ़ भी लिया बहुत कुछ, लेकिन एक स्कूली स्तर से ही अगर हम लोग बताना स्टार्ट करें कि सिंपली एक एक्विफर्स के बारे में आप बाहर निकल जाइए, आप 20 लोगों से या 10 लोगों से पूछेंगे, 10 में से शायद एक को भी नहीं पता होगा. आम लोगों की बात मैं कर रहा हूँ. तो सबसे पहले जो पानी का सोर्स है उसके बारे में बताने की ज़रूरत है. और हर जो लैंडस्केप है उसका अलग अलग सोर्स है, ये हम सबको पता है. हमारे बेंगलोर में पानी ज़मीन से आ रहा है, कावेरी वाटर से आ रहा है, कावेरी नदी से आ रहा है. लेकिन हो सकता है जो लोग हिमालयन रीजन में रह रहे हैं उनके लिए पानी किसी स्ट्रीम से आ रहा है. तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी तो बस बर्फ़ पिघलेगी पानी आ जाएगा. तो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन. तो अभी थोड़ी देर पहले ही एक टेक्निकल सेशन में कि वो थोड़ा साइंटिफिक उसमें वे में बताया गया था कि पानी जो है ज़मीन से ऊपर आता है तब वो स्ट्रीम बनती है और तब वो नीचे आती है. तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर छोटी छोटी नॉलेज
अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में। और एक हाँ, जो सुबह वाला एक प्रेजेंटेशन था, आई थिंक सर आपका ही था, कि जिसमें हम लोग SDG की बात कर रहे थे, वो जिसमें एक मछली बनी थी, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पानी बनाए, मछली बनाए, मतलब पानी की बात हो रही है, बट दे डोंट नो दैट इट्स जस्ट ओनली अबाउट ओशन। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे, उसके बारे में टेक्निकली बताएंगे कि ये क्या होता है और इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक वाटर के प्रति सेंसिटिविटी बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू। एक अच्छी ताली हो जाए हमारे लिए जो एक आवाज़ बने हुए हैं उनके लिए। मैं थोड़ा सा अपनी बात कह देती हूँ, लंबी बात करने का वक्त नहीं है क्योंकि हमारा प्रोग्राम काफ़ी डिलेड है। मुझे जो एक दो बातें, एक तो पहले तो मैं सबको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनके भी प्रेजेंटेशंस मैंने सुने, दे वर ऑल वेरी एनलाइटनिंग एंड ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग। इवन द पेसिमिज्म ऑफ डॉक्टर पोपली वॉज इंस्पायरिंग। मेरा परिचय बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो यंग बच्चे हैं ये सारा कुछ गूगल करते हैं और उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। मैं काम कर रही हूँ, अब लगातार ही काम किया है मैंने, बिल्कुल ही देहाती इलाकों में, क्योंकि उसी में मुझे रुचि है। और मेरा ये मानना है कि शहर जो भी है वो देहात का एफ्लूवियम है बेसिकली भारत में, क्योंकि कोई भी शहर बहुत तैयारी से बना नहीं है, किसी भी शहर में कोई सोच नहीं है। हमने एक बार एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बच्चों के साथ किया था कि आप अपने जो मोहल्ला है उस मोहल्ले में पानी के कितने स्रोत थे उसको नोट करके ले आओ, दादी नानी बाबा जानकारों से पूछ करके। तो बच्चों ने बहुत कमाल की चीज़ें पता करी। एक जगह तो नदी ही निकल गई। तो कोई हिंदुस्तान हो, ये दुनिया का कोई भी इलाका हो, इंसान नदियों के किनारे ही बसा है। दे हैव सर्च्ड फॉर रिवर्स एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिवर वैली सिविलाइजेशंस। अभी भी हम जो रह रहे हैं रिवर वैली अनसिविलाइजेशंस में रह रहे हैं, लेकिन रिवर वैलीज में ही रह रहे हैं और उन नदियों को हमने खा लिया, उसके ऊपर हम बैठे हैं। चाहे इंदौर की खान नदी हो, भोपाल में नेवज हो, आपको दिखने ही नहीं वाली है। बम्बई में एक मीठी नदी कहलाती है, मुझे तो नहीं मालूम कहाँ है वो बेचारी, तो वो ऐसा है। तो मेरा मानना है कि कुछ सारी चीज़ें जो आप लोगों ने कही, मैं अपने अनुभव और ऑब्जर्वेशन से आपको ये बताना चाहती हूँ कि विद्वान बहुत भोले होते हैं। आप सब लोग बहुत विद्वान हैं और आप बहुत भोले हैं, क्योंकि आप अपनी एक दुनिया में रहते हैं। नेचुरली यू हैव योर ओन सिस्टम, योर ओन लॉजिकल रियलिटी, जिसके अंदर आप अपना काम करते हैं। भारत में सैकड़ों हजार किलो अनाज रखने लायक साइलो तैयार हो रहे हैं। आपको पता है? पता है? पता होगा। आजकल तो बच्चे खास करके, और मैं पोपली साहब बहुत बाउम्मीद हूँ, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो मुझे मिलते हैं, जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं यूथ पे बहुत काम करती हूँ, तो वो जो बच्चे मिलते हैं वो सब खूब विरोध कर रहे हैं। लेकिन विरोध कौन नहीं कर रहा है? मेरी पीढ़ी से लेकर के जो 80 के दशक में पैदा हुए हैं उतने तक की पीढ़ी के लोग, 60 के दशक के, 70 के दशक के, 80 के दशक के। हम चैन से रहना चाहते हैं। हमें पहले हमारा करियर चाहिए, हमारा मकान चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो जो लैक ऑफ ओनरशिप ऑफ आवर ओन रियलिटी है, वो सबसे बड़ी हमारी समस्या है। और इंटरकनेक्टेडनेस है ही नहीं। जो आप विद्वान हैं, हम आपकी बात सुनना नहीं चाहते। सामान्य आदमी को आपकी बातें नहीं सुननी। आपकी बातें या तो हमको बहुत तकनीकी लगती है, या एंटी इंटेलेक्चुअलिज्म आजकल एक फैशन हो गया है। एंटी नॉलेज एक हमारे यहाँ एक फैशन हो गया है, और इतना बड़ा तिलक लगा के और कैसे नॉलेज का खिलाफत हम करें, कैसे हम उल जलूल बातों में हमारे देश की महानता सिद्ध करें, इसी में हम लगे रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली मूलतः हमने, आवर लैंग्वेज हैज़ द फॉल्ट, आवर प्रॉब्लम इज इन आवर एक्सप्रेशन। हम किस चीज़ का, अभी बार बार सारे विद्वानों ने कॉलोनी शब्द का बहुत प्रयोग किया। कॉलोनी कितनी इंटरेस्टिंग शब्द है। अंग्रेज ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया और उसका मतलब ये था कि वो हमसे सब कुछ ले जाके उसने अपना देश बना लिया। अब वो कह रहा है कि इंडियन और पाकिस्तानी हमारी नौकरियां ले रहे हैं, लेकिन उसने हमसे सब कुछ लेकर अपना बनाया। तो जो कॉलोनी, जब हम किसी जगह को कहते हैं जो कायदे से मनुष्य का सेटलमेंट है,
जब हम सेटलमेंट करने जाते हैं, जब हम सेटल करने जाते हैं, कहीं भी व्यवस्थित होने जाते हैं तो व्यवस्था करते हैं, लेकिन जब हम कॉलोनी बनाने जाते हैं तो वहाँ की ज़मीन, वहाँ का पानी, वहाँ की घास, सब कुछ के हम कब्जेदार हो जाते हैं, क्योंकि कॉलोनी बनाना कब्जा करना है. So there is a defect in the way we use language, there is a defect in the way we interconnect with each other. और रिपोर्टिंग तो सर आप चाहते हैं लेकिन आप नहीं कर सकते. मेन स्ट्रीम मीडिया चाहती है लेकिन नहीं कर सकती है, क्योंकि हमने देखा है कि किसका इंटरेस्ट है सारी चीज़ों के डिग्रेड होने में. अगर आप 37 माले का घर बना के उसके अंदर अपना खुद का निजी जंगल बना लेते हैं, अपना खुद का सेंचुरी बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों को बाकी लोगों से क्या ही मतलब है? कोई मतलब नहीं है, और संसार भर में. लेकिन उम्मीद मुझे बहुत है, क्योंकि मुझे अभी कल ही एक न्यूज़ मिली. एक सेंट चार्ल्स नाम की छोटी सी जगह है मिसूरी में, अमेरिका में. आप लोग देखिएगा, वहाँ की जनता ने, तमाम जनता ने, एक एक व्यक्ति ने खड़े होकर गूगल को कह दिया कि तुम्हारा डेटा सेंटर यहाँ नहीं बनेगा, और उनके नगर निगम को, म्यूनिसिपैलिटी को वो डेटा सेंटर कैंसिल करना पड़ा. खत्म, नथिंग. और अब उसके चलते पूरे अमेरिका के हर शहर में लोग कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे, अगर सेंट चार्ल्स ने नहीं बनने दिया तो हम भी नहीं बनने देंगे. तो ये आवाज़ें, और आपको तो जानते हैं हमारे बच्चों को तो अमेरिकी चीज़ें बहुत पसंद है ना, हाय अमेरिका के हाय अमेरिका. तो अमेरिका में एक अच्छा ट्रेंड शुरू हो गया, तो मुझे विश्वास है कि हमारे बच्चे यहाँ भी अच्छा ट्रेंड कुछ ना कुछ शुरू करेंगे. और ये उम्मीद जो हमारी जनरेशन्स ने चीज़ों को ख़राब किया है, उसको बेहतर करना हमेशा पलटी करता है समाज, और पीढ़ियाँ पलटी करती हैं. उसको पलटी करना, ये जो बैठे हैं यहाँ पे सबके सब 90 के बाद पैदा हुए कोई नहीं? क्यों? 1990 के बाद कितने लोग पैदा हुए हैं? ये देखो, विकास भी है. हाँ, ओके. तो जो अब इतने सारे लोग हैं, आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि द ट्रैक्शन दैट यू हैव इज गोइंग टू रिवर्स दिस एब्सोल्युटली हॉरिबल ट्रेंड. आई वांट टू एंड माय chair here on a very positive note, because you are doing so much. Thank you so much. Please accept the memento as a token of thanks. Not me, I have taken. Oh, okay. एक मुझे सुबह दे दिया, एक अभी से दे देना. आप भी हाथ लगा लीजिए. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. We now come at the end of our session. The technical sessions have ended, and we begin with the final segment of the conference, the panel discussion on sustainable cities. Over the course of the day, we have explored a wide range of themes: biodiversity, urban governance, protected areas, rivers, wetlands, and community engagement. While each of these issues may appear distinct, they are deeply interconnected. The central question before us today is not whether our cities will grow. They certainly will. The question is, how can they grow in a way that is ecologically sustainable, socially inclusive, and resilient to future uncertainties? To help us explore this question, we are privileged to have an exceptional panel bringing together expertise from environmental science, urban planning, ecological restoration, policy research, and climate governance. Moderating today's discussion is Mr. Devaditya Sinha, Lead Climate and Ecosystems at the Vidhi Center for Legal Policies, New Delhi. We are delighted to have him guide today's session. We're taking a break. So it is requested that we take a break. We welcome Mr. Sinha on the dais. Yes. Joining him on the panel are Mr. Jagdish Krishnaswamy, Dr. Anil Kumar Roy, Senior Associate Professor, Faculty for Planning, CEPT University, Ahmedabad. Dr. Fayaz A. Khudsar,
and Mr. Piyush Seksaria, Climate and Ecosystems Team with the Center for Legal Policy. We are honored to have such an accomplished panel with us today. Without further ado, I invite Mr. Devaditya Sinha to take over the proceedings and lead this important conversation on building sustainable cities for the future. Thank you. As usual, last session, Vikas will give to me. But yeah, we have time hai. We will. So you know, one best part of moderating the last panel is that we learned so much, imbibed so much. So it makes the work little bit easier also, but difficult in the way that there's so much information, so great experts with me. So what kind of question should I ask? That's also one thing. But I will start from the keynote talk given by Jagdish in the first session, where he mentioned, and this reflected upon in the session as well, nature-based solution versus ecosystem-based adaptation. Also decorating green versus function ecosystem. So these kind of things are, I think, the you know, in all the sessions it got reflected in some way. Like, you know, even the last session also we were discussing this thing. So Jagdish, I will just first come to you to, like, I want you all to zoom out a bit from your niche areas. And you know, all this city planning, whatever we see today, what are the problems we are facing today. So one thing which you can answer very well, that where are the constraints lie? Like, you know, actual constraint lie. It can be multiple factors, whether it is ecological science, it's a part of the development planning we followed, or it is both, and lack of governance or political will. So how do you see coming from? So I'm going to move away from what I do, and I will venture into some other areas like governance, where I have a little less expertise, because I think that's the most important one. So cities in other parts of the world, they have an elected mayor. In some parts, in Europe and other places, the mayor is actually almost, I think, in terms of power, the mayor of those cities has got the same power as maybe the chief minister of Delhi. That sort of power a mayor has of every city and town. And they are elected and they are accountable to the people. And I think that we don't have an equivalent system where the citizens can connect, elect a mayor, and where we can express our concerns. And so that, I think, is in our city governance system, I think that is one gap that we have, that we don't have that type of system where we have a mayor and there are other councillors, and then the citizens can interact directly. I know that good things have happened in India's cities and towns despite not having this type of system. But I think if we can move towards a little bit more accountability of the people who run the city, I think that will be really nice. Instead of cities being seen as part of the political economy of a larger state or a larger, if the cities can actually be a little bit more autonomous in governing, and then maybe that this type of governance may also indirectly help us with the planning for sustainable cities. That is my one gut feeling I have. I'm not an expert in governance, but I have seen how mayors in other cities and towns have functioned and taken very important decisions sometimes. And you would have also heard about things that happen. You would have heard the story of the Pied Piper of Hamelin, right? Where there was the city was infested with rats, and the citizens were fed up, and then this Pied Piper came, who said that you give me so much of gold, and I will get rid of the rats for you. And then, of course, he played his pipe, and the rats were moved out of the city. And when he asked for the gold, the mayor refused to give him his due. And then you know what happened in that story. He led all the children away, and so on. So basically, there was, even in those medieval times, the mayor, whether it was
not, was very accountable in that sense. It's, we don't seem to have a similar system. I think that environmental governance in the cities and towns in India will benefit if we have a little bit more of a more autonomous power centers, decentralized power centers in the cities and towns. So that is one thing that I feel. The rest of it, I think, will, in terms of ecological science, in terms of sustainability science, I think that will find a better place in terms of informing policy and management if we can have this part of it fixed. The second part is, of course, I think that that cities actually have to now, I mean, we are clearly seeing that we are now, cities are in some sense, like we are plundering from our neighboring ecosystems and other places. So from plunder, they bolte hain na, डाका डाल रहे हैं हम लोग as a city, right? From plunder, we have to at least डाका to at least छोटा बहुत चोरी के level पे आ जाए. उसके बाद फिर we can go to sustainable. So right now we are basically, as somebody was, I think Fayaz only put it very nicely, कि हम कुछ आमदनी है नहीं और सिर्फ खर्च रहे हैं. So that is basically, we have to, so that is the sustainable lens that we have to apply. Even the building materials that we have to reduce the amount of sand used in building. I think we have enough of technology and knowledge to be able to come up with more sustainable buildings instead of relying so much on sand which is robbed from rivers, and also to be able to take care of our water better and to create more biodiverse habitats and make our cities safer and in terms of climate and environmental health for the citizens in the future. I think all these things are possible if we can, this disconnect that we see, this whole thing of development versus nature, I think that is something that is at the heart of this issue. Yeah. Thanks, Jagdish. So now, I will go to Mr. Roy, Dr. Roy. So, when we talk, you are a planner, you can say. Yes, and you are also a part of several planning projects across the cities of India at a very prestigious institution, CEPT, which is known for, planning and all this thing. So one thing is that there are 2-3 major components of city, when it's a problem. One is the land use, one is the built environment, how we are building it, one is the mobility, how people use. And these problems like heat island, which we spoke, Gautam also spoke in this session, and Mr. Balpis about it. Then AQI, waste. So these are the issues which came from maybe bad planning. And although we are seeing it today, but this planning has happened maybe many decades ago. And that time when we actually envisioned city, we couldn't envision those kind of impacts. So now my question to you will be, our cities follow a particular pattern, a particular development model. I don't know from where it came. Maybe you can shed a light. Why did we choose a model which is not suitable for our climate and also our culture? Specifically, as Jagdish also said, the use of sand and concrete, all this thing came from, even glass also. We'll hear from Piyush also, how it different angles are also there. So as a planner, what are the mistakes we did, maybe some 4 or 5 decades ago? The key mistakes we did, and and what mistake we should not do today. Thank you. Thank you, organizer, for inviting me on this August gathering. And also my previous speakers have set the tone. Relevant question, I am more dealing with the training and education program of urban planning rather than practicing and going and correcting what is gone wrong. So that's a disclaimer, but somehow I'll try to understand that how cities function and as the moderator is saying that where we have gone. Cities are in India is much more older than whatever concepts we are dealing with. Be it sustainable development, climate change, cities originated much before that.
So there were no concepts of sustainable development when Mumbai or Calcutta or New Delhi for Shahjahanabad was planned, you know. So we had no climate change regime. Nobody was telling data कि इतना temperature 1.5 degree बढ़ जाएगा, sea level rise हो जाएगा. They were just setting up the density. More people will come, live together, accessibility रहेगा, cart driven होगा, car motor car नहीं था. All those things historical planning were done. And that time we are doing almost fine because the orientation of the houses, the road network, if you look at the Harappan and medieval, they're all in tune with the natural settings and light and winds and all. The problem started after the Industrial Revolution. We all know, I don't have to tell much about that. And then the colonization happened, and British rule came. And then nature of city was to exploit the hinterland, as Krishnamurti sir is saying, we're plundering the hinterland, using more resources, 3% land only, but 70% energy. So it's city to be blamed for the consumptions and the high level of consumptions of natural resources that we do. Now about the planning. So almost big cities are already planned. What we have to do, we call it the brownfield development. The retrofitting is very difficult. So you can't make much more compact the old cities. It's already compacted. If you go high rise, then there will be lots of problems because there is limit of compact city as well. The sprawl we have chosen because land is cheaper at the periphery, resources available there. You can put infrastructure little later, and then we can deal with. In the meantime, what happens? The commute increases. The moment commute increases, you have more CO2, more GHG emissions, and all sorts of consumptive industrialization happens. All our cities, all our urbanization, by and large India, is also, to some extent, is induced urbanization because we put factory, we put commercialization, and then urbanization takes place. There is a turn to this. Now it is happening, the urbanization, the rural hinterland. The census town is happening. More of recent census towns are coming up. 2050 such towns has come between 2001 to 2001 to 2011. 2,500 towns which grew out of the rural settlements. And that's urban area now. That 31% urbanization is including those. And these are going to demand more access to water, more pavement, more concretizations of housing, and all sorts of things that is going to happen beside these big cities. Problems are much more acute in the big city because we are dealing with the high density population and urban heat island that we create. These urban heat islands are largely because of the building and the building material, as Krishna Swami sir is saying. So what we are thinking of blue, green and grey balance. So unless we put our grey right, we are not going to achieve much more. अब जितना भी पानी लगा दीजिए, पेड़ लगा दीजिए, and there is a world resource study just 1 week before it has come, only 50% respite from the heat. Plantation can do. You have to set the greenhouse gas emission, the building material that we use, and the way we transport goods and services and passengers. High commute. And we are apping, somebody was telling that, where ma'am was telling that which way we are going American way of sprawl. So if urban sprawling is happening, we are going to add more to the climate change and its impact rather than solving that. No matter how much tree we are putting up in the place and how much ecological restoration we are going to deal with. So therefore we need to bring in the challenge and the opportunity both that city gives us. Now the thinking has really come up, and I would blame all our planning community that we are still not very sensitive towards climate change and sustainable. Sustainable development has not been understood by the planner by and large. We have town planning institutes across India. We have district level town planning institutes, state level town plans, country level, but they are very insensitive. They are not ready to accept that there is a problem of climate change and resilience. And that's the biggest problem. Because climate science has already established that this has never happened in the history of Earth, that so much degree of temperature has risen within the last few century or 1 century, 2018 onward, 1800 onward.
So now since the climate change regime has set in, we need to make changes in our building bylaws. We need to change our way of life that we are thinking of, and you cannot stop migrations. So anybody willing to think that, okay, we will develop rural area, there will not be more environmental freedom there, that's not going to happen. Human intrinsically is aspirants. They will come to the city because big is always better. Big facility, we are aspiring to become prosperous. $47 trillion 47 में आएगा तो वो पैसा कहाँ जाएगा? सिटी में लोग खर्च करेंगे. $47 trillion तो economic growth की बात कर रही है. These will have repercussion on all our cities, and cities will demand much more resources what we are expecting right now. Our next generation are not going to compromise because they have born in affluent society. So therefore there are much more need. The problem is now balancing these demands and challenges. The balancing comes from SDG goals. Where are we balancing? And sustainable development and SDG goal number 11 is completely saying that you need to balance the 3 pillars of sustainable development, which is economy, equity, and environment. We have previous sessions are all about environmental sustainability, environmental upgradation, environmental justice. But we are not talking about equity in sharing the prosperity, economic prosperity. And more wide gap is there in the urban area rather than rural area. So income inequality in urban area is much more than the rural inequality, income particularly. Therefore, we need to bridge these gaps. We are talking about all, I'll give you one example of what should be the ideal plot size in the city. We don't have benchmark. But if you put 2,000 square meter of land patches in one zone, only builders, only the rich people will come. That's, we call it elite capture in the urban planning. So all these, and I give you examples of Ahmedabad. We have a road called Sindhu Bhavan Road, an entire 30 square kilometer area between 2 ring roads. The average plot size is 2,000 square meter. And one plot was sold to 400 crore rupees, 400 crore rupees. And that's the inequality in the city. Where is equity, And you're pushing the poorer or low income group 5 kilometers, 10 kilometers away towards Anand, which they have to commute 15 kilometers, come to city center and work. And this is inequality. This is where we fail. Therefore, that form itself is important aspects of planning. How do you control that form? Whether you are giving an initial planning theory of 1 to none, the poorer people were given city centers because they were employed in the factory and they used to go work and come back on their own. That's got reversed now. So poorer are pushed in the margin and rich people are having bungalows within the city center, outside also. We call it weekend homes. And that's the unequal distribution of land resources that happens through, through conscious planning. We call it development plan. We call it master plan. And I'm here to take blame that because this is how we are doing wrong. And one small example, and I'll stop here and then come back again, is the water resource consumption. We have a benchmark of 135 LPCD per liter per capita we have to supply entire people, okay? If you look at the slum area, they don't even get in Ahmedabad. I have a record of it, 40 LPCD per capita per slum area. We have a bungalow residential zone. They have 300 liter LPCD per capita per day. That is good. They are washing their car, whereas the slum have no drinking water. That's because of planning failure. It's nothing to do with anything allocation of resources. This is by default planning because there is a pipe water supply which supplies 24/7, or there are informal water supply sources also. Borewells, Narmada is somehow revived the Sabarmati river, and that's how we have Sabarmati riverfront. Riverfront has already built. We have lost biodiversity and pollution's already there. All sewer water goes to that particular pond. That's stagnated. No more river. It's a 9 kilometer long pond which has 250 meter wide
That's the waterfront in Ahmedabad. And I can tell it here right now with more, courage, rather than telling it to Ahmedabad Municipal Corporation. So that's how. But these are all planning failure, and we accept that. So these inequalities has to be reduced through consciousness, through changing the building bylaws, and also affordability in the city. Affordability is the big question. Transport affordability as well as housing affordability. Nobody is thinking about affordability, BRT is successful there in Ahmedabad, and BRT is removed here, and Delhi also. Surat also, they are wiping out in the failure. But Ahmedabad BRT to some extent is running. But it's not very affordable to the daily wage workers who can commute 20 kilometer, 50. And same is the case of metro that is going to happen. So these kind of inequality that exist through conscious planning decision are going to be rethought and revisit, and therefore we need to bring in entire sea change in the planning process. Development plan से ज़्यादा हट के सोचना पड़ेगा. Development plan is more regulative, more restrictive, and it creates inequality in the city. I'll stop here and come back again. Thank you. Yeah. Thank you, sir, for such a good and honest, sharing this thing. One thing you said is that, it's a mix of environment, equity, and economics. So, and cities are also aspiration, reflect aspirations. Cities have come across because people also aspire to come to cities. So I don't know, and there is a great inequality in terms of for whom the plans are made, who are the beneficiaries, who are taking the brunt of it. I have lived in Delhi since last 30 years, and Delhi has farms. Delhi has communities which have buffaloes and goats. There's shepherd communities also there. There used to fishermen there, because I remember when I was small, we used to go after Durga Puja, we used to go for Visarjan in Yamuna, and we used to get this local fishes. Now they are lost, completely lost. We used to get fishermen. I was telling sir yesterday that Yamuna has lost all these fishermen communities. So cities somehow demography changes, and it's become aspirational, and issues are there. But sir, as I will continue from where he left, yes, and because despite of all the failures, where the rates of city, as you mentioned, 400 crores for 400 square meters or something, and Delhi, Noida, everywhere, I think cities are all become very expensive. Land is the most precious resource there. Each inch by inch, everyone wants to develop, even the government, even the private players, anyone. And it's a matter of survival, so whatever you want to say. In this kind of situation, you manage to have a very beautiful biodiversity park, which is restored landscape on the bank of Yamuna. On Aravali, there are 8-lane highway going on one side. There's a Yamuna on the other side. There's a full, surrounded by conservation. There's a beautiful landscape. You must go there to see the biodiversity park. I have seen it developing when I was a student, and Fayaz sir is also one of my teacher. So, sir, I will just bring the discussion to something more real, more personal to you. When we have this kind of situation where cities are aspiring to be more towards built environment and all this thing, planner, a planner means authority, development authority or real estate developer. So they have their own plan, and we as ecologists say that this doesn't follow the ecology. It is bad for it. There is always a debate. And governments, when we talk about policies and all, government work in a 4 or 5 years of deadline because they want some political visibility. We're very honest about it. If we plan about 20 years, 25 years, no one will be interested. So that is one thing. And of course, it has to be economically viable. People have to accept all this thing. Now, you are running some 7 biodiversity park now in under plan. This is one of the oldest biodiversity park. So how did you manage to convince the government to have this kind of natural function ecosystem at the heart of the city? DDA, very interesting. Our development authority and the university collaborated to have this kind of thing. When the whole push is to develop, I want to know from you personally, what are the challenges you faced initially? First of all, how did you convince? In what language did you convince the planners, and how did you sustain till date? मैं तालुकदार साहब हिंदी में बोलूँगा. वो बाहर जाके कंप्लेन करे थे, बोला हिंदी अंग्रेजी में बोलने लगा. एक्चुअली ये क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैंने
ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि बहुत रिसर्च हो गए, बहुत पेपर भी पब्लिश हुए, अब कन्विंस करना ज़रूरी है। सर के एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, उन्होंने बोला नए बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। क्या नए बच्चे सांस नहीं लेंगे? क्या नए बच्चे पानी नहीं पिएंगे? नए बच्चों को और अच्छे सांस की ज़रूरत है। हमारा फेफड़ा जो था वो तो हो लिया, तो वो तो और भी सेंसिटिव हैं, वो जी नहीं सकते, तो उनको और ज़रूरत नहीं, उनको तो सोचना पड़ेगा अपने में कट कैसे करें, क्योंकि हवा ख़त्म है और पानी ख़त्म है। एनीवे, इसको गवर्नमेंट को कन्विंस करना बहुत ज़रूरी है। ये जब बायोडायवर्सिटी पार्क की बात आई, एक्चुअली उस वक्त ऑनरेबल एलजी थे, उन्होंने एक लेक्चर में डिस्कशन में लेजेंडरी इकोलॉजिस्ट हैं प्रोफेसर बाबू, उनको उन्होंने बोला कि भाई एज ए साइंटिस्ट आप गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोलते रहते हो, आप सब जितने भी टीचर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो क्या कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे दिल्ली कुछ बेहतर हो पाए, कुछ दिल्ली को नया दे सकते हो? तो प्रोफेसर CR बाबू सर ने सजेस्ट किया, वो प्रो वाइस चांसलर थे दिल्ली विश्वविद्यालय के उस वक्त, कि हम बिल्कुल कर सकते हैं, अगर एक पीस ऑफ लैंड दें तो प्रॉब्ली जो इकोलॉजिकल हिस्टोरिकल इकोलॉजिकल ग्लोरी दिल्ली के उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक प्रपोजल लेके आओ। तो इनवाइटेड प्रपोजल था इनफैक्ट। सो वी वेंट देयर टू LG ऑफिस, और वहाँ पे जब गए तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो मैप बनाए, क्योंकि प्लानर तो है नहीं हम, मैप पे ऐसे ऐसे कुछ ग्राफ पे बनाया, ऐसे ऐसे हमने बोला कि 3 स्टोरी फॉरेस्ट बनाएंगे, ग्रासलैंड बनाएंगे, वेटलैंड रिस्टोर करेंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप साइबेरिया चाइना से आएंगे, हर्बीवोर आएंगे, कार्निवोर आएंगे। सारे IAS ऑफिसर हंसने लगे, वहाँ जितने ब्यूरोक्रेट थे सब हंसने लगे, बोले अरे तो आर यू सेलिंग ड्रीम? इट्स उन्होंने बोला ऊसर ज़मीन पे आप कह रहे हो कि वो आकाश ऊपर से आ जाएगा, ये कैसी बातें कर रहे हो? तो हम लोगों ने अपना पेपर समेट लिया, मतलब हो गया काम, नहीं मिलेगा प्रोजेक्ट। तो बट LG साहब वॉज वेरी कन्विंस्ड कि नहीं, ये लोग कह रहा है तो करेगा। उन्होंने बोला अरे भाई इनसे सुनो, कुछ वेल मीनिंग लोग हैं, कुछ करेंगे। तो फिर उनके जो अधिकारी थे उन्होंने बोला आपको ये प्रोग्राम 3 साल के लिए दे दूंगा। तब हम लोगों ने फिर समेट लिया कागज, बोला 3 साल के लिए तो नहीं लेंगे जी, आज तक किसी ने इकोसिस्टम को रिकंस्ट्रक्ट नहीं किया है, पहली बार हम लोग कोशिश करेंगे। तो गेस्टेशन पीरियड 10 ईयर्स का चाहिए, अगर देते हो तो ठीक है, नहीं तो ठीक है हम जा रहे हैं। बोला रुको रुको रुको, दो भाई दो, क्योंकि LG took his personal interest, Honorable LG, because he has lot of trust on Professor Babu and his team. वो मिल गया जी। अब मिलने के बाद क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम लोग आए साइट पे, to understand the site we started plantation in a small corner to understand how soil behaves, because it was a Usar land. In 20 days our dream shattered badly. जैसा बोला था ब्यूरोक्रेट्स ने वही हो गया। We started shivering, कह रही इतना लंबा लंबा, जिसको कहते हैं हिंदी में छोड़ के आए, छोड़ना कहते हैं ना उसको, लंबी छोड़े। अब फेंक के आए, फेंकना, उसको लंबी फेंक के आए, यहाँ सरजमी पे तो वही हो रहा है जो अधिकारियों ने बोला था। फिर भाग के गए, प्रोफेसर बाबू सर उस PVC थे, गए तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? मैंने बोला सर LG साहब को क्या जवाब देंगे, हमने तो लंबी लंबी बोली थी, यहाँ तो कुछ नहीं हो, सब मर गया। बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, होना भी एक रिसर्च है, जाओ। पहला तो ये बोला उन्होंने। फिर दूसरा बोला उन्होंने, जाओ जमीन से बात की तुमने, डिड यू स्पीक टू सॉइल, गो एंड इंटरेक्ट विद सॉइल। दूसरा सेंटेंस वो मैं समझ गया, मैं आया, फिर सॉइल प्रोफाइल करी, तो हमने देखा कि pH वेरी करा, कहीं 9.8 है, कहीं 8.9 है, कहीं 8.2 है, वो पूरा pH वेरी कर रहा है। फिर हमने बोला कि भाई कोई भी किताब ऐसा नहीं बताता है, क्या करोगे कि pH ख़त्म हो जाएगा बिना केमिकल लगाए। तब हमने एक फिजिक्स का पेपर था, आई रिमेंबर, वो मिला बहुत पुराना, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने कहा कि अगर ज़मीन को ऊंचा करते हैं तो सॉल्ट में लीच डाउन एंड वॉस्ट ऑफ, लेकिन ऊंचा करने के लिए मिट्टी चाहिए भाई। अब मिट्टी कहाँ से लाओगे? मिट्टी जहाँ से लाओगे वहाँ इकोलॉजिकल डिजास्टर होगा, पैसे खर्च होंगे, सरकार देगी नहीं पैसे। फिर हमने फिर ज़मीन से बात किया और बहुत सारे इंडिकेटर्स देखे, बहुत सारे टाइफा, फेरेगमाइटिस और सेजेस मिले, और वो बता गया कि सबसॉइल एक्वीफर बहुत ऊपर है, मतलब हिस्टोरिकली इट वाज अ वेटलैंड। इन अदर वर्ड इट वाज अ वेटलैंड विच वाज फिल्ट अप और सिल्टेड, मतलब उसने बताया कि इसको डिसिल्ट करो, और हमने उसको डिसिल्ट किया, जो सिल्ट निकल के आया उससे माउंट बनाया, तो इन सिटू अरेंजमेंट मिट्टी का कर लिया और वेटलैंड रिस्टोर हो गया जी। वेटलैंड रिस्टोर होते ही
उसी साल दिसंबर में वो माइग्रेटरी बर्ड्स आ गए। उस वक्त एलजी साहब को लेके आए, साहब माइग्रेटरी बर्ड्स आए, अरे जो तुमने कहा हो गया, वाह वाह वाह, पूरे शहर में हंगामा हो गया। तो पहला इंडिकेटर हुआ कि माइग्रेटरी बर्ड्स आ गई, कि भाई जो बोला था वो हो गया। फिर धीरे से ग्रासलैंड बना, 3 स्टोरी फॉरेस्ट बना, फिर नीलगाय आए, फिर जंगली सुअर, सबसे पहले खरगोश आए। क्योंकि जब हमने ग्राउंड लेवल पे चीज़ें लगाई और एनर्जी फ्लो नहीं हो रहा था, इकोसिस्टम कैसे फंक्शन करता है, until somebody graze or browse on the ground, एनर्जी फ्लो होगा नहीं। ओडम का पुराना सोचिए लीनियर, तो हमने उसको मल्टीपल डायरेक्शन में बदला और तब देखा कि क्या प्रॉब्लम है। तब हमने फिर से सर्वे किया यमुना का, देखा कि स्पोरोबोलस एक घास है और उसमें इंडियन हेयर के बहुत सारे पेलेट्स मिले। तब हम स्पोरोबोलस ला के लगाए और इंडियन हेयर आ गए। तो ग्राउंड लेवल पे एनर्जी फ्लो शुरू हुआ। फिर नीलगाय आया, फिर जंगली सुअर आया, फिर हमने कैमरा ट्रैप लगाया। अरे वो तो फिर आप सोचें कि ड्रीम कम्स ट्रू टाइप हो गया। कैमरा ट्रैप लगाते ही देखा उसमें हॉक डियर के फोटो आ गए और उसके बाद लेपर्ड उसके साथ घूमने लगा। आज भी लेपर्ड 2 साल से घूम रहा है हमारे यहाँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 केज लगाए, किसी में जाता नहीं। तो वो इस तरह से ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बनने गया। फिर हमने देखा कि स्पेशलाइज निश कैसे कार्व होगा। आई एम सॉरी ज़्यादा लगा। फॉर एग्जाम्पल शिकरा का एक नेस्ट बना, बिट बाय बिट जोड़ा। शिकरा का एक नेस्ट बना, हमने उसका बाइक का शीशा खोला, डंडी में लगाई और जब बर्ड नहीं होती तो ऐसे करके फ़ोटो खींचना शुरू किया। 1 अंडे, 2 अंडे, 4 अंडे। फिर गर्मी बहुत हो गई, बेली वेट करके शिकरा आ रहा है, वो पानी कर रहा है, सबको डॉक्यूमेंट करता गया। 4 बच्चे निकल गए। वाइट आई का नेस्ट बना, वहाँ कैमरा लगाया, वीडियो बनाई, कन्विंस कर रहा हूँ सरकार को, वो दिखा रहा हूँ उनको जाके कि देखो जी ये हुआ, ये डायोस्पायरस मोंटाना पे वाइट आई ने नेस्ट किया, 4 अंडे दिए लेकिन 2 ही बच्चे बचे। माँ कैसे नेस्ट क्लीन करती है वो तक दिखाया। अब एलजी साहब और सारे ऑफिसर, अरे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और इस तरह करके बिट बाय बिट उसमें जोड़ा और एक सिस्टम बन के तैयार हुआ। जिस दिन लेपर्ड आया उस दिन एलजी ऑफिस को जब चिट्ठी लिखा तो उनके जो स्पेशल सेक्रेटरी थे उन्होंने लिखा कि आपने जो बोला था इतने साल पहले वो सही हुआ, आप खुश होना चाहिए। मैं खुश कैसे हूँ? चीफ वाला वार्डन स्टेट के बोल रहे हैं तुमको जेल भेज दूंगा। वो क्यों बोल रहे हैं? बोला आपको लिखा, उनको नहीं लिखा। बोला किसी को खा गया शेर तो फिर चीफ वाला वार्डन प्रॉब्लम में आएगा। तो इस तरह करके तब हमने एक एक चीज़ जो की उसको डॉक्यूमेंट किया और उसको सरकार को दिखाया कि देखो ये किया तो ये हुआ, ये किया तो ये हुआ। तो वो कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है। तो हमने दिखाया। जब इसका सक्सेसफुल हुआ तो उन्होंने बोला कि ओ अरावली डिग्रेडर है, चलो 700 एकड़ ज़मीन वहाँ भी ले लो। तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंड क्लियर किया था जहाँ होटल बनना था। वो बोला इसको दे दो, ये कर देगा, दो इन लोगों को दो। 700 एकड़ उसको रिस्टोर कर दिया। अब वहाँ पर ब्रीडिंग पॉपुलेशन जयकाल का है, कुछ बर्ड्स इंडियन पिट्टा वगैरह सब आने लगे तो सबको मज़ा आ गया। रॉयल स्नेक सारी चीज़ दिखने लगे। उसके बाद फाइनली हम लोग एक दूसरे चीज़ पे आए। एक नीला हौज था जो साउथ दिल्ली को हमेशा पानी पिलाता था, वो नीला हौज नाले में तब्दील हो गया। फिर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड का कॉन्सेप्ट लाया और बिना बिजली के कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड से उस नाले को साफ कर दिया। नीला हौज फिर से नीला हो गया, उसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आने लगे जो डेड था। और इस तरह से एलजी साहब को, सेक्रेटरी को, सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, एनजीटी को, चेयरमैन को, सबको बार बार ये देखो ये देखो। अब एक टाइम आया एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया अगर सारी नदियों को ठीक करना चाहते हो तो यू रिप्लिकेट यमुना बास्ती पाक ऑन ऑल रिवर्स, यू लुक एट द कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड सिस्टम व्हाट दे हैव डन। तो इस तरह से कोर्ट को भी कन्विंस किया हमने कि इस मेथड को अपनाओ और कोर्ट कन्विंस हुआ और तभी सक्सेसफुल हो पाया। तो गवर्नमेंट को कन्विंस करने में हमने इंटरवेन किया। सस्टेन सपोर्ट मिला क्योंकि एलजी का सपोर्ट था तो डिस्टर्बेंस कम हुआ और वो सक्सेसफुल स्टोरी आई। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2500 एकर्स पे काम करते हैं लैंड पे और रिस्टोर्ड एरिया है जो अभी इकोसिस्टम फंक्शनिंग दे रहा है। सारे सिर्फ यमुना बास्ती पार्क के वेटलैंड को हमने अभी मोनेटाइज किया तो पर एनम 600 करोड़ निकाल के सरकार को दिया है कि 600 तुम दे रहे हो 5 करोड़, ये 600 करोड़ हम दे रहे लो। तो ऐसा करके उनको कन्विंस कर पाए। और बहुत सारे बर्ड्स जैसे ब्लैक क्राउन नाइट हेरोन जो 80 ईयर्स एगो ख़त्म हो गए वो फिर से ब्रीड करने लगे। सी बोल्डी स्नेक 80 साल के बाद रीडिस्कवर हुए, सबको हमने पब्लिश किया उसको, वो रीडिस्कवर हुए। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट को बताई तो कन्विंस हुए कि देखो रेफरेंस ये है, ये अभी हो गया। तो उनको लगा नहीं ये हो सकता है और ये हुआ और शायद इसीलिए कन्विंस कर पाए।
तो सर ये इंस्पायरिंग क्वेश्चन बाद में, क्योंकि फिर वो फ्लो थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये इंस्पायरिंग तो है ही, पर इसमें सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि वी ऑल्सो नीड पीपल लाइक डॉक्टर खुद सर एंड डॉक्टर सी आर बाबू, मतलब हु हैज़ गिवन देयर लाइफ टू इट। लाइफ मतलब कि फोकस एक जगह पे लग के बिल्कुल मतलब क्रेजीली उसको पीछे बढ़ के मतलब करके, ऑल्सो डॉक्यूमेंटिंग दिस थिंग, लाइक आप जो भी कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करके उसमें, तो वो मुझे लगता है एफर्ट भी अपने में काबिल तारीफ है, और लॉट ऑफ सेक्रीफाइस ऑल्सो उसमें है, बिल्कुल है। तो ये है। लेकिन सर ने एक बात कही कि जब आपके यहाँ पे हैबिटेट हो गया और वो लेपर्ड आ गया तो चीफ वाला वार्डन आ गया कि किसी को खा जाएगा, कुछ होगा तो अगर कुछ जानवर जेल भेज देंगे। एक बार सर के ऊपर कुछ आप बता रहे थे कि प्रोसोपिस वहाँ पे इन्वेजिव स्पीशीज था, वो काट रहे थे तो आ गया कि आप पेड़ नहीं काट सकते। 60 लाख का फाइन। हाँ वो भी है। तो ये दिखाता है कि कैसे विद इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो कि ये जो अवेयरनेस कह लीजिए या जो ब्यूरोक्रेटिक टेरिटरी जो है वो भी है, बहुत चीज़ें हैं। पर इसमें एक जो है पीयूष से मैं अगला आऊँगा इसमें बात करने के लिए, ये भी बहुत अर्बन सेंट्रिक वो है। पीयूष मेरे बहुत पुराने मित्र भी हैं और ही इज़ अ गुड आर्किटेक्ट, ही हैज़ वर्क विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ही हैज़ मेनी कैप्स। वन इज़ दैट ही हैज़ रिटन बुक ऑन पन्ना विद मूर्ति साहब, वेरी फाइन बुक, और मुझे लगता है कि पन्ना के उसमें अवेयरनेस के लिए भी हैज़ वर्क वेरी गुड हार्ड या वेरी पॉपुलर बुक, वेरी हार्ड वर्क, बहुत अच्छे से बुक लिखा है। और बच्चों के साथ में एजुकेशन में पीपल एडल्ट गेम्स, आपका वाइल्ड लाइफ गेम्स बहुत सारे हैं। सो ही इज़ ट्राइंग टू डू हिज बेस्ट फॉर अवेयरनेस। ऑल्सो ही इज़ अ ऑर्निथोलॉजिस्ट, मैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलूँगा इसलिए क्योंकि ही स्टडीज बर्ड्स, तो आप भी जानते हैं। सो आई डोंट नो, बट द इशू व्हाट आई विल वांट हिम टू टॉक टुडे इज बिकॉज ही इज अ आर्किटेक्ट, ही interacts with the buildings, he sees buildings from a design perspective which you and people like me or some other person may not see it. कुछ इशू ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो कि हमें लगता है कि शहर में बिल्डिंग है लेकिन कुछ है। तो मैं पीयूष से 2 साल पहले ऐसे कॉन्फ्रेंस में बात कर रहा था, तो उसमें एक ये था कि आपको पता है हमारे इंडिया में दो तीन इंटरनेशनल फ्लाईवेज हैं, जैसे जहाज उड़ते हैं वैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स का भी फ्लाईवेज हैं। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट है सेंट्रल एशियन फ्लाईवे, और यही रीज़न है कि आप सुबह भी स्पीकर बता रहे थे, कोई आपिशा बता रहे थे कि सिटीज़ में सबसे ज़्यादा 50% ऑफ बर्डिंग सिटीज़ में होती है। तो आई एम श्योर वो दिल्ली गुड़गांव इधर की ज़्यादा होंगे क्योंकि वो फ्लाईवेज के ऊपर आते हैं और ज़्यादा लोग भी वहाँ रहते हैं। और वो एलिट शॉप तो है ही, फोटोग्राफी जो है वो पीयूष वाली फिर था कि फोटोग्राफी जो है मतलब वेरी एक्सपेंसिव हॉबी। लेकिन द गुड पार्ट इज़ दैट कि जो आपका जो डेटा है वो भी कैप्चर होता है। एंड अनफॉर्चुनेट पार्ट इज़ दैट इतने सिटीज़ वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे ग्लास यूज़ होते हैं। द ग्लास का जो है हम लोग बात करते हैं कि लाइक व्हेन टॉक टू आर्किटेक्ट्स एंड एनवायरमेंटलिस्ट, जैसे कि ग्लास से हीट ट्रैप होता है, वो सब होता है, वो तो है ही, एनर्जी कंजम्पशन है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बर्ड विंडो कोलिजन, इसमें क्या होता है कि चिड़िया जब उड़ती है वो रिफ्लेक्शन देकर सोचती है कि आसमान है और वो आके से टकराती है, और वो चीज़ जो है इंडिया में अनडॉक्यूमेंटेड है। और ये बाकी कंट्रीज़ में तो जो है आप जाएंगे तो कई कंट्रीज़ में उसको लॉ भी पीयूष बात करेंगे उसके ऊपर। एक तो है कि इनविजिबल है इसलिए कि चिड़िया मर जाती है, उसके बाद कुछ ही टाइम होता है जब आप उसको देख सकते हैं, पता कर सकते हैं, और वो एक्सपर्टीज़ भी चाहिए उसके लिए। तो पीयूष आपसे मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा बर्ड विंडो कोलिजन क्या है और अभी इंडिया में क्या स्टेटस है, कैसे आपको ये पहली बार दिखा और कैसे आपने ये चीज़ को शुरू किया, बिकॉज इस मुद्दे पे पीयूष वन ऑफ द फर्स्ट मैं कहूँगा जिन्हें मुद्दे पे बात करना शुरू किया है। इस डॉक्यूमेंटिंग डेटा भी मुंगाबे में आर्टिकल भी आया है अभी रिसेंटली, एक हमने एक मीटिंग भी किया है उसमें विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो आप थोड़ा समझाइए कि क्या है। थैंक यू देवदत्त। आज बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं, उसमें मैं एक नया प्रॉब्लम आपके लिए जोड़ रहा हूँ, बर्ड विंडो कोलिजन। तो एक्चुअली 2008 में मैं कूर्ग में एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और वहाँ पे जो कॉफ़ी एस्टेट है उनके डाइनिंग हॉल में मैं बैठा था और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई जैसे कोई एक्सप्लोजन हुआ हो, और सब लोग स्पॉन्टेनियसली बाहर निकल गए डाइनिंग हॉल के। और फिर आदमी तो क्यूरियस होता है, तो हम सब 2-3 लोग उस तरफ भी गए जहाँ से आवाज़ आई, और बेसिकली हमने ये देखा, आप लोगों ने शायद ये चिड़िया देखी भी होगी, एमरल्ड डव, बहुत सुंदर चिड़िया है। वो मरी पड़ी थी ज़मीन पे, और कांच जो था उसके ऊपर उसका एक इम्प्रिंट बन गया था। तो इसका मतलब ये था कि ये बर्ड जो बहुत तेज़ी से उड़ती है फॉरेस्ट में, वो सीधे फुल स्पीड में आके इट हैड बैंग्ड against the window and died instantly right there. So मैं बहुत शॉक में था, मतलब सभी लोग बहुत शॉक में थे, बट मुझे वो बर्ड देखने के लिए इतना मेहनत करना पड़ता है और यहाँ पे वो इस तरीके से मर रही थी।
तो वो मेरा पहला इंट्रोडक्शन था बर्ड विंडो कोलिजन पे। फिर मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा, और आप भी अगर देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, यूरोप में इस पर बहुत काम हुआ है। और आज डेटा हमको ये कहता है कि अमेरिका में, यूएस में अप टू 2 बिलियन बर्ड्स डाई एवरी ईयर ड्यू टू बर्ड विंडो कोलिजन। और ये काफ़ी सालों से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और इंडिया में मैंने कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, सुहेल कादर जो तब NCBS में थे, मैं उनसे भी जाके मिला, और तब हमने ये भी सोचा कि हमको इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। बट इतना कम काम था तब इंडिया के संदर्भ में कि कुछ क्या करें, यही बड़ा प्रश्न हो गया था। एंड करीबन 6-7 साल पहले एक ग्लोबल इवेंट होता है, ग्लोबल बर्ड रेस्क्यू डे। तो यूएस में या कनाडा में बहुत स्पेसिफिक डेज होते हैं जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स जब उड़ रहे हैं, फॉल माइग्रेशन और स्प्रिंग माइग्रेशन में, इन दिनों पे ये कोलिजन के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे वॉलंटियर्स कुछ जो बिल्डिंग्स हैं उसके आसपास सवेरे के समय और शाम के समय वॉक्स करते हैं, और जो बर्ड्स गिरे हुए हैं, इंजर्ड हैं या मरे हुए हैं, उनको कलेक्ट करते हैं, और फिर उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। तो वही डेज पे हमने इंडिया में कोशिश की कि हम ग्लोबल बर्ड रेस्क्यू करें, और हमारे यहाँ पे किसी ने भी भाग नहीं लिया और हमको कोई चिड़िया नहीं मिली, क्योंकि हमारे यहाँ जो पैटर्न्स हैं वो बहुत अलग हैं। और उसके बाद हमने बेसिकली ये कोशिश की कि जो सिटीजन साइंस प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अर्ली बर्ड है या जो बर्ड वॉचिंग कम्युनिटी के फेसबुक पेजेस हैं, इन पे हमने ढूंढना शुरू किया कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके, जैसे हिट, थर्ड, डेड, ग्लास, विंडो। और इसमें हमको कुछ कुछ चीज़ें दिखने लगी, क्योंकि कई बार लोग रिपोर्ट करते थे कि भाई मेरे घर के सामने ये हो गया, मेरे हॉस्टल में हो गया। और फिर हमारे दिमाग में ये आया कि जो वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खास करके अर्बन एरियाज़ में हमारे यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी अच्छे से सेटअप हो गए हैं। तो हमने उनमें से कुछ लोगों को कांटेक्ट किया और उसमें से हमको कुछ डेटा मिलने लगा। तो आज के तारीख में, ये मैं बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, बट आज के तारीख में हमने रिसेंटली एक नेशनल सिंपोजियम होल्ड किया, विधि ने किया और पार्टनर्स के साथ दिल्ली में। तो जो हमारा डेटा है, आज हमारे पास करीबन 1000 डेटा पॉइंट्स हैं फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। इसमें से अबाउट 80% आर फ्रॉम बैंगलोर, क्योंकि बैंगलोर में 2 वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसका बहुत अच्छे से डेटा रखती हैं। तो हमारे जो 1000 और डेटा पॉइंट्स हैं उसमें से करीबन 800 बैंगलोर से हैं। मगर इसमें बिलीव इट और नॉट, इन 1000 डेटा पॉइंट्स में हमारे पास 110 स्पीसीज़ हैं, और इन स्पीसीज़ में हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे स्पीसीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा नंबर में मर रही हैं। अगर मैं आपको कुछ केसेस बताऊं तो जैसे बैंगलोर में जो हमारे पास डेटा पॉइंट है उसमें करीबन 200 डेटा पॉइंट्स वाइट चीक बार्बेट्स के हैं। तो कोई कहेगा कि भाई वाइट चीक बार्बेट बड़ा कॉमन बर्ड है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर बर्ड विंडो कोलिजन में जो हमारे पास बहुत कम डेटा है उसमें हमको ये पता चल रहा है कि 200 बर्ड मरी है 1000 में से, तो उस स्पीसीज पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है इन द शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म। फिर कुछ ऐसे भी स्पीसीज हैं जो माइग्रेटरी सीजन में इफेक्ट करते हैं, जैसे आज सर ने भी इंडियन पिट्टा की बात की। तो ये जो स्पीसीज है ये खास करके अभी ये जो समय है और जो ऑटम अक्टूबर का समय है, उस समय ये हमको मिलते हैं मरे हुए। कल की बात है, ब्लैक बैक ड्वार्फ किंगफिशर, बहुत सुंदर किंगफिशर है जो हमारे यहाँ इस समय आता है ब्रीडिंग के लिए, तो उसके केसेस अभी आने लगे हैं। धारवाड़ से हमको एक केस मिला है, और हमको ये बर्ड्स ऐसी जगहों पे मिल रहे हैं जहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इसकी साइटिंग के आज तक। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत ज़्यादा वाइड है, इसके बारे में हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है या डेटा पॉइंट्स नहीं है। और हमको जो ट्रैजेक्टरी यूरोप और यूएस में हम जानते हैं कि लोग 30 साल से काम कर रहे हैं, अभी जाके लेजिस्लेशन हो रहा है, तो क्या हम भी अभी 30 साल रुकेंगे जब तक हमारे पास बिलियन बर्ड्स वाला डेटा है तब हम काम करेंगे, या बेस्ड ऑन व्हाट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल बेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनली हम अभी ये चीज़ लाएंगे। तो मैं इतना कह के धन्यवाद पीयूष जी। बस अभी लास्ट राउंड करते हैं, फ्लाइट नहीं छूटी। एक्चुअली हम लोग की फ्लाइट भी है, सो वी आर ऑल्सो वरीड अबाउट द फ्लाइट, बट आई थिंक वी हैव टाइम, बिकॉज ऑफ टाइम है ना, 15
So, Jagdish, like in your slide also you showed how you are developing this new campus, and I think this is the model which can be like historically, if you see the reforms, your institutions has been the first one to show the society what changes we should aspire for. I think this kind of campus which you are developing, so you want to learn a little bit more, but also from a perspective of citizen science, and also how this academic campuses can be a place for raising the public consciousness, because where we are realizing this thing is that politicians and the policies will not come unless people demand for it. So in democracy, everyone is free to do everything. So as in one speaker said that you have to nurture the young generation also. So I think time is also less, but this will be the thing before we open question answer also that one thing is how citizen science can play a role, how academicians like yours can play a role to increase the consciousness and also larger towards policy reform. So just to cut a long story short, when I joined IHS in October 2021, director said that you got your work cut out for you because यहाँ पे तो आधे लोगों को गाय और भैंस में भी फर्क नहीं मालूम है. I mean, he was joking, but basically a lot of people working in urban science, other aspects, ecology was largely missing. And so we had to start from scratch. और जो हमारा जो campus है 54 acres का, वो उस वक्त थोड़ा wooded हो गया था क्योंकि पहले degraded था, फिर जब fencing हुआ और ये सब हुआ थोड़ा wooded हो गया था, तो जो इकोलॉजिस्ट आते थे वो बड़े खुश हो जाते थे कि अब इतना अच्छा फॉरेस्ट है, ऐसे ही रहेगा, बहुत बायोडाइवर्सिटी रहेगा. लेकिन कैंपस तो बनने वाला है, बिल्डिंग्स बनेंगे, उसका जो एरिया है नेचुरल जो हैबिटेट है वो तो घटेगा ही, लेकिन हमको रिस्टोर भी करना है और कायम भी रखना है. तो इट इज़ अ बिग चैलेंज. सो वी स्टार्टेड विद बेसलाइन वर्क. एक एनवायरमेंटल लैब था, तो उसमें सॉइल और जैसे फयाज ने बताया सॉइल से ही हमने शुरू किया था, और सॉइल फिर उसके बाद ग्राउंड वाटर का सैम्पलिंग, फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन लगाया सब जगह पे, और बायोडाइवर्सिटी का सर्वेस शुरू होने लगा. तो बेसलाइन बायोडाइवर्सिटी सर्वेस, उसमें प्लांट्स जो भी जैसे एक्सपर्टीज़ मिला, हम लोगों को एक अर्बन इकोलॉजिस्ट मिला, उसको बर्ड्स और बटरफ्लाइज मालूम था तो वो उससे शुरू किया. उसके बाद एक्वाटिक इकोलॉजिस्ट आए तो फिर वाटर बॉडीज़ में मैक्रोइनवर्टेब्रेट्स और ये सब देखने लगे हम. तो स्टेप बाय स्टेप हम एक इकोलॉजिकल प्रोफाइल बना रहे थे अपना जो कैंपस का, और ये भी देख रहे थे कि हिस्टोरिकली उस रीजन में क्या क्या हो सकता था, क्योंकि आसपास हमारे बगल में एक रिजर्व फॉरेस्ट भी है. तो उस रिजर्व फॉरेस्ट में उसका जो वर्किंग प्लान है हमने मंगाया और देखा कि क्या क्या उसमें फौना और फ्लोरा रिकॉर्डेड है. हालांकि वहाँ पे काफ़ी उन्होंने यूकलिप्टस प्लांटेशन और ये सब भी किया हुआ था, लेकिन बाकी जानकारी भी था उसमें. तो ऐसे करते करते हमने थोड़ा इकोलॉजिकल कॉन्शियसनेस शुरू किया अपने कैंपस में, और फिर वहाँ पे भी हम लोगों को हर दिन कुछ ना कुछ मुकाबला करना पड़ता था ऑफ कन्वेंशनल थिंकिंग. अब जैसे हमारा जो बिल्डिंग था उसके आसपास जो प्लांट्स थे उसको वो प्रून करना चाहते थे गार्डनर्स, लेकिन वहाँ पे बर्ड्स का नेस्ट होता था, और जो ग्राउंड नेस्टिंग बर्ड्स हैं उनको वहाँ पे जो उनका जो एरिया है उसमें चीज़ें डंप करते थे, ये सब होता था. तो ये सब हमें डे बाय डे वी हैड टू सॉल्व ईच प्रॉब्लम टू चेंज द थिंकिंग कि अगर आपको बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली कैंपस बनाना है तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा. और जैसे हमारे जो बिल्डिंग था, एक बिल्डिंग में मुनियाज जो नेस्ट करते थे, 3 स्पीशीज ऑफ मुनियाज आते थे, उसमें से एक स्पीशीज ये स्केली ब्रेस्टेड मुनिया यूज्ड टू नेस्ट, और कुछ आउल्स आके पर्च कर कभी कभी, या तो बैट्स कभी पर्च करे. तो उसके लिए उनका उनको टॉलरेट करने का जो थिंकिंग है वो भी हमको फॉस्टर करना पड़ा, क्योंकि काफ़ी लोगों को कंप्लीटली हार्मलेस स्पीशीज से भी डर लगता है और ऐसा लगता है कि ये सब हमारे आसपास होना ही नहीं चाहिए. तो फिर वो सोच भी हमको बदलना पड़ा, और फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हाँ कुछ स्पीशीज हमारा जाने वाला है क्योंकि बिल्डिंग्स बन रहे हैं, लेकिन जब बिल्डिंग बन जाएंगे उसका जो बचा हुआ जो एरिया है उसमें हम लोग कैसे रिस्टोर कर सकते हैं. तो जैसे हमने दिखाया कि स्लेंडर लॉरिस का पॉपुलेशन है हमारे पास, वो स्लेंडर लॉरिस का पॉपुलेशन कैसा है हमारे कैंपस में, क्योंकि 10-15 साल पहले हमारा कैंपस पूरा ओवरग्रेज्ड एरिया था, काफ़ी कम पेड़ वगैरह थे, और फिर जब उसका प्रोटेक्शन मिला तो वुडेड हो गया. तो स्लेंडर लॉरिस मोस्ट लाइकली
जो आसपास जो रिजर्व फॉरेस्ट है पास में, वहाँ से हमारे कैंपस में आया होगा, क्योंकि हमारे पुराने सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बोला कि पहले भी एक दो उनको दिखते थे उस साइड से आते हुए। तो फिर अभी हमारे पास ये लेपर्ड आता है, स्लेंडर लॉरिस ऑलरेडी है, वाइल्ड बोर भी आता है, और 145 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स अभी रिकॉर्ड हुए हैं। कैसा रिकॉर्ड किया हमने ये जो ग्लोबल एक होता है कैंपस बर्ड काउंट, हर साल होता है, एक बैकयार्ड काउंट बर्ड काउंट भी है, क्योंकि हर शहर में बर्ड वॉचर्स की मतलब संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो उनके माध्यम से उनका जो डेटा ई बर्ड में जाता है, और लोग चेकलिस्ट बनाते हैं हर कैंपस का। तो हमारा कैंपस ने भी पार्टिसिपेट किया और हम कर्नाटक में नंबर 2 आए। Not because we have more birds than other campuses, because we put in more effort also. नहीं तो जीके वीके कैंपस में तो और स्पीशीज आने चाहिए थे, लेकिन उस दिन हमारा काउंट उनके काउंट से ज़्यादा था। तो इसके वजह से फिर वो एंथुसियाज्म भी रहता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनको ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इनको नंबर से मतलब, हाँ देखो हमारे कैंपस ने ऐसा तरक्की किया। तो एक इकोलॉजिकल प्रोग्रेस का या इकोलॉजिकल मैकेनिज्म्स का मतलब उसका जो उसको प्रमोट करने का जो कॉन्शियसनेस इंस्टीट्यूशन में आया, अब थोड़ा इंस्टीट्यूशन मतलब इंटरनलाइज हो गया। अभी कोई नहीं बोलेगा कि हम ये बर्ड्स का ये प्रूनिंग करेंगे। ये अभी डायरेक्टर खुद बोलते हैं कि ये जो पेड़ है जिसमें स्लेंडर लॉरिस दिखा गया है, उसके आसपास कुछ नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप का अभी पहुंच गया है। तो ये जो टॉलरेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है और मेकिंग कैंपस बायोडाइवर्सिटी फ्रेंडली, हर लेवल पे जो संस्था में जो लोग हैं उनके साथ आपको काम करना पड़ेगा। और वो लोग पूछेंगे आपसे सवाल कि क्यों करना है, इससे ये काट लेगा मुझे, इससे ये हो जाएगा, ये सांप नहीं रहना चाहिए कैंपस में, ये सब लोग सवाल करेंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा। मतलब ऑर्डिनरी पीपल जो अकाउंटेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, या जो ड्राइवर हैं, गार्डनर हैं, जो बाकी जो स्टाफ है, जो भी है, उन सब के साथ आपको संपर्क करना पड़ेगा टू मेक अ सस्टेनेबल कैंपस। क्योंकि ये टॉप डाउन नहीं हो सकता है, बॉटम अप भी होना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में जब 2-3 हज़ार लोग वो कैंपस में रहेंगे, अगर वो लोग बायोडाइवर्सिटी को टॉलरेट नहीं कर सकते तो फिर बायोडाइवर्सिटी वो कैंपस में नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये अभी फ्रॉम व्हाट आई जस्ट टू समराइज, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसको हर हफ्ता हर दिन आपको कुछ नया मुकाबला करना पड़ेगा ऑफ प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी। कोई नेस्टिंग सीजन हो गया किसी स्पीशीज का, तो इस एरिया में मत जाओ आप लोग, ना यहाँ पे वॉकिंग मत जाओ, वहाँ पे कहीं पे ग्राउंड पे कोई नेस्ट है किसी का तो लैपविंग का, तो वहाँ पे मत डिस्टर्ब करना। तो ये सब ऑन अ डे टू डे बेसिस, वीक टू बेसिस हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कैंपस में बायोडाइवर्सिटी को कायम रखने के लिए। थैंक यू। अनिल सर, आपसे मैं सवाल ये करना चाहूँगा। एक छोटा सा ले लेते हैं, एक मिनट। तो सर आपने सबको सुना, आपने जो भी है, और एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर इस चीज़ को हमें इन्फोर्स करना है, क्योंकि छोटे मोटे एग्जांपल अपने लेवल पे बॉटम अप जो है कुछ ही है, उसको हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, वो भी अपने चैलेंजेस सबके हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्या बिल्डिंग बाय लॉज चेंज करके या प्लानिंग कुछ लॉज ला के, या फिर कुछ और तरीका है, कैसे कर सकते हैं उसको? देवजत ना, बिल्डिंग बाय लॉज देखिए, रूल तो आप कभी भी कुछ भी बना सकते हैं, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी पे वो मुश्किल है। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है पर मैं शुरुआत इंग्लिश में किया था, तो अभी मैं ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। तो रूल बनाने से नहीं होगा, उसको जब तक हम मेन स्ट्रीम नहीं करेंगे, जब इंसेंटिवाइज नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। और सबसे बड़ा है कि वो इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन वाली बात, जो पहले बिग रिसोर्स है सिटी में, उसके ऊपर ध्यान देना पड़े। ये सारे माइक्रोज हैं इंस्टीट्यूशन लेवल पे। इवन सेप्ट हैज अ बर्ड्स काउंट, वी हैव काइट्स इन द कैंपस, वी हैव 70 dogs, we have dog clubs, these are all against the municipality laws because stray animals cannot be kept. सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि आपको मेंटेन करना। सो दैट कॉन्फ्लिक्टिंग रूल्स एंड कॉन्ट्राडिक्टरी implementation agencies has to be minimized, उसको पहले चेंज करना पड़ेगा। बट बिग रिसोर्सेज, इकोलॉजिकल रिसोर्सेज, रिवर, as Saurav is saying कि we have very pessimistic approach, Sabarmati we've lost completely,
we are linking it with the Narmada, and that's how we're getting water, and which is not sustainable at all. Plus the lakes, here also I have heard the current position. Agar 50 years or 100 years back jayenge, so even Bhopal has lost so many minor ponds and lakes. There's a bada talab bacha hua. We had 800 in Ahmedabad 1 century ago. We are only 53 now. And the High Court of Gujarat has taken cognizance of one particular study which SEPT and other colleagues done, is the dwindling of lakes in Ahmedabad or Ahmedabad districts. So they have asked the municipality to give the report, how are they going to preserve these 54. 54 को आप कम नहीं कर सकते. So real estate pressure will always be there on the big resources. Whether it is riverfront development, they claimed 500-meter land, 11-kilometer area. Not a single plot has been sold yet. So that's a wasteful use of land reclaimed, which is environmentally degradable, which has and we have lost the river in that process. So lake is going to be the perennial things, and all our historical cities have either river or lake. So we need to focus on that. And once we restore this lake system or lake ecology, we call it, in a better way, then ये नहीं कि हम concrete और lake front बना दिया और water front उससे नहीं होगा. And that's the biggest mistake that we will be going to give that. One small example, Curitiba is a country where the similar case of riverfront was proposed. What they did not do any concrete, they did ranching. So उन्होंने ranch बना दिया, उसमें piggeries कर दिया, farm बना दिया उसके सारे, and the 400 crore rupees that they saved went to the schooling and hospitals. Curitiba also developing countries, developing Brazil में है, और हम भी उसी तरह से per capita income almost same, but Ahmedabad did not do that lessons. Ahmedabad went to Paris kind of riverfront or, Thames riverfront. And that's a mistake we do. So the changes has to be there in the subconscious mind, and then we need to plan. So thank you. Yeah. हाँ, सभी जगह बने, वो lobby चल रहा है sir. That lobby needs to be challenged. Piyush, very quickly, sir, अभी सवाल नहीं, क्योंकि थोड़ा सा सबको एक राउंड, सेकंड राउंड, I want to give a chance. So फ्लाइट भी है ना, मेरी भी फ्लाइट, इनकी भी फ्लाइट है. पीयूष जी, आपसे एक चीज़ मैं ज़रूरी जानना कि बर्डविंड कोलिजन जो है, क्या ये प्रॉब्लम अवॉइडेबल है और क्या रेट्रोफिटिंग से हो सकता है और क्या सॉल्यूशंस ऑलरेडी हैं, क्योंकि बिल्डिंग्स अब जितनी बन रही हैं सरकारी प्राइवेट सब बहुत शीशे बन रहे हैं. तो एक्चुअली इसका सोल्यूशन हमारे पास करीबन 30 साल से है. इट्स अ वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर रेट्रोफिटिंग. इट्स कॉल्ड 2x4 6 mm डॉट. अगर आप हॉरिजॉन्टली 2 इंचेस पे लगाते हैं एंड वर्टिकली 4 इंचेस पे लगाते हैं ग्लास के आउटर सरफेस पे, सो बर्ड्स कैन सी दोज डॉट्स फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस एंड द गैप इज सच दैट दे फील दे कैन नॉट फ्लाई थ्रू. तो हमने एक बिल्डिंग में दिल्ली में भी ये काम किया है एंड काफ़ी सक्सेसफुल है. तो ये सोल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली जहाँ पे ऑलरेडी बिल्डिंग बन गई है उसमें अगर आपको सोल्यूशन फिट करना है. और ये बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि काफ़ी बिल्डिंग्स में बहुत नंबर में बर्ड्स मरती हैं. और अगर आप वैसे देखें इन टर्म्स ऑफ लार्जर प्लानिंग, जो सक्सेसफुल रहा है इंटरनेशनली वो बेसिकली ये रहा है कि बिल्डिंग बायलॉज, गाइडलाइंस, बिल्डिंग कंट्रोल रूल्स, इन सब में ये आ गए हैं कुछ जगहों में. अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है, बट साइमल्टेनियसली हमको जो ग्लास मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो विंडो फिल मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन सब के पास इंटरनेशनल मार्केट के लिए ये प्रोडक्ट्स हैं. इंडियन मार्केट में वो प्रोडक्ट्स नहीं लाते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई डिमांड ही नहीं है. सो मतलब एक लार्जर क्वेश्चन है कि आप किस टाइप के बिल्डिंग्स बनाएंगे, मगर अगर आप जो अभी जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं वही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमारे पास सोल्यूशंस हैं. उसमें थोड़ा कॉस्ट फैक्टर भी आ सकता है, बट सोल्यूशंस आर देयर. सर, आपसे एक सवाल मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग एक फैकल्टी मेंबर भी, टीचर भी है, आई थिंक यू आर सोशल रिफॉर्मर आल्सो, एंड एक हमारे जो फॉरेस्ट ऑफिसर साहब थे जो उन्होंने पीएस की बात करी, तो जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं और जितने भी हमारे बायोडाइवर्सिटी सेंटर्स हैं, उनका एक काम जो है अपार्ट फ्रॉम इकोसिस्टम ऑल्सो है नेचर अवेयरनेस, कि लोगों को प्रकृति से जोड़ना. और जैसे सर ने बोला कि
एलिट के पास चला गया सारा सैंक्चुरी नेशनल पार्क, 50,000 आपके पास है मिनिमम तो जा सकते हैं। उसमें जो इस तरह के बायोडाइवर्सिटी पार्क्स हैं जहाँ पे कि आप जाके इंटरेक्ट कर सकते हैं, क्लोजली सीख भी सकते हैं, आप कैसे देखते हैं अपने एक्सपीरियंस में बायोडाइवर्सिटी पार्क का रोल एज अ सोशल रिफॉर्म, उस पार्क का रोल क्या है और आपको क्या लगता है, वी आर सेटिस्फाइड, आपको लग रहा है कि? मैं फटाफट बोल दूँ। एक्चुअली एक बच्ची तो यहीं बैठी है जो पार्क में बहुत घूमती थी जब एमएससी करती थी, वो सामने। एक्चुअली हाँ, आप भी घूमते थे। मैंने ये देखा है कि वो तो एक इस तरह का लिविंग लेबोरेटरी बन के खड़ा हुआ कि बच्चे आके देख पाते हैं कि पूरी लाइफ साइकिल की आप बात जो कह रहे थे कि बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल कैसे पूरी होती है, बर्ड्स के नेस्ट कैसे बने, कैसे वो फ्लाई कर गया, पानी कितना चाहिए, ये ग्रास का क्या रोल है। ये पूरी 2-3 घंटे की उनकी टूर होती है नेचर ट्रेल पे और हर एज क्लास के बच्चे आते हैं। उसके बाद हम लोग लायंस क्लब के लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, वो लोग भी आ रहे हैं काफ़ी। उसके बाद ब्यूरोक्रेट जैसे आईएफएस ट्रेनीज़, रेंज ऑफिसर्स ट्रेनीज़, आईएएस ट्रेनीज़, सीएजी ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ को भेजता है पूरे दिन के लिए, एक दिन कंप्लीट इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग, जिसमें उनको सिखाते हैं। कई बार क्वेश्चन रेज होता है कि इतना ख़राब लैंड था तो तुमने लिया क्यों, इसे पैसे क्यों बर्बाद किया। तो इस तरह के सवाल के साथ लोग आते हैं। तो एक ऐसा ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बन के खड़ा हुआ है जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन के सहारे नेचर के उन चीज़ों को मुहैया कराने में आसानी देने की बात करता है। इसमें जो मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एजुकेशन के थ्रू ये भी पहुँचाना है। मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि गवर्नमेंट को ईमेल करो कि नदी इतनी ख़राब है और नदी को बचाने के लिए हमने एक मॉडल देखा है, उस पर आप काम करो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखो, यही मैं कहता हूँ। और बच्चे ऐसा करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगा कि हर एज क्लास के लोग आते हैं। साल में ऐसे 5-6 प्रोग्राम हम नेबरहुड कम्युनिटीज़ के लिए करते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट है। शुरू में नाला उसमें गिरा दिया लोगों ने, घास काटने लगे, ये भी झेला हमने, क्योंकि वहाँ तो दूर दूर से लोग आके बसे, नेटिव तो हैं नहीं कोई, तो नाला गिराने लगे। और उसके लिए बड़ी मुश्किल हुई, इरिगेशन डिपार्टमेंट को साथ लाए, फिर ड्रेन को बनाया और अब उनको समझ में आई। तो साल के 5 बार कम से कम आसपास के सारे विमेन को जुटाते हैं कि आपका जो कूड़ा है इस वेटलैंड में जो डालते हो वो आपके घर के पानी को कैसे नुकसान पहुंचा रहा है और आपके बच्चों को बीमार कर रहा है। तो इस तरह करके लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये ग्रीन एरियाज तभी जिएंगे जब इन सारे लोगों को हम जोड़ पाएंगे। Before we conclude, I want to just take 1 minute, not more than that. कि see एक चीज़ है environmental law में कि बिल्कुल mitigation hierarchy, उसमें पहला चीज़ है avoidance। तो आपको कोई चीज़ अवॉइड करना है, अगर कोई चीज़ नहीं करने से हो सकता है तब प्रिकॉशन होनी चाहिए कि क्या करना ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा तभी करना है। उसके बाद है आपका मिटिगेशन, अगर आपको करना ही करना है तब उसको क्या तरीके से कर सकते हैं, ग्लास के क्या लगा सकते हैं या उसके क्या कर सकते हैं। उसके बाद है आपका रिस्टोरेशन, फिर ऑफसेट। ठीक है, एक चीज़ मैं बस 30 सेकंड और, आपके गौतम साहब ने एक प्रेजेंटेशन में बोला था, एक बड़ा अच्छा लाइन लगा उनका, हॉट नाइट्स आर वर्डिक्ट ऑफ द सिटी। लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग वो है। एक चीज़ विकास आपके लिए फीडबैक है, आपने सबको बुलाया, आपको किसी आर्टिस्ट को बुलाना चाहिए, लाइक यू नो जो पोइट्स हैं, जो फोक सिंगर्स हैं, उनके पास बहुत चीज़ें होती शेयर करने के लिए। राहत इंदौरी साहब है, 2 साल पहले गुजर गए। हाँ, तो हाँ जी, एक उनका शेर मैं सुनाना चाहूँगा, बिल्कुल हीट की बात हो रही है, उसमें एक राहत इंदौरी को ख़त्म करता हूँ उस समय। 4 लाइन है। शहर क्या देखे कि हर मंजर में जाले पड़ गए, ऐसी गर्मी है कि पीले फूल काले पड़ गए। मैं अंधेरे से बचा लाया था अपने आप को, मेरा दुख यह है मेरे पीछे उजाले पड़ गए। Sir, please, I will not take much time. SDGs को लेके मतलब कई सारे बातें कही गई है, लेकिन उसमें मेरे जो समझ है कि देयर आर 17 गोल्स, जिसमें 2 गोल्स के ऊपर ही बाकी सब गोल्स निर्भर है। वो है 14 and 15, लाइफ ऑन वाटर, लाइफ इन वाटर, लाइफ ऑन अर्थ। ये दोनों इकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं।
इसको आप जितना खराब करोगे आपका जो क्लाइमेट एक्शन से संबंधित जो नेगेटिव रिएक्शंस वो ज़्यादा होंगे। तो बाकी सारे आपको जो सस्टेनेबल गोल्स अचीव करने के लिए इफ़ यू आर गोइंग टू स्पॉइल योर इकोलॉजिकल फाउंडेशंस, लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगा लाइफ पे। उस लाइफ में इंसान भी एक साथ में जुड़ा हुआ है। और अगले बार यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का भी बात जोड़ने की आवश्यकता है। और दूसरा बिग क्वेश्चन फॉर एवरीबडी, फॉर एवरी सिटी रेदर, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन अमरकंटक एंड अहमदाबाद? बार बार इसकी चर्चा हो रही है। जब ये कनेक्शंस हम कहीं एस्टैब्लिश कर लेंगे, हो सकता है कि अपन जिस पानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस इकोसिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसको शायद हम सुधारने के बारे में सोचेंगे। थैंक यू, जय हिंद। Thank you so much, sir. I would like to request Jagdish sir and Fayaz sir to please remain on the stage for the conclusive ceremony. And I would like to request Ash Srinivas Murthy sir to please come on the stage for the final valedictory ceremony, sir. We have to announce. Sir, valedictory के लिए just we have to announce the poster winners, poster presentation. I would like to now announce the winners of the poster presentation. The third prize is awarded to Manmeet Kaur. The second prize winner is Suman Devangan. And the first prize winner is Preetam Ranjit Haldar. We also have a special mention which goes to Kriti Jain. Congratulations to everyone. I would like to invite Ms. Shivani Sharma to conclude the conference. Ma'am. I think it's now, yeah. So, as we come to close of this enriching conference, I would like to thank our chief guest, Mrs. Anuradha Shankar ma'am, IPS retired, our guest of honor, the Mr. Jagdish Krishna Swami sir, and all the esteemed speakers and all other everyone who has come to this conference. मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी सबने क्या क्या बोला क्योंकि वो सबने सुन ही लिया है. तो over the course of this conference we have learned that biodiversity जो conservation है, ecological restoration are not separate from the urban development but essential components of sustainable and climate resilient cities. ये जो conference थी हमारी वो SDG 11 and 13 पे focus थी for providing the valuable insights
and practical approaches for building resilient urban habitats. And discussions ने highlight की कि importance of urban biodiversity, wetlands, rivers, protected areas and nature-based solutions जो हैं, how they are important in improving the environmental health and quality of life. So जो हमारे key takeaways थे and action points थे, they can be effective governance, moreover I can say good governance, inclusive of what we can say accountability and integrity, and community knowledge awareness and their participation that will contribute to the long-term sustainability goal. Also I would like to say, किसी ने यहाँ पे बोला था कि penalizing के अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो sometimes जो लोग जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा aware हैं या जो लोग इस टॉपिक को समझते हैं, ऑफ कोर्स उनको हम अवेयर करते रहे, उनके साथ अच्छा काम करें, लेकिन समटाइम्स पेनलाइजिंग डिटरेंस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अदरवाइज़ अगर डिटरेंस नहीं होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है, राइट टू लाइफ, जिसमें साफ़ हवा की भी बात की गई है, और जो हमारा डायरेक्टिव स्टेट की जो पॉलिसी है, इवन हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, सब कुछ दिया गया है, otherwise people are not following, so deterrence is very much important, but along with maintaining the balance, because इतनी बड़ी population में जो हमारी 125 करोड़ की देशवासी हैं उसमें सबकी अलग अलग आइडियोलॉजीज़ हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा वेरीड है, तो हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ेगा. We can't compel each and everything, so we have to maintain a balance for everyone, and thank you so much. Thank you, ma'am. Ms. Shivani Sharma, she is joining us from MP State Biodiversity Board. Yes. I would like to invite Fayaz sir to give us your thoughts on the conference. सांस गले में है और फ्लाइट एयरपोर्ट पे है. मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आज दिन भर की गहमा गहमी में हमारे गुरु प्रोफेसर आर.जे. राव, मेंटर्स लाइक मूर्ति सर, सीनियर्स लाइक जगदीश, सब लोगों के साथ बड़ा अच्छा लगा कि वो तालुकदार साहब पीछे बैठे हैं चुपचाप, जिन्होंने सुबह की शुरुआत उन्होंने ही करी आंधी से. तो ये आज का दिन बड़ा अच्छा यूँ रहा कि विकास ने कांग्रीगेशन एक ऐसा किया जिसमें दिमागों का समागम था, सोच का समागम था, उसमें इकोलॉजी थी, उसमें आर्किटेक्ट था, वो उधर पीछे बैठे हैं, और नदियों को जीने की बात कही गई, और अर्बन सेंटर्स में ज़िंदगी लाने की कोशिश कैसे की जाए इस पे चर्चा की गई. तो बहुत अच्छा रहा, और मुझे लगता है कि एक राह सफ़र दिखाता सा नज़र आता है, और अगर इस पे चल पाए, जितनी दूर चल पाए, शायद बेहतर होगा. थैंक यू वेरी मच. Thank you, sir. I would also like to request Murthy sir to please conclude the conference. So good evening to everybody. इनका SNHC का और विकास का जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं ऐसे ही होते हैं. शुरू थोड़ा धीमे से होता है, लेकिन वो चलता लंबा चलता है. अब इन लोगों की फ़्लाइट ना होते तो और 9 बजे तक बिठाल के रखता, बट एट द सेम टाइम लोग विलिंग के साथ बैठे रहते हैं, मतलब उसके साथ एक पर्पसफुल पॉजिटिव कन्वर्जेशंस होते हैं. इट्स अ बिग थिंग. और अर्बन सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के बारे में, क्लाइमेट एक्शन के बारे में, कम्युनिटीज़ को कैसे जोड़ें इसके बारे में भोपाल से एक बार नया शुरुआत किया है. इसके लिए यहाँ जितने बैठे हैं डेलीगेट्स हैं, और साथ में SNHC, मध्य प्रदेश बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, विकास एंड देन सुदेश सिंह, उनके सारे टीम को मेरी तरफ से बधाई, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा ऐसा मेरा एक विश्वास है. थैंक यू. जय हिंद. Thank you, sir. Finally, I would like to request Jagdish sir to please give us your thoughts on the conversation. मैं इतना ही कहूँगा कि हमको प्रयास करना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए, और इसमें मतलब हर दिन हर हफ्ता इस पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे. ये सिर्फ ये एक वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस की बात नहीं है, ये हमारी सोचने का जो ढंग है, और जो हमारे आसपास जो लोग रहते हैं उनको हमें प्रभावित करना पड़ेगा.
नहीं तो हम कुछ बदल नहीं पाएंगे। और हमें उम्मीद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हाँ नदियाँ तो ख़त्म हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अगर उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए थोड़ा ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, और इसलिए इतना ही कहूँगा। जय हिंद। As just one final comment on the conference, how the entire conference had no single-use plastic used. Even the kids do not have any single-use plastic. Even the pen stationery, we did not use it. So we have started with the conference itself. Finally, for the vote of thanks, I would like to invite Ms. Saili, Conference Coordinator, SNHC, India. सो मैं आप लोगों का और थोड़ा सा टाइम लूँगी। इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस के बाद वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी मुझे मिली है, और मैं इसको एक बहुत अच्छी शुरुआत मानूंगी, क्योंकि ये हमारी पहली कॉन्फ्रेंस है जो एनवायरनमेंट को लेकर हुई है। आज एनवायरनमेंट की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है। आज के दिन हमने बेहद ही कम समय में पर्यावरण और शहरी जीवन के कई पहलुओं को समझा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, सबको मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ। इसके अलावा कि यहाँ पे मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूँगी एमपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का। एमपी स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड जो हमारे सभी पहलों के साथ, लगभग हमारी जितनी पहले रही है उसमें हमेशा हमारा साथ दिया है। इसके अलावा हमारे जो अन्य पार्टनर्स हैं, एपको भोपाल जिन्होंने हमें ये हॉल प्रोवाइड किया, IIFM जिन्होंने हमें हमारी लॉजिंग की व्यवस्था देखी, MP टूर एंड ट्रैवल्स जिन्होंने ट्रैवल देखा। इसके अलावा SNHC की टीम जो लगातार शायद पिछले कई दिनों से लगातार इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस करने में लगी हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया, DCB बैंक, तरुण भारत संघ, CMS वातावरण, इजोला, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी, IUCN नेचर फॉर ऑल, मोंगाबे इंडिया, ग्राउंड रिपोर्ट, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग भोपाल, VNS इंस्टीट्यूट भोपाल, मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी भोपाल, राष्ट्रीय गांधी मानव संग्रहालय भोपाल, BU भोपाल, सिन्ही NCHSC आयशर भोपाल। इसके अलावा मैं कुछ और लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी। वैसे मैं सभी को कह रही हूँ, पर किसी का नाम अगर मुझसे छूट जाता है तो माफ़ी चाहूँगी। जगदीश कृष्ण स्वामी सर, मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। जगदीश कृष्ण स्वामी सर, अनुराधा शंकर मैम, गौतम तालुकदार सर, मूर्ति सर, RJ राव सर, K रमन सर, जगदीश चंद्र सर, सुदेश वाघमारे सर, और हमारे सारे स्पीकर्स जिन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ तक पहुँचाया है। इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूँगी प्रधि का। प्रधि हमारे साथ है। प्रधि मैनेट में रिसर्च स्कॉलर है। प्रधि इज़ नॉट लाइक एंकर, मैं थोड़ा मेंशन कर रही हूँ और आपका थोड़ा सा और समय ले रही हूँ। प्रधि थैंक यू फॉर टेकिंग अस थ्रू द सेशन एंड सेटिंग द इनिशियल कॉन्टेक्स्ट। सो मेरी तरफ से प्रधि को थैंक यू। इसके अलावा मैं थैंक यू कहना चाहूँगी हमारी कैटरिंग टीम, हमारी SNHC की टीम, और जो सारी टीम इस कॉन्फ्रेंस को सक्सेस बनाने में लगी हुई थी। कैमरा पर्सन, कैमरा टीम और मीडिया टीम, SNHC टीम अगेन, क्योंकि मैं जानती हूँ कि SNHC टीम और बाकी सारे लोग भी कर ही रहे हैं, बट आई नो कि हम कल रात 3 बजे तक इसी हॉल में थे और फिर सुबह 8 बजे से भी इसी हॉल में थे। सो थैंक यू सो मच, अगेन थैंक यू। एंड किसी का नाम मुझसे छूट जाता है तो उनके लिए भी थैंक यू सो मच। Please join us for the high tea outside. सर मैं भेज दूंगा।